So friends, welcome to the group interview. People who are not participating, I'd request them to stay on mute and also observe as to what can we derive and how can we learn, because whether it is GI or PI, the principle of interviews remains the same. So that is something which is going to be an important takeaway for all of us. So that order that we'll be following is Rishabh, then we'll have Shrashti, we'll have Arun, Rupal, Atharv, Nikunj, and Utkarsh. To quickly, brief you all, that's the order that we are going to follow today in this GI. We are going to follow the same GI process as is observed in SPJIMR. So you will have two parts to it, a GI1 to begin with, and then a GI2. Okay. Not everybody will qualify to the GI2. It might happen that a few of us qualify. It may happen that none of us qualify, and it also can happen that all of us qualify, depending upon how do we do in this round. Okay. I will also, yes, Abhirup, go ahead. I think is my name being missed or I'm not able to see the name in my list in the list. Yes, Abhirup, I will quickly add your name as well. So you, Yeah, you will then go after Utkarsh. sure. Sir, I had a doubt. Can I? Go ahead. Sir, during interviews, should we prefer like clean shaven or can we keep a beard or so? You should prefer clean shape. You should Thank be you. clean shaped. It's not about preference. Okay. Okay. All right. Okay. So then we are ready to begin. Ayush, would you want to start? Ayush, let's begin then. Cool. We are starting with the ratio, right? Okay, shall I start? What are you going to start with? I think the intro, that's the format, right? No, tell me, why do you want to join SPGen? So regarding, if I have to say specifically about SPGen, then firstly, like what I have understood from the curriculum, like there are few of the there are few of the courses which I like. Apart from that, certain values which SPGen follows uh, is aligned with what I have done in the past. So I feel that that is a good match for me. If I have to more specify it, that why it is the case, starting with the second one, that the values. So SPGen has programs like the Abudaya. There is the PG Lab also. I like both of them. And I have had similar experiences in the past during my undergraduate, where I was part of a group initiative where we mentored undergraduate students, underprivileged students. And apart from that, during my work time also, I was actually contributing to a girls' education in an NGO, Chennai based. So that is one of the social aspect link which I find. Apart from that, primarily since I was in the tech sector and I want to shift to a more into a techno business sort of a sector, I feel that some of the courses like uh, is this course in the IT strategy core, which we have in the second term, if I'm correct. We also have this course of data visualization for decision making. Like these are few of the many courses which I feel that are aligned to what I want to do and will complement my existing technical skills for a better like holistic business acumen. So that is primary the motive which I have towards SPGen. Okay. So you mentioned data visualization and data quite a lot. So can you tell me, what are the 4 to 5 types of data analysis that's done in the industry? Uh,
Data analysis. Okay. So do I need to mention the kind of tools, or like what are we? Tell me, what are the types of data analysis in general? So generally, like data analysis, we do for a lot of things. Like let's say predictive data analysis is one of the areas you can do. You can use the data for, let's say, if you have to say about fintech sector, for example, uh, fraud detection is one of the areas where we are using data analytics. Apart from that, I believe in the what we say, the BNPL sector, buy now pay later sector also, data analytics has a good what we say, a good future in that. Apart from that, machine learning and all those new algorithms which are coming up, they can uh, be useful to understand the customer behaviors and analytics also, which will in at the end will help the business to grow. If you are understanding that where the customer is spending the money. Let's say I was reading an article where Visa AI saw that they had some X% increase in their gaming subscription. So that is a sort of data analytics which they can help to boost their revenue or fine tune any particular segment of the society of their particular business. So this is another area. We can also use data analytics for, let's say, um, classification tasks are also there. Yep, that is it only. Only two types then, right? According to you. So there is classification. There is anyway prediction tasks are there. So broadly, we can classify it in these two in Yes, I domain. get you don't have an idea about data classification. You've still been talking about, data analysis, and you are fascinated by data, but you still don't have an understanding of that. Fine. Okay, so now, tell me about yourself now. Okay, fine. So I am Rishabh, and my journey begins at Kolkata. I did my undergraduation from Jadavpur University, and few of the highlights which I would like to mention during my college tenure. One, I had the honor to get the Prime Minister's scholarship during the 4 years tenure. Apart from that, number two, I also won my first hackathon where we implemented a prototype for reducing traffic congestion in Tier 1 cities. Number three, I would like to mention regarding my under like the after work experience, also after college experience. Thereafter, I went on to work for Amazon around 20, close to 21 months, where one of the highlights which I would find is working in the payments domain and launching a payment processor, which led to a spike of around 20% in transaction volume. Talking a bit about myself, uh, I like talking about cricket. Like I'm an avid follower of cricket, and I hardly get tired talking about it. And if not cricket, I myself am learning to cook. I post my dishes in my Instagram also. So yeah, that is a brief snapshot about me. Got it. So you've mentioned that you really, love cricket. So can you tell me, what's the highest margin that, the women's ODI team of India has achieved in terms of winning a cricket match? Margin as in? Margin of runs. Okay. Uh, I cannot recollect the exact the data of it, like the statistic of it. Take a guess, wild guess. Uh, let's say women's cricket doesn't play much of test cricket, so let me just focus on ODIs. I specifically mentioned ODI. Okay, fine. If it is specifically for ODI, a wild guess like would be around 200 runs, I would say. That's nowhere close to the near one, but okay. And you also mentioned that you love cooking. So do you like religiously post on Instagram, right? Not religiously. I sometimes post about it. I used to post it regularly, but lately it has reduced quite a few amount of times. But yeah, I plan to like keep posting it or keep pursuing it in the future. Do you follow any creators who are in the cooking domain? Yeah, I do follow. Like it is not specific to a creator, but mostly related to a, let's say I have a particular X dish in mind. So I go to the YouTube, search about it. Generally, there is this person named Chef Ranveer Brar, who is quite famous in this cooking domain.
Mhm. I follow his dishes, but it is not that I just follow him only. I see the comments also that where the user is saying that it is actually good, it looks tasty, it is tasty and all those things. So based on that I decide that which one to follow and all. But yeah, one creator I would say is that Ranbir Brar. Okay. Coming back to cricket, like who's the highest, who's got the highest, fastest 100 in women's ODI cricket? Tell me. Uh, I'm not sure about it. For India also, Mm-hmm. fastest century in ODI for India. Uh, like again, I am not very much. There are players who play fast, but which player has the statistic of doing it in the least Any number of? wild guesses again? Maybe a few names that you can throw off. Yeah, like if I have to say about the faster ones, there is Virendra Sehwag, there is Yashasvi Jaiswal. I mentioned Uh, women's ODI. uh-huh. Women ODI. Women ODI, not men. If I have to throw a wild guess, I think it can be Smriti Mandhana or Harmanpreet Kaur, but again, I am not exactly sure about who the exact person is. And you mentioned about working in the social sector, but Amazon is quite renowned for exploiting workers, exploiting social conditions for its own profit. What's your take on it? I think exploitation, if you say, then that is a not a right perspective, I would say. Like it is just doing business as usual, but there like any other company does business, so it is not particular related to exploitation. But yeah, like lately, if I have to say, till what I have seen is like we had some sort of a layoffs and all those things, where because of which the team dynamics got reduced, as in the number of members got reduced and everything. So on that front, the load per person can increase. But yeah, I don't think there is any sort of exploitation as such. Like whatever is the work being done, they are being paying accordingly for that. But do you think like delivery boys are paid well, or are they paid in accordance with the work they do? I don't think that. Like my personal take is that uh, apart from pay, also there are other areas where the conditions of delivery workers can be improved. Like number one is regarding the safety. Number two is regarding protecting them apart from their work also. Let's say any sort of insurance which you can give, or anything Do you of think that. Amazon does that? I'm not exactly sure about the like working policy norms for the delivery workers. So you are very comfortable working for a company, that doesn't care about its delivery partners, and yet you say that you are very like socially aligned and you align well with the values of SPJIMR. But you've never, I guess, raised a voice, and you're very comfortable because you've been getting monthly salary, and that's fair, right? I won't say it that way, but like I haven't like the one of the areas which I personally faced was regarding the quick delivery time, which they've commit to the person that to the customer basically, that you have to we will be delivering it in X and Y minutes, and because of which the rash driving happens. But regarding any I'm measure, confused between Amazon and Blinkit, Rishabh. no, I'm not confused about it. I'm not Uh, sure if rash driving or XX5 minutes happens in Amazon. okay, okay, yeah. So yeah, I'm not very much sure about What do you do at Amazon, Rishabh? it was in the payments domain, sir. I worked in the payments domain, where Mhm. my work was mostly related to uh, launching, expanding payment processes outside of India. Okay, so which markets did you like work in, or which geographies? We specifically worked in the Colombian market, Chile to some extent. Okay, and were there any challenges that you faced in contrast with the Indian market? Uh, there were not much challenges because I didn't work on the Indian market, as in from the technical implementation perspective. But compared to, let's say, I was when I was working in my first project for the Colombian market only.
since it was my first independent project in that domain. So I did face some technical challenges as such, and yep, that was it about me. Okay, last question from my side. So you worked in Amazon, so you must be very familiar with the leadership principles, right? Yes or no? Yes. Okay, so what are your like 4 or 5 go-to leadership principles in Amazon? Few of the leadership principles which I personally resonated with, as in I got feedback also for my performance. One was regarding the ownership, two was regarding the bias for action, three was regarding the customer obsession, and four was uh, I just a second. Yeah, we need to be frugal. So these are Hmm. the four areas which I feel that are very much in aligned. Okay, how many leadership principles are there? Uh, I think there are 14 leadership principles, Are you sure? or 15. Are you sure about that? Yes, it will be either 14 or 15 for sure. For how many years have you been working at Amazon? 21 months. 21 months and still don't know the number of leadership principles. Cool, I'm done from my side. So if you can. Hi Rishabh. Rishabh, you had mentioned that you worked in the domain of primary education for girls, right? Yes. Why girls only? Why not boys? Uh, so when I was generally like looking for some sort of a social contribution which I could do, this was a preference which I personally had from my side, that regarding girls, and the reason being that I feel that in the Indian sector specifically, that girls are still in the areas where there is a lot more improvement needs to be done, and so that was one of the reasons Okay, that. so do you truly believe what you're saying, or you have done it because you got the opportunity to do so? Be No, honest. actually, Be no, honest. I didn't. No, it is an honest answer. I didn't get the opportunity. I got and like I went and seek the opportunity. Like I reached out to the NGOs, talked with them, and tried to understand that what is the kind of students which they have, and then I gave my preference that I want to do specifically for a girl child, specifically let's say for a primary education, and then the other details followed up. That this is the detail. But the reasoning does not seem very strong, Rishabh, because very honestly, if you will ask me as to why do you believe, see, primarily, if the primary education is talked about, the condition is effectively worse for boys if you actually go through the data. And the reason we can effectively talk about the disadvantages that women have faced for quite some time, if we go back in the history also. But if you'll start looking at things in the larger perspective, you'll realize that the logic actually falls flat. Okay. So, sir, I when I was making this contribution, I didn't go through any statistic data as such. It is mostly related to what we in and around understand, what we read in the newspapers, or the general conversation which happens in and around us, where we get to know that specifically for a women's education perspective, number one is if you are educating a woman, then it is helpful. It is mostly empowering, not just for her, but for people in and around her also. That is one. And two is that I feel that they are at least based on not on the statistic, but what I have heard and read from the newspaper, or let's say uh, in the education when I did my college or But my specific. my point is, why not the others, sections? For example, let's say it could be LGBTQ, it could be, let's say underprivileged women, it could be, older men and women, senior citizens. There are so many sections. Particularly, the logic behind that is not very clear. But anyways, Rishabh, what's the weight of uh, the test cricket ball that we use, the red ball that we use in test cricket? What's the weight of that ball? Uh, so I'm not aware of the exact stat or weight. Okay. What is the length of the cricket pitch? Uh, 22 yards. How many yards, how many meters are there in a yard? I'm not sure about it. Okay, fair enough. All right, Rishabh. Let us move to Shrasti. So, Shrasti, why don't you start by telling us what are the values of SPJN?
So, I think SPJIMR have two main values, courage and heart. So they believe in taking steps, bold steps to make change and working with your, heart to make a change. Okay. Are you sure? These Value. two values I'm sure of. I'm not sure these are the only ones. Okay. These are not the values of SPJAN. Okay. Okay. All right. Shrishti, why don't you tell us about your values? So I believe in being honest with my work, whatever I am giving, and that has been always a way to grow in for me. And I believe in taking challenges, calculated challenges. So this also brings me to the third value, that is growth. So I like to do things where I can grow and the people along with me can grow. Okay. So, Shrishti, why don't you tell us a little bit about yourself with respect to the call that you have received, as in the specialization, and why do you believe you are the right fit for that specialization? So I have received a call for business management. And I think, given my experience in my fellowship, where I led a social enterprise from end to end, it was a small 10 people enterprise, but I got experience with a lot of domains, starting from product improvement, optimization, and also a little bit of the maintaining their supply and their deliveries. Then I also gave a proposal and picture to the SBI Foundation funding, and I got funding. So I managed the funding of 65,000, but I managed all the finances and all the bills. Then I contacted with the vendors and took all the uh, so I took all did all the finances, and then also the marketing. I collaborated with a lot of NGOs, put up stalls. So it gave me a overall all round exposure to business activities, and I want to grow on it. So it makes a perfect match for me to do business management. Okay. And would you want to opt for a specialization? If given a choice, I will like to go for marketing. Given I really enjoyed, applying my creative background in the marketing to come up with innovative solutions. Okay. So, Shrishti, can you tell us what's the difference between behavioral and psychographic segmentation? I am not aware of the terms. Okay. Are you aware of segmentation? Yes. Okay. So, what is segmentation? So segmentation is like making different groups, maybe according to culture or other parameters such as demographics, geography, and then we group them to understand their, the people in the group are homogeneous, so we can make products for them, understanding their behavior. Okay. Let us say my product is red wine. So, how will the segmentation happen for that? Can you repeat the My product? my product, let's say, is red wine. Red wine. Okay. So, how will the segmentation happen for this? Okay. So I think I will go first think about demographic, that and like in which areas the red wine is consumed. I think maybe it will be urban population more. Then I can go with age groups. I think middle age, I'm just taking assumptions. So middle age maybe, and red wine is also mostly associated with girls. So these three parameters are coming in my mind for now, and obviously there can be others. So, red wine is associated with girls. Who told you that?
It's just a perception I got being with my friends. Do you make perception so easily? Not Do you take, so my question is, do you take data backed decisions, or do you form perceptions just by observing things around you in a small set of people around you? I will say both. If I have to go something for professionally, I will check data. But So obviously, is everyone this forms. is this conversation a professional conversation? Yes. So then why are you not doing it? You are contradicting yourself, right? So since I can't get data, so So then you I will should be, have been clear about so like how if, I got the perception. okay, so now you tell me, how did you get that perception? So as I already specified, I have got this through my friends that they will uh, like more of the girls I saw drinking red wine than boys. So it is from my social perception. For now, I don't have data to back it up. Okay. So you want to do marketing, Shrishti. Who is your ideal? Do you aspire to become, a marketeer like somebody? I'm sure, somebody who wants to, get into Bollywood would aspire to be like, let's say, a Shah Rukh Khan, or, let's say somebody. Do you also have an aspiration? So I am really inspired by values of Apple, the way they have promoted their values instead of the product from the start. Okay. So What if are the I what are the values of Apple? I think creativity and innovation. Okay, creativity and innovation are values of Apple. Are you sure? Or are you just making it up like everything else? Like red wine is consumed by girls. She thinks, she is not sure about it. She thinks that's the most important thing here. So I don't remember the exact words, but I'm not making it up. But uh, So I think Apple is your dream company, Rusty? to work with, yes, I will like to work with their marketing team and the professionalism they have Who's in the current promoting. CEO of Apple? Sorry, Who's the current CEO of Apple? Tim Cook. Okay. And you know that Apple has been facing so many lawsuits, and they've even like accepted that they have uh, like slowed down mobile devices of millions of users just to sell their products. So do you still, align with their values? I think their values are the same, and it is very honest of a company to admit it in the market that they are facing problems, and that means they have the courage to accept it and they will work on it. But you still align with it, and still will it be your dream company? Someone who's done a company who's done fraud on that like that level, and they have accepted it, they have paid fines and everything, but still, they are a fraudulent company at the end of the day. Would you still have them as your dream company? I didn't say that's my dream company, but I will You like to did say work. that. You did say that it's your dream company. Don't contradict yourself time and again. Mhm. I did not say, but okay. So I will go to work with them. I will like to work with them, given the I I totally feel that it's like given they have accepted that they have done this is something I am like I'm okay with now. Like So given that, I've murdered someone and I accepted it fully, that, I've murdered someone, would you still work with me? um if you have paid the fines and if you are I'm sure that you will not continue to do it in the future, I may think of working with you.
I'm done with my questions, sir, if you have any. No, we will, move to the next candidate. We have Arun. Hi, Arun. Hi, sir. Hi, Hi. Ayush. So, Arun, do you know the values of SPJAN? Not particularly, sir. I'm not aware of it as of now. Okay. Have you seen SPJIMR's logo? Yes, sir. So, how many spikes are there in the logo? I'm not sure about it, but it's around 4 to 5. Nikunj, you should switch your cameras on. Nikunj, can So you there's tell us? something happening in the background, so that's the reason why it was off. No problem. Can you tell us for what domain has Srishti applied? Srishti is applied for information marketing, if I'm not wrong. Information marketing is no stream. Information broadcasting, if Information broadcasting is and no stream at SPJIMR. information and supply chain management. Information and supply chain management is no program at SPJIMR. Because it's Sir, not a I'm not sure. high game. You don't know anything about SPJAN. Come on. Sorry? Information broadcasting, information marketing. What is going on? What are the specializations that SPJIMR offers? Tell me One that. is finance, Hmm? the other one is operations and supply chain management. Hmm? The other one is there are two more, marketing, and the other one being the last one, I think, What have you applied for, Nikunj? finance. Finance. And you don't know about other specializations. I mean, at this context, I'm forgetting one. And to be honest, I'm sorry because there was a lot of distraction going on in the background. And that's the reason why probably I did not quite hear Shrishti's one. But if you ask me, I was being attentive before the But video went off. information marketing or the other ones you mentioned I do think not. I misspelled it in the heat of the moment, maybe. I mean, I knew all the specializations. I answered three in front of you. The last one I'm probably forgetting because of what's happening in the background. I'm really sorry about it. It's not because I do not know, it's because of the situation that I find myself in. That's why. Okay. All right. So, Nikunj, do you know how to measure beta? How to measure market beta? Yes, Yes. You have a finance call, right? right, sir. So, how do you measure beta from of the of any particular stock? There are two ways to measure the market beta. The first one is the formula goes as the covariance of the portfolio versus the covariance of the market returns Tell me very simple. divided by. Tell me very simple terms. Let's take Reliance Industries. I want to calculate beta for Reliance Industries. Very simple in layman terms, so that everybody here is able to follow your steps. Okay. Okay. Go So ahead. what you do is that the returns that Reliance Industries earning, the variance of returns of Reliance Industries. How do you calculate returns? I calculate, there are multiple ways to calculate the return of portfolio. Tell me one but let's simple way of calculating returns. Okay, so if let's say Reliance has 4 business lines, and let's say the revenue stream from each business line is given as per the weightage of, let's say, 20, 20, 20, 20, and then let's say one business has generated 100 rupees, and the weightage of that business is 20%. So it is 20% into 100, which is your 20 rupees, divided by the total revenue. I mean, the profits divided by the total revenue of the company that it generates. So The simplest way to calculate the returns. if I have to take profit divided by total Okay. revenue, Okay. okay, why will I take the sub segments of the business? Because that Because I can take at the Reliance Industries level. Reliance Industries is all the segments into it. It's not it a company which has subsidiaries, right? Everything okay. is subsumed. So the oil is also there. Reliance Jio is also part of it. Reliance Retail is also part of it. Everything is part of Reliance Industries. Okay. So why do I need to calculate individually? Sir, I'm trying to explain this answer in the simplest manner possible, taking Reliance as an example in layman terms, because I am not considering all the divisions of Reliance. If I Okay. were to nitpick every division of Reliance No, I'm Industries, not saying that you have to, pick every division. My question is for calculating returns. Why are we okay. picking even four? What's the point of picking, So the less than- simplest way of calculating the returns of a portfolio is basically the amount of profit you generate versus the revenue that the company has generated. That is your returns. And let's say now you were to find out the beta,
beta is nothing but the sensitivity of your industry, or let's say your company, to what is happening in the market. In Okay. other words, beta is something that you cannot avoid because it is a risk inherent in the market. Now, if I were to explain risk may be formed due to majority of the factors. But if we take a very simple example, in this case, it is Reliance Industries, because Reliance is into the oil production. Any interest rate movements across the economy will affect Reliance, and so that is the sensitivity of Reliance towards towards the market conditions circumscribing Reliance. So in short, it is what's happening. Your portfolio is moving in accordance to the economical conditions that is prevailing there. Nikunj, what was my question? You asked me to explain beta in the most simplest manner. I wanted you to explain it in a manner that everybody sitting here can calculate. Now let me go back to Arun. Arun, basis what Nikunj has mentioned, will you be able to calculate beta of Reliance Industries? Um, no, sir, I am not aware of that much knowledge that Nikunj has. But as of my understanding, No, 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 I'm not asking your understanding. My question um, is basis what Nikunj has mentioned, will no, you be sir, able to calculate beta of Reliance Industries or not? Simple. no, sir, I won't be able to calculate. Correct. Nikunj, if you have to tell somebody how to prepare tea simply, can you tell us everybody very simple in how to prepare tea? Give me very simple steps. Okay, in boiling water, you put tea powder, then you put all the masalas, spices, and then once it comes to a full boil, you pour in the milk and you let it simmer for another 2 to 3 minutes before your tea is ready. Okay. So now is everybody absolutely clear as to how tea is prepared? In a very simple manner like this, can you tell me how to calculate beta of a stock? Okay, so in this example, I'm sorry if I wasn't able to explain it clearly the last time around, but in simple terms, the beta is nothing but your sensitivity towards what happening. Now I'll break sensitivity up. Let's say you are going to the market, you are driving your car, you are on the road, and Nikunj, then Nikunj, you we do not want to understand sensitivity. Simple. Tell us steps to calculate beta. Do not explain it. Very okay, simple. beta is Tell a us steps. formation. Okay, beta is a combination of two inputs that is required. That is your covariance, and the one of them is the variance. Now, covariance is the movement with regard to a market. That is covariance, the way you are moving with the sensitivity to the market. And the other one is variance of the market. Variance of the market is nothing but the risk inherent in the market itself. And that is how you come to the conclusion of a beta. No, but I'm still not getting it. So you So asked me to what do I explain the do? I combination. take variance divided by covariance or You take covariance divided covariance by. divided by variance. So that is what I was trying to explain in the very first go, the formula. But you asked me to So explain it in a you mentioning simplified covariance manner. divided by variance, right? Covariance divided by variance. Covariance of the stock divided by the variance of the market. Okay, and variance of the market is the risk inherent. So what is Risk the inherent. inherent risk? Inherent risk can come from various factors, credit risk, maybe interest rate risk. But if I were to talk in terms of the market, it has to be preferably and predominantly your interest rate risk. Interest rate risk. What is interest rate risk? Interest rate risk is the risk that arises due to the interest rate movements in an economy. For example, an interest rate movement can be a currency fluctuation because of which your currency is being affected, and in turn, the Indian rupee in this How will case. you? So okay, tell me. So what? So if I, let's say for example, have to calculate, okay, what is the interest rate? How do I quantify it? How do you quantify interest rate risk? How do I quantify variance? So I have to take covariance by Okay, variance. How do I okay. calculate variance? Okay, so there is a formula for variance. So Okay, if I were to explain, first I'll divide it into two-step process if you explain me to. If you, I mean, if you allow me to, so sorry. go ahead, go ahead. One of them is the simplest method, a plus b whole square, which everybody knows. So what you do is, let's say, in this case, I'll ignore weights for 1 minute. It is basically your, okay, even if I consider weights, let's say in our portfolio, there are two stocks. And then in order to calculate that, the weight of the first stock into the variance of that stock plus the weight of the second stock into the variance of that stock plus 2 into the weight of stock A and the weight of stock B into the standard deviation of stock A and stock B. And then the and then there is just a minute.
And there is the covariance of stock A and B, which is the movement of both the stocks together. But in this case, because it is your variance, yeah, so this is what the formula looks like. If it had to be standard deviation, there would have been a root over in So order you're to get to a saying simplified you are equation. saying inside variance, I have to take covariance also. Yes, because that is the formula of variance, sir, variance of the portfolio, But you are in the denominator, there is variance of the market, no? right? So how do you Sir, but calculate variance? so variance of the portfolio is nothing but the weight of, let's say, stock A No, no, Nikunj, into I'm the, asking variance of the market. You mentioned okay, denominator, you have variance of the market. Okay, Nikunj, let it okay, be. Let me move across. Can you tell me what is the current bank rate? 6.5%. What is bank rate? Repo rate in simple terms is the overnight lending rate at which a commercial bank borrows money from the central bank. Overnight lending rate. It can be an overnight lending rate, which is a repo in the simplest term. No, I'm asking bank rate. And what is the difference with MSFR? MSFR, minimum sovereign funding rate. I think MSFR, I am not sure about this. I'll have to go back So and understand marginal MSFR. standing facility rate. So what's the Okay, I difference am, between bank rate and marginal standing facility rate? sir, I would not be able to Is answer there a that. difference between bank rate and repo rate? I am not sure about this. Before this, I thought they were synonymous to each other, Okay, but yeah, but they are not. they are not. Okay, what is the current reverse repo rate? I do not know the answer. The repo rate is 4.5%. No, that is the cash reserve ratio. Sorry. No, I would not know the answer. Okay, I think we can go back to Arun. yes. Yes, sir. Arun, tell us a bit more about yourself. Yes, sir. I am from Barmer, Rajasthan. I have done my primary schooling from Barmer itself. I belong to a rural background, so I did not have. Arun, can you come a little louder? Yes, sir, sure. So should I start from? Should I start over? Yeah, please do. Yeah. So I am from Barmer, Rajasthan. I am from rural part of Barmer. I have done my primary school from Barmer itself, and after that I got a chance to study at Jawan Navodaya Vidyalaya, Barmer, which is an institute for for uplifting the rural talent. So I got the chance to study at there in the ninth standard, and I spent 4 years of my life there. Those 4 years were very crucial for me because they have shaped my personality uh, in a complete manner. So I developed various skills like leadership, teamwork, and communication in Jawan Navodaya Vidyalaya. And after that, I joined Ferguson College Pune and did my Bachelor of Science in Statistics. In my third year itself, I developed some interest for economics, so I decided to study it further. And as I progressed in this field, I realized that I want to do my master's in economics. And so from after graduating from college, I spent most of my time studying economics, and while studying economics, I also developed some interest for finance, as these two fields are very interrelated. And as I continued studying finance and did some courses in finance like financial modeling and valuation, I found that I want to do finance, as it is using all the knowledge of what I gained from past academic endeavors. Like I have studied mathematics, I studied statistics, and I have studied economics. So finance is utilizing all these subjects. So I want to uh, further further do education in finance only. And in my while studying in college, I am living in Pune with my brother. So I also part-time in my family business. We have a family business of Kirana stores in Pune. So as I work there, I realized there are some really heavy inefficiency in retail store. So I want to
I want to create a business model out of it to solve these inefficiency, but I currently lack the knowledge of it, like how to do it. So this is one of the reason that I like to do MBA. And apart from all these, I talking about my hobbies. I'm a language enthusiast. I learned Marathi while studying in college in Pune, and currently I'm learning Japanese as in admiration of Japanese culture and their values. And I also like to make some healthy smoothies to keep myself healthy, as I am from a Marwadi background, so we are somewhat notorious about the stomach and all. So that is it for my side. Okay, so Arun, let us take a simple example. Or let's say I have a firm. I'm founder of a firm called ABC Limited. And we manufacture equipments that create smaller equipments. Okay, so we effectively manufacture heavy engineering machines that are effectively used in the other industries. Okay, so let's say if I buy an equipment, okay, a heavy equipment, and let's say for $10,000, and I take a loan against it. Okay, how is it going to reflect in the financial statements? Um, for financial statement, for $10,000, it would be asset, and for liability side, it would be loan of $10,000. So the balance sheet would match up totally. Okay, and what about your other financial statements like cash flow statement? For cash flow statement, we have taken a loan of $10,000. So it would be a negative, and after that it generates some cash flow. So those cash flow will be positive. No, I just for this transaction. Just for this transaction, initially it would be negative. What kind of a cash flow is this? Cash outflow. No. What kind of cash outflow? How many types of cash flow are there? I'm not aware of that. I just know there are two types, cash inflows and outflows. You don't know about operating, investing, and financing. What, sir? Operating, investing, and financing cash flows. I'm aware of operating activities in a firm and non-operating activities, but the other two that you are mentioning, I'm not aware of that. Okay. All right. Okay. Arun, if I have bought the machinery and I have taken the loan, should it impact the company's statements at all? For your personal use, sir, or for the company? I did not mention anything about the company, right? No, you asked about the financial statement of company, I guess. I said that I have bought a machine. How is Yeah. it going to impact the financial statements? So if I have bought it, will it impact the financial statements? Um, if you are a stakeholder, then I would not. Let's say I'm the promoter, right? Yeah. So if I am the promoter, then I am buying something. Okay, will it impact the financial statements of the company? I guess not, sir. Not Then really. why are you taking it into assets and reducing from the the Uh, other side? I thought you as a firm bought the product and No, I did not mention it. okay, sir. It was Okay, a Nikunj, can you tell me, let's say if we bought it for the firm, okay, how will it impact the cash flow statements? If the machine was got from the firm, you talked about the financial statements, right? Yes, It yes. would lead to a reduction in the cash or bank balance. No, we have taken a loan for it. So we've taken a loan of $10,000 to buy the equipment. So then how is it going to impact all the three elements: balance sheet, profit and loss, and cash flow statements? Okay, in balance sheet, it would show us an increase. Okay, you've already got the machinery. So it would create an asset in your balance sheet that is your machinery. In the cash flow statement, it would be an inflow in the financing activities No, because you've just complete the balance sheet first. No, you cannot have one entry in the balance sheet.
Okay, so it would lead to an asset creation in the balance sheet, and on the liability side, it would be a loan shown. Okay. And then because you've taken a loan of $10,000, it would be an inflow in the financing activity side, one. And talking about, okay, now because you've invested in a machinery, it would be an outflow from the investing activity side. And in the PL statement, there wouldn't. Okay, in the PL statement, I think your interest. No, no, no. PL statement, I'm not. No, $10,000 would not come anywhere in the PL statement. And at the same time, your But machinery investment will not make it to the PL statement as per the question requirements. okay, all right. Arun, you mentioned that you like solving puzzles. Yes, sir. So let us say that we have, 9 balls, and let's say the weight of all these balls, Mm, is equal except one. yeah. One of them is a little heavier. Okay. Okay, and all of the 9 look absolutely alike. Okay. So, and you have a physical balance. Okay. So how many times do you have to use the balance to certainly find out the odd ball? You have to find out in obviously the minimum number of attempts. Okay. So first I would divide the balls in 4 and 4. So Tell me how many attempts, and then tell me the solution. okay. Can I take a minute? Sure, 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 sure. We will move to the next candidate in the meanwhile. Rupal. Hi, sir. Hi, everyone. Good evening. Good evening, Rupal. Why don't you quickly introduce yourself and also tell us as to why do you believe you are the right candidate for the specialization that you've been chosen for? Okay. So, hi, everyone. My name is Rupal Roy, and I have completed my schooling from Bharatiya Vidya Bhavans, which is also the same NGO that has established SPJIMR in 1981. After that, I have completed my bachelor's in engineering from Punjab University, Chandigarh. During my undergraduation, I was grateful enough to have received a patent from the government of India in an invention that I have been doing in the RF energy harvesting sector. Also, I was facilitated by PGI Chandigarh and AIMS New Delhi as well for a different project that was related to breast cancer. Also, during the graduation, I stood out as the first in my college and third overall in the university. And apart from studies, I was also an active member of the school college dramatic society and had performed street play at various college fest, and we won a few of them. Also, I was the head of a event coordination committee of the college fest. After my undergraduation, I was campus recruited to in the consulting domain, that is Ernst Young, in the role of an analyst, where I worked for approximately 11 months in a internal audit with one of the biggest clients of the firm. After that, I got an opportunity to work in a distribution sector of a small company where I was managing the client relationships. Like we had a client and we were the distributors. So I basically provided the last mile connectivity between both the distribution company as well as the clients, which were MNCs. After that, I got an opportunity to work in ABN Towers and Transmission. That is a transmission company that constructs the towers and as well as the subgrids. I worked there as in the capacity of a site engineer, where I was working for like site surveying, project planning, and giving the details forward to the respective teams. After that, the suitable construction of the grids happened. Apart from that, I have a few hobbies, like I like to play cricket, and also I have recently started swimming, developed an interest in swimming. So yeah, that is Okay, me. And so okay, so Rupal, let's say, do you believe that it is okay to give up, or you believe that one should not give up? Sir, I would like to say it entirely depends on the situation and your willpower to what you are
trying or aspiring for. And always I don't feel like we have to keep trying till we can, but there is a stage in life where we have to move on, and that point of recognition that when we have to move on is very important, I feel. Okay, so you were preparing for UPSC, civil services. How Yes. long have you prepared for civil services? Sir, I had prepared like diligently, like I left everything and I prepared for UPSC 2 years. And after that, uh, I picked up a job. But after a job, during my nights or in my after my job, I still used to study for UPSC. Then you gave your third attempt also. Yes, sir. And what was the outcome? As usual, sir. In this year only I gave my third attempt and I couldn't make the cut. So then, why do you want to then move into, the entire management field? If Right. you are interested in UPSC, you should go for some sort of civil services. If it is not at a union level, it can be at a state level or a district level. Yes, sir. So basically, sir, my passion towards UPSC or civil services was entirely driven towards working for the betterment of the society. And to achieve that end, one of the means to achieve that I found was civil services. And for that, I tried my heart out. But I realized that it's not happening, and it's just a means to an end. So I still can serve the society in a better way through different opportunities. And if I am pursuing my master's in management, that can also help me towards my bigger life goal, that is to help the society in a positive way. But there are other ways of also helping the society, Rupal. It's not only getting into a management field, right? Definitely, You sir. could have There joined an NGO. You could have worked with an NGO, right? So why management then? Sir, I just to mention the point that I have been constantly been in connect with an NGO, that is Tera Hi Tera Mission, that is a charitable eye hospital where since 2021 I have been doing weekend services over there. But I feel like since I have been blessed with a patent, and I think I can take that idea forward into a viable business option, but I lack that business acumen right now. So once I will be having that business sense imbibed inside me, then I feel I can take that idea forward. Which there are two things. Like there is a invention for breast cancer and also a sustainable energy. And in But both of these, Rupal, if let's say you went into UPSC, how would have taken that idea forward? I still would have taken that idea forward in the way that How? it's just an invention. And after I get into the civil services, the But the government civil of services will not give you the business acumen, no. See, the point the very simple is you mentioning that you are wanting into management for business acumen. You are saying that you want to build up something viable out of it. So then either UPSC itself was not the right, way to go, right? uh, I would beg to differ here, sir. But once we get into the civil services, the government of India provides an opportunity to the civil servants to go for an executive MBA with the top. So you Uh, are basically wanting to get into an MBA through UPSC. Why would you not no, go to a UPSC management field yourself? You're getting no, into UPSC so that the government can fund your education. no, sir. That's not my ultimate aim. That was MBA just. basically is a fallback option for him. He's not serious about that. That's No, his sir, point. I'm very serious about it. That is why post my civil services journey, I took up a job that was in a distribution sector and a supply chain organization, as well as after post that I tried to gain technical knowledge also in my third organization. It's not that MBA is just my fallback option. And coming to sir's For the point that last 3 years, did you try for MBA? no, sir, this till How is June I not was. this a fallback option, Gopal? Sir, I believe till the last year, I was hoping that I was just missing out on UPSC by a cutoff like marks of 4 5 marks, and I was just Don't you think if you thinking want to go into social service, maybe this can be a good option? it can be, but sir, Given a uh, choice uh, between TIS and SPJIMR, which one would you choose? Given that sir, if you take TIS, you'd sure shot go into somewhere in the social sector. You'll be helping people out, doing all kinds of things that you'd love to do. Still, what would you choose?
So I would be blessed to have to choose between an option if I have TIS and a SPJIMR, but still I believe I incline myself to more towards SPJIMR because of the my schooling, that is Bharati Vidya Bhavans, and me and SPJIMR share What are some of the. values, Rupal? What are the values of SPJMR? So first of all, it's the social sector. They really believe in empowering the marginalized and the destitutes. Secondly, they as an organization believe not just in team building but also in personal excellence as well. Third, I would say they have a huge focus on inclusivity, and Okay. fourth, they are an action oriented team. They don't say that we need perfect individuals, but definitely they believe that we all have flaws inside ourselves, which I also personally believe that we as a human are not perfect, else we would be god. But they tend to channelize our energies in a positive direction. These four, I believe, are the core values of SPJIMR, but I still believe there are five, and I'm working to find out which is the fifth value, because there are five strokes on the logo, but I'm not able to find the So, fifth one. Rupal, what you are saying is that your objective is more towards social activities, yet you want to align with the values of SPJAN. So, tell me what is more important, objective or values? So give me a moment. I'm just processing the question. I'm just not able to get the question Okay, exactly. so I'll ask you a question that you won't be able to process since you've been preparing for 3 years for UPSC. Who was the first woman queen to lead India? First woman queen to lead India. Woman ruler. Obviously, if it's a woman, it's gonna be a queen. But yeah, first woman ruler. First woman ruler to lead India. I would say it as Razia Sultan Iltutmish daughter. Okay. Yeah. And is there anyone But else? I still believe at that point of time the concept of India was not developed. The concept of India developed Well, after I the did not British. ask for your opinion on that, but okay. Uh, what's your opinion of Iltutmish for that matter? Sir, Iltutmish was the second ruler of the slave dynasty, but he was not the apparent son of his predecessor, who is Qutbuddin Aibak. He was a slave of Qutbuddin Aibak, and after Qutbuddin Aibak's favorite slave was Iltutmish, who. But he was a very strong ruler. At that time, there was attacks from Mongols and Ghazni. So he built that iron and blood strategy, which helped to protect the western borders of India from Ghazni and attacks of Ghazni and Gauri, and the northern borders of India from the Mongols. Mm. That is Genghis Khan. So I believe he was a good ruler who also who wanted to do away with the policy of the aristocracy that was prevalent at that time by introducing So what's your opinion of Tughlaq dynasty, the founder of Tughlaq dynasty? okay, so the founder of Tughlaq dynasty was Muhammad bin no, just give me a Ghiyasuddin. moment. Muhammad bin Tughlaq's father, Mm. Ghiyasuddin Tughlaq, he was yes, sir. He founded the empire, uh, but he didn't rule. When he took the throne, he was very aged, and there is a common saying that his son Muhammad bin Tughlaq had killed him. Like had achieved victory in south, and he was doing Do you think elephant Muhammad parade. bin Tughlaq was a good ruler? The history books tell us that he is the wisest fool India ever had, Mhm. and I I sort of Why agree with. so? Give me two instances why he was the wisest fool. Okay, wisest because sir, at that time the currency that or the coins that were made were usually of gold and silver. He wanted to do away with this gold and silver because it was draining the money, and Okay. because gold is obviously expensive and it will drain the economy. So he introduced the policy of like having bronze coins, but bronze Was it being a bronze or copper? it was copper. My bad. Okay. My bad.
copper. So it was copper, and the issue with copper was it was having a debasing effect, where the when the merchants used to ask for, like, both the currencies were happening simultaneously, gold also and copper also. But what Tughlaq, like what the merchants did was, when they were giving out loans, they were giving that in copper, and when they were asking for returns, they used to ask in gold. That was also very detrimental to the What was the economy. other issue with copper coins? Copper coins, that it could be like copper was so readily available in this area of, like, the Khetri mines of Rajasthan, in these areas, that everyone was able to create mint his own money. Hmm. And this was leading to a inflation, hyperinflation sort of a situation happened in Tughlaq's time. And sir, coming to the second issue, he shifted the capital from Delhi to Daulatabad. That is, Hmm. the reason he gave for the shift was Delhi was in the north of the part, where we were constantly getting attacks I know, from. Bhagat, why was it not a wise or a foolish decision? Because the mistake he did was, he took whole of Delhi with him. He told every citizen of Delhi that they have to go to Daulatabad and settle inside Daulatabad. That is, I guess, it was not feasible, and the route from Delhi to Daulatabad is like approximately 1200 to 1500 kilometers, and on the way they were It is pirates. So Daulatabad? it's in Maharashtra, sir. Okay. And do you So think it was a good decision? it was a good. If you had to I shift, if you had to shift the capital of India from Delhi to somewhere, what would Okay. that city be and why? Last question. Okay, give me a moment, sir. Like, just analyzing. Take 10 seconds. That's it. Allahabad, Why? because it will protect India from the Western invasions. Also, there is like a buffer state called Nepal, not Nepal, but at that time it was the Kumaun's regiments, and that would be acting as a buffer state between us and the Mongols. Also, it would help us to connect with the Narmada region, which was very prosperous at that time for its rice cultivation. So the ruler could Do you think control Narmada region is that proximal to Allahabad? Narmada. I would say that Malwa Plateau, Malwa region, the whole of Malwa region. At that time, Narmada was like the second Ganga of India. That is why I mentioned the river of Narmada. Cool. I am done with my questions. If you have any, or maybe you. Rupal, you have studied electronics and communication, right? Yes, sir, it's a So way your back. story is very confusing. So you studied electronics, then you're, gone to UPSC. Now you want to do management. How many years of experience do you have, Sir, I have 2 years and 7 months. and how many organizations have you worked with? The three. So 2 years and 7 months is like, you know, close to 31 months, right? So the average time that you spend in an organization is 10 months. Right, sir. So, do you believe that, there is something off about it? Because, you generally do not have people working for organizations like 10 months and then moving to the other organization. Right, sir. Sir, I absolutely agree with you So, over this Rupal, fact. the risk that we are running at this point in time is that if we, take you in as part of the program at SPJIMR, you might run away because you tried doing UPSC, you ran away. Then you did 3 jobs, 10 months, you run away. Correct. So there is the common pattern in your profile is running away. No, sir. I believe in my young 20s, I have taken a lot of risks because of the courage I had in me, and the belief in me that I can take the risk. And if we take risk, we might come on top. So when I was working with EY, after that just had this click in me that I really want, now is the right time to go into the full civil services preparation, and hence I took that risk in my life to quit the job. But also, while taking a risk, it is very important to come back. I have seen people like investing 6 years, 7 years inside UPSC, and then thinking what to do. I just realized in two attempts I gave diligently, like very very focused. But after that I realized this is not happening, and I need to switch to corporate sector again. But I also needed to build my
expertise again, and that is why I picked up a job that was more connected to people in on the ground level, that is the distribution sector. Although when I was wanting to come back to corporate sector, there is a EY boomerang policy where they take back the employees who have resigned. Yet I decided to go for a different organization because I really wanted to connect myself to people on the ground and get a field knowledge regarding the supply chains and distribution sector. Okay. All right. So Rupal, can you tell me what is the difference between a triode and a MOSFET? Okay, sir, I can try. I studied in my third year. MOSFET is FET, field effect transistor. It's a type of a transistor, and I know the symbol, but to be honest, sir, and what was the first term, sir? Triode. Triode. Sir, I can just recollect the names, but I'm really confused. Like I really don't remember. No worries, no worries. We will, move to Arun. Arun, have you thought about the answer? Yes, sir, it would be three. Okay, Three steps. okay. So, It would be three, right? yes, sir, minimum steps. Three. Before Arun answers that, I'd just like to go to Nikunj and ask him what was the question to Arun that was posed by Sudhanshu sir. Yes, so Sudhanshu sir gave him an option that if there are 9 balls and one of them is heavy, within how many minimum tries would one be able to find out which one is the heavier one? Cool. Let's go back to Arun. Yes, Arun, please So continue. Arun, you have mentioned three attempts, right? Yes, sir, I may have mistaken for the 9 balls to be 8 balls, so Okay. it's my bad. Okay, that is incorrect. Anyways, no worries, Arun. So Let us it go may be more back than to three. Atharv. Atharv, hi. Hello, sir. Hi, Atharv. So, Atharv, which domain have you been shortlisted for, and why do you believe you're the right fit for that domain? Yes, sir. So I have been shortlisted for PGDM marketing, and I feel I'm right fit for it because, firstly, I have an experience of 1.5 years in sales, which is like an associative domain to marketing, and I have done around 16 months of internship, one of which included me working in digital marketing domain. Like half of my work was comprised of digital marketing work, and apart from that. I work in a family business which was facing some issues, and to overcome those issues, we had to do some, reforms and changes. One of those reforms includes doing some marketing, which while working on that part, I have realized that firstly I don't have great knowledge of marketing, but I do have knowledge of the supporting part, which is sales. So I'm the right person who has identified a gap, which is marketing. Like I lack knowledge of marketing and real world experience in marketing. So I would be an ideal person to gain knowledge, and I would be contributing a lot in this program. And that's why I feel like I'm an ideal person. Okay, Atharv, you have 1 minute. In the panel, we also have Shrasti who wants to eventually do marketing. So what Yeah. you have to do is you have to, address Shrasti and, tell her as to why you should be selected and not her. Okay. If we are to take only one person out of the panel for marketing, it should be you Okay. and not her. So you have 1 minute to do this. So can I just get a bit of clarification about this? Yes, go ahead. Yeah. So am I supposed to have a conversation with her, or am I supposed to just like tell her what I feel? Why should I be Yeah, you have to tell selected? her that you are the right candidate, and you should be selected. Okay, and Okay. between you and her, you are the right candidate. Okay. So firstly, Shashti, I feel I am a right candidate. Firstly, I would like to acknowledge that uh, what you mentioned, that you have a great, drive to become a marketing professional. That is great, and I feel that we need more women in our industry. But I feel that I am a better candidate than you, and I'm a more deserving candidate than you because, firstly, I have identified what are my needs in my professional career, and secondly, I would be an ideal candidate whose skills complement the marketing domain. Like I have
good communication skills. I can take accountability. I am a creative thinker. I'm a creative thinker, and yeah, I'm a quick learner also. So these skills specifically complement my profile. And along with this, uh, I have been an active participant throughout my life in curriculars, extracurriculars, which is very important in marketing to build an overall knowledge of market. So I feel because of these reasons, I'm a better candidate than you. Yes. Shrishti, are you convinced? No, because whatever qualities you said, I also have, like communication. I am from a creative background, so accountability, I can vouch for it. That and extracurriculum, I have been active, so I found no extra thing that I don't have, and you should be selected for. Okay, fair enough. Thank you, Shrishti. Atharv, I'd like to take the questioning forward for Athar. yes, yes. So you said you've done, 16 months in digital marketing, and then you mentioned, why marketing. Maybe you don't have that experience in marketing. Yeah. Number one, you are being humble, over humble, I may say. Second, you So are can I just you're not clarify? very confident. What's like between the two options? Actually, I mentioned that my internships part of around 4 months included me working in digital marketing. The entire 16 months I have done are multiple internships, around 4 internships. It's not one internship, which But I included of. remember you mentioned 16 months of Yeah, digital. I said that I have done What did you do 16. in digital marketing? Tell me. Majorly, digital marketing. My internship included of creating social media accounts, creating Instagram, LinkedIn, Facebook, Twitter, and then Okay. creating a YouTube channel where we uploaded few product videos. We created uh, graphics and brochures for our products that we have, and Mhm. we rebranded most of our products. Created new logos for them because the old logos were quite uh, dull looking and not aligning with what they represent. So those are the major parts that we work on. And we Who did also you, who did you work for, Athar? actually I worked in my family business for this. Okay, so you basically created social media accounts. So it Yeah. was more of a social media internship, right? If I'm not wrong. I just missed one part. I also worked on website, and we also had our cold emailing part in that. But website also comes in the technical part. What did you work in the website? What did you improve, or what if you were developing it? What were the elements that you took care of? Yeah, firstly, our original website just comprised of 3 to 4 pages. It was a very simple website because it was not very, prioritized in our entire operations. So I created a new structure where I had covered all the products uh, that our company offers, and out of those products, I created like main priorities. Which products can be, more helpful to our customers, and after considering that, I created, I guess, a 30 odd page website which comprised of descriptions of all the products and the benefits that they will get by using our products, etc., etc. What are the parameters that you focused on, Athar? Let's be very objective here. Let's not go into subjective things. What were the Yeah, parameters that you focused while developing the websites? Name any three or four. That's it. yeah. First was easy to access because our original website did not. Accessibility. Okay. Second. Yeah, accessibility. Second was good UI interaction, Okay. and third one is uh, complete information uh, providing. But that's what anyone would do, right? Yeah, Did but that you was do what missing in SEO our. for that matter? Sorry. SEO. Yeah, yes. So, What is it? like, yeah, SEO is search engine optimization. Basically, to do search engine optimization, what we have to do is firstly, we have to make sure that the basic parameters, like having an HTTPS certificate, is met. And apart from that, we have to include the right keywords which are trending right now. And that's the first part of it, and based on that we have to keep updating our website, like what are the trends that are
You know what going on keyword that. ranking is, Athar? I'm not sure. Actually, we used We Google built an Trends entire for. website, worked so much in development of it, but you don't know what SEO and like keyword ranking is. Okay, what other things do you know about? Do you know what marketing funnel in digital marketing sounds like? Can you run me through it? So I'm not sure about it. Okay. Do you know what a CPR is? No, sir, I'm not sure about it. CPI? No, sir, I'm not sure about these You things. won't be knowing about CPA and CPM as well, right? Yeah, yes. You know that CPM is the most basic thing that any digital marketeer, 2 days of digital marketing can teach you. Will you agree to that fact? No, sir. Why? Why won't you agree to the fact? What is CPM? So yeah, You know what a I CPM is? I guess you don't know. Cost per mile. Cost for, making sure that your ad is visible to maybe 1,000 viewers. That's the most okay. basic thing that, you learn in the fundamentals of digital marketing, even if you're reading about it or working on it. Why Okay. do you think you don't know it? So because I did not take any course as such, I learned it from YouTube, whatever I could, uh, watching YouTube videos, and I tried to apply it to our company's digital marketing process. No, basically, you worked in a minuscule part of this digital marketing, social media marketing, right? Yeah, correct. So, do you know what an engagement rate is in social media marketing? No, sir. What are the, if you want to promote your company, say family business, in social media, on social media, Yeah. what are the three, four things that you're gonna do? Like, if you want traction on your page or on any of your, campaigns in the next 1 week or so, what are the three, four things that you're gonna do? Since you manage social media, I expect a good answer from you now. Uh, so can I take 5 seconds to think about it? Take 10, but give me a good answer. Well, I think the 10 seconds are over. Yes. So I think I will promote it based on three things. Firstly, I will include our customers' testimonials. Secondly, I would include the top features that our products have, and thirdly, I will include the benefits they will get out of our products. That I And can do also, on I can that I can do on a poster, on a website, on back of an auto rickshaw also. What does social media has to do with it? social media offers an better reach than any auto rickshaw. Do you see Amazon promoting testimonials on their social media? No, sir, because So why would you do it? because our company cannot be compared with Amazon. You Amazon see has any a small business doing that, promoting testimonials on social media? They do it on the website, I agree, but social media, I've never seen it. I'm not sure why they're not doing this. Okay, my last question to you, Athar. Yeah. Tell me, what really did you do with the social media, like for your family business? You said you created accounts that anyone can do. I can create it in 5 minutes, 5 accounts, right? You said you created Yes. YouTube channels, right? Yes, sir. Now you have 1 minute on this floor. Yeah. Tell me really, what did you do? What impact did it create? That's it. And that will be Uh, the end of our discussion now. so frankly, if I have to tell you, I did create all of these social media accounts, and I did create our social presence because that was missing. We did not have any social presence before that at all. So that was the first thing I made sure that we have a social presence that gives our company more legitimacy and chance of being recognized and discovered. Uh, Apart from that, we did uh, learn from that experience that social media marketing does not work for us because we work in a sector where almost none of our customers are looking for their solutions online in social media accounts. So it did not create much impact. So that's why we stopped working extensively on our social media, process. Okay, I'm done from my side. I think we can move to someone else now. Sir? Yes, let's move to Utkarsh. Utkarsh, which
specialization have you got the shortlist for? Sir, I have been shortlisted for business management So, specialization. so can you tell me 5 companies visiting SPJAN for business management? No, sir, I'm not aware of that thing. Okay. So Utkarsh, what all calls do you have apart from SPJAN? Sir, I have like most probably I'll get a call from XLRI Jamshedpur, Okay. So, and okay. And what else? then normal cab calls and Okay. So let's say between SPJAN and XLRA, if you convert both the calls, which call would you want to opt for? SPJIMR. And why is that? So because the values which SPJIMR holds are the values which aligns with my values, and Okay. also Mumbai being the financial capital, I would like to have my institution where I'm pursuing like the most important degree or most important curriculum of my life to be in the financial capital of India. Okay. So what are the values of SPJAN? So mainly SPJIMR as an institution is mainly concerned with the societal impact it is creating. And No, what are the values? start Give me how many values are there? there are 5 values. Okay, what are the 5 values? Starting with the impact on the lower or underserved sections of the society. Okay. How is Then SPJAN working to elevate the lower or the unprivileged part of the society? Just keeping it as one of the values does not make sense, right? So they must be doing something. So what are they doing about it? I'm not aware of the So campaigns. how do you really relate with them if you do not know what they are doing about it? If I mention 5 values about myself, you will not start resonating without knowing actually as to what I'm doing, right? Utkarsh? Yes, sir. So Yes, sir. how do you start resonating with SPJAN without understanding what the values mean? Um, so that's my fault that I haven't been thorough with the No, initiatives SPJMR has So taken basically, from you're its. not serious, right? Utkarsh, you're not serious about your candidates. You've just come up and shown up for the interview. You'd rather go Sir, to XLRI and still, you'd not read about XLRI. You'd better go to, cap calls. वहाँ पे भी यही करना. Do you uh, even think you should do an MBA, Utkarsh, if you're so unserious about it? yes, sir. Like I'm serious for MBA, and I think I'm a suitable candidate for this Why are curriculum. you suited for MBA? I can't really find a reason, You did not care to look up for the values of SPJMR. You did not know, apart from just 2 reasons, why should you join SPJMR over XLRI? Why do you think you should pursue MBA? Let's get like clear on that. So since my experience has been into trading, like I have a good knowledge of trading in the financial markets, and I think that apart from trading, my interest is in business, but I'm not holistically thorough with the business aspects of a business aspects of a conglomerate or of a business, and to elevate my levels of the understanding of business terminologies and how a business is operating as a whole. I would like to pursue MBA, which would add to my candidature, and not only with respect to the career perspectives, it would also elevate my personality when I'm collaborating and like fostering a culture with my highly competitive peer group, a highly pristine faculty group, and the infrastructure which I'm getting at SPJIMR. How would the infrastructure affect this? So the curriculum it provides, and Infrastructure, not the like pedagogy. the infrastructure I was referring to was the ecosystem being provided by SPJIMR. Are In term, infrastructure and ecosystem the same thing, Utkarsh? sorry, sir, I might have used the wrong So terminology in you the mentioned infrastructure. I'm very much interested. What do you know about the infrastructure at SPJMR? not much. Okay, I still, I'm not very sure about your candidature. You seem to be like a very, like, not a serious candidate. No, Utkarsh, I'm with my questions. Yes.
Yeah, Utkarsh, very quickly, you mentioned that you value system is an important element for you to make a decision. Correct. So between XLRI you and SPGen you made a decision basis two parameters. So two parameters that are important for you is one value system, and second is location. You mentioned Yes. Mumbai as a location. Is there any other parameter that you take into consideration while making a decision, or are there only two elements? So there are plenty of decisions. There are plenty of elements. So what are some of the other elements that also helped you arrive at this decision between SPGen and XLRI? So like more elements to conclude to this decision was the influence of what like is the Jain group as in whole holds. So whatever the connections I'm getting at SPJIMR is much more it's much more influencing as compared to what I'll be getting at XLRI as By an definition, organization. XLRI has greater legacy, right? When did No, XLRI start? no, it has a greater legacy, but when it comes to India, Jain family holds a lot of resources which portrays SPJIMR in the good But image. you And will not meet the Jan family only. no, I won't meet the Jain During the family. 2 years that Let's you say he spent. meets the Jan family. Who was Mr. SP Jain, Okay. Utkarsh? Mr. SP Jain was a renowned businessman and who was also son-in-law of Mr. Dalmia. And then going forward in his life journey, he accumulated a lot of businesses in his portfolio. And when they parted ways with the Dalmia family, they went on to acquire many media channels such as news channels and like the very renowned Times Group like Times Group. Also, they hold Economic Times in their portfolio. So how does the Jan family effectively influence your decision of taking SP Jan? Sir, the like SPJIMR is one of the key portfolio of their institutions. For example, Mr. Bidla has stake, like he owns BITS Pilani, and as compared to any private institution, when it comes to engineering, BITS Pilani stands out with with the like very renowned IITs of India, like with the Why very don't renowned you IIT. why don't you go for Bitsom? Why do you want to go SPGen? You can go to But they, Bitsom. Bitsom is with Aditya Birla. yeah, but they don't have the legacy maintained yet, and But I the don't. legacy, if the legacy is the parameter, then you should go to XLRI. So I think it's having all the parameters and the optimal level which is required. Like Bitsom is newly established school, so it doesn't have a decent alma mater. SPJMR has the good, great alma mater, great legacy, and also it has a backing of a great conglomerate. So how is backing of a conglomerate important, Utkarsh? Because SPGen, the Jan family is not going to offer placements at SPGen, right? Neither are gonna they offer courses there. Yeah, neither they are teaching how to do business, nor they are, basically giving you any placements. How is the backing important? Like what I think is when something is not being done from the monetary perspective, the values play a key role, and there won't be any like it What's the doesn't. It's fees not. of SPJIMR MBA course, Utkarsh? It's 24 LPA. Is it not the same as any other MBA in the college in the country? Yes, sir. But then So is it's it not also, being done from a financial perspective? sir, I don't think that financial perspective is their key goal. It's aligning with the values of elevating the society. So they are just trying to uh, make some like They would have socially done like responsible. FMS, right? 2 lakhs or 3 lakhs, 4 lakhs, something. Yes, sir. But You still stand on comfort. the financial perspective part. Yes or no? A binary Yes, yeah. question. Yes, sir. Okay. What's your dream company, Utkarsh? My dream company to work with is Motilal Oswal Why not something that the Jan family owns? Why Motilal Oswal? because Jan family has no standing in the investment banking firm. Otherwise, I would have been very interested in that.
So basically, you are someone who seeks very much, convenience in respect of where do you want to study, who supports. Matlab, bas just to match your answer with the question, you can just do that. And when you want to have a dream company, you'll go for Motilal Oswal. Tell me, is Motilal Oswal the best investment banking firm in the country? No, sir, but it's one of the renowned Indian origin investment banking firm. Which are the other ones? Uh, Edelweiss, Just two, just one another. Any and other firm? HDFC also has its investment banking division. Every bank has an investment banking. Yeah, so you see, yeah. So Utkarsh, let's say Motilal Oswal offers you, a package of 10 lakh rupees. Would you go for it? Uh, Sir, if I have a better offer in the same domain, Okay. obviously not, sir. No, but Then why? But you'll you go for a mentioned, ride. you mentioned that your parameters for decision making are values. Your parameter for decision making is who is backing it. So Motilal Oswal is backing it. So that backup is there, right? And you also mentioned irrespective of the financial metrics, right? So yeah. So there have to be various metrics, and obviously, if I have to create an impact in the society, I should be sufficed on my end. Then only I can contribute to the society. So if I It's don't, not very selfish that you should be well to do, only then you can contribute to the society. There have been so many people, who've just been able to support themselves barely, but they've done so much for the society. but first, like I think as a human, we need to be self-aware, and then only we can help others. Because if we are not, see, wisdom only helps when you have a say in the society, and you have a say in the society by Basically, having you some want to stand. be a philanthropist, Utkarsh. That's what I can get from you, don't you? My goal is Don't to want to be a be, social, don't want to contribute on the social aspect of the country. You want to be a philanthropist. Have enough money, give it out some to the poor, take rest for yourself. That's it, right? no, sir, more like Mr. Tata. Uh, to like if I get an opportunity, I would try to serve my country in the way Tata family has done. Why not like Mr. Jan? Like How I'm has not aware. SPJIMR supported the country? You were so fascinated by the Jan family. Tell me two or three contributions of the Jan family to the social aspects of the country, other than the business ones. We all know about the business aspects. I'm not aware of it. Okay, done from my side, sir. Yeah. Let's go to Abhiru. Yes, sir. Abhiru, basis, the people that we've seen so far. Okay. Correct. If you have to select two people and you have to reject, obviously, then everybody else, who are the two people that you select? So in my personal opinion, based on the conversation that the other participants had with the panel, I would be selecting Nikunj, based on his specialization of finance. And second, I would be giving an opportunity to Rupal, and I would be rejecting everyone else. Okay. Yeah. Okay. All right. So, Abhirup, tell me what is the specialization that you are opting for? So I've gotten a shortlisting for the information management specialization. Okay. Who else in the panel has information management? Uh, Information management is, if I'm not wrong, Rupal has it. Rupal has information management. Okay. Yeah. I think so. Yeah. Okay. Rupal, is he right? No, sir. Okay. Okay. Abhirup, who else has information management? Uh, I think Rishabh Rishabh Dhar has information management. Okay. So, who do you think is a better candidate? You've heard Rishabh also. Correct. Okay. Between you and Rishabh,
who do you think is a better candidate for information management? So from judging from what Rishabh has said about himself, I feel me and Rishabh are very coming from a very similar background. I'm also been working for an organization. I've been working for last 2.5 years in Deloitte, and I also come from I've also done a graduation in computer science, but I feel that I am a more suitable candidate because I've been much more proactive in my during my undergraduate. I have been part of some social volunteering work, and I feel that personally I am more moldable into a better candidate for the information management branch. And since I have a bit, I feel that I am more suitable. Okay, so you mentioned computer science. So can you tell me what is the OSI model? Uh, OSI model. Yes. Uh, I'm sorry, I'm not able to You recollect. mentioned that you were very active during your undergraduation. How Correct. were you active? You were not even studying your course as well. So I feel that You were active in everything else but studies. Hmm. mm, I'll say that the education that we get from the undergraduate, I feel during the course of the 2 years or the 3 years that I have been working, some of them get lost because of the work that we are doing at organization is not as much correlated to the curriculum. It's more about the work that we have to learn during the organization. So who is So who is responsible for it? yeah, I totally not I don't I'm not trying to put on the responsibility to someone else. I could have been more like could have tried to be updated and could have continued studied, but I've not But you, retained. Abhirup, you mentioned that you've been active during your undergraduation. Correct. What does that mean? So by being active, I was going towards a bit of the co-curricular part. So I have been part of many clubs Why during. co-curricular? Is the curriculum itself not important? No, it's important, but I feel that when I was trying to compare myself with Rishabh, I feel that the curriculum are kind of the same, but I didn't see him telling about any kind of co-curricular activities. So I thought that when I was trying to distinguish between me and Rishabh, so I have been more active in that department. What did you do in your co-curricular activities? So one of the Take 30 major. seconds, be very objective. Go. Do you want me to think for 30 seconds, or you are giving me 30 seconds to answer Speak the for question? 30 seconds. That's it. So the major contribution was being the co-lead of Microsoft Learn Student chapter. I've been part of the Microsoft student community for since my first year, and during the third year, I was promoted to the co-lead. Apart from that, I was also part of the management team of Saturn Area, our college fest. And aside of that, I have been part of the some of the volunteer activities during my college years. Okay. So Abhirup, you work for Deloitte, right? Correct. So can you tell me what is the turnover of Deloitte? Um, Sorry, sir, I'm not aware. Okay. What's the profits? Have you seen the books of accounts of Deloitte? No, I think because I was part of the IT department or the development team, it was never. I mean, obviously, I could have been proactive and search for the same, but it was never sort of crossed my mind that I should be aware of this. Yeah, but you did mention that you are very proactive. So, okay, Yeah, say yeah, that you're contradicting yourself on that. Okay. yeah. So tell me who's the India head of Deloitte? Sorry, I don't recall the name. Okay. So can you tell me something about Deloitte at least? I would say that I recently joined a newer organization. I'm working for Clearwater. So So, therefore, I'm very sorry that I asked you questions regarding
No. Deloitte because you've changed your organization. Uh, Therefore, it absolutely no. makes No, useless I'm to because I'm sorry, I'm interrupting you, please. go ahead. Go ahead. Yeah, so I don't want to say that I'm not like you're not allowed to ask questions about Deloitte, but I'm not aware because I just don't recall. But I can give you the name But of you, the Abirup, you mentioned that you do not recall computer science because you've been working for 2.5 years. Now I'm asking you correct. from your from your work experience. Now you're telling me that I don't recall that also. So So yeah, you I should pick can up you should pick up a topic. yeah Let I us can talk. decide. Yeah, I let's him pick up a topic and then we'll ask questions on it. Yeah, you pick up a topic. Sure. Sure. I would be happy to answer questions about what I have been working at Deloitte or what I have been working in my present organization. Okay. What's your present organization? I'm working at Clearwater Analytics. Clear water analytics. Why? Correct. Why is it called clear water analytics? It's based on the river in Boise. River in? Boise. Okay. So yeah. So tell me, what do you do at Clearwater? So I'll tell you about a bit about the organization. So it's a fintech company. It's a SaaS-based fintech company, and what they're doing is financial reporting. And most of their clients are insurances, and they also include corporate giants, and they also include bigger asset management, and they do portfolio managers. So From do my you know anything about insurance, Abiru? uh, so during my initial induction in the organization, I was told about a bit about the insurances, how they work or something. But I Okay, my two domain, questions from my side. Number one, types of insurance. Number two, types of data analysis. That's it. Go on. I might be very wrong, but is the insurances like life insurance and health insurances? Move on to data analysis. What are the four types of data analysis Uh, Data in analysis in terms of insurances or in general? in general? So. Uh, Data analysis can be done, just a second. So I think data analysis consists of mm, clustering the I know what it consists of. Other types of data analysis is what I am more interested in at this point of time. okay. I'm sorry, I'm not like in what particular domain are we asking about the data analysis? In general, So like there's all sort of data analytics if you want to consider, like if you want to run a data analysis on your social media platform, how is your post being viewed, or how is being the engaged. There's a data analysis on that. You can do the data analysis on your stocks, how they're performing, and there's data analysis on the basis of your risk mitigation and how you're managing your risk. I don't want you to, jumble around words or Yeah. move that part. I think I'm done with my questions. So if you have any more. Yeah. Yeah. So, uh, Abiru, Yeah. you why do you tell me what's your where do you see yourself, let's say 10 years from now? So I want to be a part of an organization where I can be doing where I will be able to do meaningful impact. And I also is one of the major reasons that I am pursuing MBA is because I feel that I am a candidate that will be able to mold into a future leader. And I find myself I think that is one of the things that I aspire to, is to be in the sort of a position where I will be taking the decisions that will be more meaningful, and that can be also like im that can also shape my career. So What 10 do you mean years, by meaningful? so What Meaningful in the sense. Uh, so in like 10 years you want to take meaningful decisions. So whatever you will be taking before that will be meaningless. So the Hmm. first actually, 8 years I'm uh, going to take all meaningless decisions. In no. 10 years I'm going to take meaningful decisions. What's the point of it? So I'll say from the from
judging from my experience, so I'm working as a developer. I had worked as a lower, I started from a lower level, right? And I've been working under my managers, the product managers. So what I want to do is I want to bring changes to the organization level, because from what I felt at Deloitte, it was that the product managers, they don't take much ownership. The task being divided is not very regulated, and how the tasks are managed can be improved. So from what I want to say from the answer was that I want to be in a sort of position where the decisions that I will be taking, can you can see the result them you can see the results very clearly. Okay. So Yeah. basically, you believe that your managers are not doing the right work, so you want to become, manager and do the right work. Uh, well, I yeah, I wouldn't. I just don't like to say that they're completely wrong. But yeah, there's obviously a But scope they of are improvement. partially wrong. There is a scope of improvement. So they are partially wrong, right? Correct. Okay. All right. Ayush, do you have any further questions? I think I'm done with the questions. Okay. So what we'll do is we'll come to the feedbacks. Today also what we've done is we've combined the GI1 and GI2. In the next one we'll sort of separately have GI1 and GI2. Okay. So Ayush, why don't you go and start with the feedbacks and then I'll add on. Sure. That. Just give me a second. With respect to Rishabh. So Rishabh, when you were talking, you could be more specific about whatever you were mentioning about, right? Whenever we talked about Amazon, you did not know the number of leadership principles. Amazon is very, very stringent. I interned at Amazon, and every day, every damn time of a meeting, they used to talk about leadership principles. Be it tech call, be it a managerial call, they were very, stringent about the LPs out there. So if you don't know anything about them in specific manner, it's really gonna hurt your chances, because the interviewers are gonna know about what LPs are and the number of LPs सबसे ज़्यादा market करती है Amazon इसको, right? Then when I asked about you कि you've been working in the Colombian market and stuff, what's the Indian parameter of the same? You are like blank. You need to set a benchmark. भाई इंडिया में एमबीए करने वाले तुम्हें पता होना चाहिए कि इंडिया की बिजनेस मेट्रिक्स क्या है, राइट? आपको पता नहीं था किस बिजनेस मेट्रिक्स पे काम कर रहे हो. यू आर वर्किंग इन द पेमेंट डोमेन. आप बोल रहे हो इंडिया में द पेमेंट डोमेन इज वन ऑफ द मोस्ट बूमिंग थिंग इन द फिनटेक सेक्टर. If you're not aware about it, it's gonna hurt your chances, literally. उसके बाद से you mentioned outright, कि ठीक है, cricket is something that I live, breathe and live. If you live, breathe and live about cricket, ना आपको पता होना चाहिए कुछ भी. मतलब I was very specific about like women ODI. हो सकता है नहीं पता हो, that's still fine. But whenever like Sudhanshu sir was asking about the weight of a cricket ball, आपको नहीं पता था. You could have asked, you could have been asked height of stump, length of a bat. नहीं पता होगा तो then there's no point of like saying cricket is something that I like I'm so mad about. आपको पता होना चाहिए what are the stadiums. ये like गूगल करो यार, रिकॉर्ड्स पढ़ लो पूरा, 2 दिन लगा दो क्रिकेट पे. बट इफ यू आर स्पीकिंग सेइंग द वर्ड क्रिकेट, यू शुड बी वेरी स्पेसिफिक. आपको सब पता होना चाहिए एंड टू एंड, राइट? When I tested your knowledge on Amazon, it was very okay. And again, when I asked about specifically ki, मतलब all I could see was कि when you said कि, you were very passionate about education for girls, that was a brilliant thing. कि passion stood out. बट डेटा बैक नहीं दिख रहा था यार. मतलब इफ यू वुड हैव बीन समवन हु वुड हैव ऑप्टेड फॉर अ मार्केटिंग काइंड ऑफ डोमेन, तब दिस वुड हैव बीन अ वेरी आउटस्टैंडिंग पॉइंट कि ठीक है, समवन हु इज पैशनेट अबाउट समथिंग, आप ड्राइव कर सकते हो चीजें. बट आप जब इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट में जा रहे हो ना, तो आपकी डेटा वाले पॉइंट बहुत स्ट्रांग होनी चाहिए. इफ यू आर आइंग अ प्रोडक्ट मैनेजमेंट रोल, इफ यू आर नॉट डेटा बैक्ड, things will go like way off. So yeah, that's for Rishabh. For Srashti, you mentioned about your work ex कि I am from a creative field, XYZ सब चीज. बट आपने बहुत चीजें बताई, मैंने ये किया, ये किया, ये किया. इम्पैक्ट क्या क्रिएट हुआ?
काफी लोगों ने काम बताया और उन्होंने बताया भी कि व्हाट इम्पैक्ट वाज क्रिएटेड फ्रॉम देयर वर्क, यू डिड नॉट मेंशन एनी इम्पैक्ट। सो द मोस्ट हाईलाइट फ्रॉम माय वर्ड, जो मैंने एकदम कैप्स में लिखा है अपने कॉपी पे, इज नो इम्पैक्ट। आपने बताया ही नहीं कि इम्पैक्ट क्या क्रिएट हुआ आपके काम से, राइट। और आप सब चीजें आपने सब चीजें कर रखी हैं, आपने वर्क एक्स में ये बताया कि मैंने ये किया है, वो किया है, मार्केटिंग भी किया है। इतनी सारी चीजें नहीं बतानी होती है, आप बताओ कि हाँ ठीक है, आई हैव ट्राइड सम मेनी थिंग्स बट मार्केटिंग इज समथिंग दैट स्टूड आउट फॉर मी। टॉक अबाउट मार्केटिंग स्पेसिफिकली, किस मेट्रिक पे काम किया, किस डोमेन पे किया, क्या इम्पैक्ट था। लाइक इफ यू गिवन 40 सेकेंड्स, आपको क्या बोलना होगा वो बोलो आप। यू कैन नॉट टेक जीआईज में स्पेसिफिकली, पीआई में स्टिल यू कैन टेक अ चांस। जीआईज में यू हैव टू बी वेरी स्पेसिफिक अबाउट व्हाट यू स्पीक, इट शुड बी वेरी इम्पैक्टफुल, मेट्रिक ड्रिवन, कि ये किया मैंने, इसका ये इम्पैक्ट था। सिर्फ व्हाट से नहीं होगा, व्हाट वाज द इम्पैक्ट वो भी बताना पड़ेगा आपको, राइट। फिर मार्केटिंग बेस पे योर नॉलेज वाज अ बिट लैकिंग व्हेन सर आस्क्ड अबाउट सेगमेंटेशन, आप टारगेटिंग पे चले गए थे एक पार्ट में। तो सेगमेंटेशन पढ़ो आप, क्या होता है, व्हाट इज एसटीपी, रीड अबाउट बेसिक्स ऑफ मार्केटिंग। मार्केटिंग वाली सेशन आई थिंक आज ही हुई है या कल हुई थी। Yesterday, yes. तो आप, हाँ, तो यू हैड 24 आवर्स। और नहीं भी तो इफ यू आर अपेयरिंग, इफ यू नो कि मार्केटिंग के लिए आपका ऐसा डोमेन है, तो यू हैड लाइक काफी मंथ्स टू नो व्हाट मार्केटिंग इज। तो आई स्टिल से गो डीप इनटू मार्केटिंग इफ यू आर अपेयरिंग फॉर मार्केटिंग, नो कि एड्स क्या क्या रन होते हैं, हु इज योर लाइक आइडियल इन मार्केटिंग। आप एप्पल पे चले गए, आपको एप्पल की वैल्यूज नहीं पता, इफ यू डोंट हैव एन आइडियल इन मार्केटिंग, आप बोल दो कि ठीक है, आई लाइक सर्टेन एड्स, मेरे आइडियल नहीं है अभी मार्केटिंग में, इट्स फाइन। से कि ये एड्स देख के मेरे को इंस्पिरेशन मिला कि भाई फेविकॉल का दिस एड वाज समथिंग दैट इंस्पायर्ड मी, ब्लिंकिट का दिस एड वाज समथिंग दैट इंस्पायर्ड मी। बट डोंट लाइक फोर्स कर रहा है सामने वाला ना, तो इसका ये मतलब नहीं यू गिव इन एंड से कि हाँ एप्पल है, एंड देन खत्म वहां पे। आपको पता ही नहीं है, आप इनोवेशन बोल रहे हो, ये बोल रहे हो, आप खुद को कॉन्ट्राडिक्ट करना स्टार्ट कर दे रहे हो। दैट समथिंग दैट विल गो अगेंस्ट यू। इससे एकदम सीधे सीधे इसका रेड फ्लैग आ जाएगा, एंड देन रिजेक्ट करने के लिए बैठे हैं यार, वहां पे सेलेक्ट करने के लिए नहीं बैठे हैं। द पैनल इज देयर टू रिजेक्ट कैंडिडेट्स, जस्ट नीड टू सेलेक्ट 240 फॉर ऑल द प्रोग्राम्स एंड 240 फॉर बीएम, दैट्स इट, राइट। Coming to Arun, yeah, you didn't know about the values, you didn't know about the logos. It's a very very important part of your entire interview, that you have to read about what SPJIMR stands for. Yeah, the values are the most important part of it. आप बता ही नहीं पा रहे हो कि 4 वैल्यू और 5 वैल्यू, you just blanked out कि क्या होती हैं वैल्यूज, राइट। आई लाइक कि द वे यू सेड अबाउट टेल मी अबाउट योरसेल्फ, ठीक है। कैश फ्लोज पे व्हेन यू मेंशन कि फाइनेंस आपका इम्पोर्टेंट मतलब इज द गो टू डोमेन, बट यू नॉट श्योर कि यार कैश फ्लोज ही क्या होती हैं। वहां पे एक वापस से रेड फ्लैग आ जाता है कि यार इनको फाइनेंस के बारे में इतना इंटरेस्ट है, तो फिर क्यों नहीं बता रहा है। बोल सकते हो कि हाँ फाइनेंस इज समथिंग दैट इंस्पायर, आप कह रहे हो कि ना फाइनेंस में बहुत आता है, आपको मॉडलिंग की है, वैल्यूएशन की है। इसने मॉडलिंग की होती है ना, उसको पता होता है यार कैश फ्लो क्या होता है। आपको पता होगा कि यार ऑपरेशनल कैश फ्लो भी एक कोई चीज़ होती है, 3 टाइप के कैश फ्लो होते हैं। तो वो अगर आपको नहीं पता तो दैट इज वन ऑफ थिंग, इन पजल्स में आपने फिर वहाँ पे थोड़ा सा नेगेटिव वाला चीज़ दे दी। With respect to Nikunj, good knowledge on finance. I think Sudhanshu sir would be better able to comment on the finance aspect of it. I find it pretty well. But then you are a bit distracted, and when we confronted you about it, होगा panel में people will confront you. ठीक है, we were being more harsh than actual panel, agreed. But then people will confront you वहाँ पे कि क्या क्यों, why were you not aware, why were you not paying attention, they won't care कि background में चीजें चल रही हैं, लोग आ रहे हैं जा रहे हैं, आप तो अवेयर रह सकते हो ना। बिजनेस सिचुएशंस में दिस कैन हैपन वेरी इजीली। तो इफ आई हैड टू टेक अ कि इफ यू वुड बी सिलेक्टेड और नॉट, आई स्टिल बी ऑन अ मे बी। वेरी गुड ऑन नॉलेज यार, बहुत सीएज आते हैं, सीए प्लस सीएफए लेवल 3 वाले लोग आते हैं मेरे पास, लाइक अ पैनल एसपी जैन में अप्लाई करने के लिए। तो आईड रादर सेलेक्ट देम, नॉलेज तो यार उनके पास भी भर के है ना। मतलब आईड रादर सेलेक्ट द कैंडिडेट हु सीरियस अबाउट थिंग्स दे आर अपियरिंग फॉर। तो आपको उस एस्पेक्ट पे काम करना पड़ेगा निकुंज, ट्राई टू बी मोर अवेयर अबाउट थिंग्स, व्हाट्स गोइंग ऑन, बाकी लोग क्या बोल रहे हैं, क्या चल रहा है। और इफ यू आर कन्फ्रंटेड, बी अ बिट हम्बल, से कि हाँ ठीक है, हो गया, कोई बात नहीं। यू हैव टू टेक इट ऑन द फेस ऑफ इट, थोड़ा सा हम्बल हो जाओगे आप। होगा मतलब इंटरव्यूज में इस टाइप की सिचुएशंस आती हैं, आप अपने आंसर के बारे में आप सोच रहे होगे,
दूसरा कोई कुछ बोलेगा, पैनल पूछेगा यार उसने क्या बोला, आपको नहीं पता होगा, you'll be caught off guard, but you'll have to be humble about it and like circumvent around the situation. When we come to Rupal, I think मतलब for me I think you're someone who would be selected in GI1, ठीक है, because when I like cross questioned you about UPSC, थोड़ा सा part where UPSC and why MBA वाला part में you need to work upon it, वो थोड़ा सा अभी भी confused है वाला part है. But when I really went into the part when like UPSC was concerned, I found the answers pretty convincing. And when I like cross questioned you, like pointed out the contradictions, you were humble enough to maybe accept it. So good work on that, and you were pretty honest about your answers. So that is something I believe the panel would appreciate. One thing is small red flag when Sudhanshu sir was like throwing questions at you. वहां पे आप ऐसे आपने बोला कि I would beg to differ. It's a GI, it's not a GD, right? एंड स्पेशली व्हेन you're टॉकिंग टू अ पैनलिस्ट, आप पैनलिस्ट को आई वुड बेग टू डिफर नहीं बोल सकते. सॉरी सर, आई हैव डिफरेंट ओपिनियंस अबाउट द सेम. like you will be very humble, or better way to communicate that maybe you don't agree to the panelist. ठीक है, panelist might have his or her opinion, but आपका opinion अलग है, fine, but I would beg to differ. ये सब जीडी के लिए रखते हैं अपन, जीआईज के लिए नहीं है, पीआईज के लिए भी नहीं है. तो ये काफी, और वैल्यूज पार्ट पे आई गेस आपने काफी सही आंसर्स दिए थे, तो रियली गुड वर्क ऑन दैट वन. कमिंग टू अथर्व, अथर्व पे आई फाउंड कि यार थोड़ा सा मिसमैच था. यू सेड मार्केटिंग, आपके आंसर में था 16 month ऑफ डिजिटल मार्केटिंग. आई लाइक distinctly remember that. Go back, see the recording. Might have misspelled, बट होता है, हीट ऑफ द मोमेंट आपको याद नहीं रहता आपने बोल दिया है, ठीक है. तो सामने वाला जब बोल रहा है कि यार आपने बोला है, तो आप ऐसे नहीं बोला नहीं नहीं आपने गलत सुना है, मैंने यही बोला है. ये सब चीज़ें गलत हो जाती है. सामने वाला बोलेगा कि यार मुझे ही झूठा बोल रहा है ये, ठीक है. आप क्लैरिफाई कर सकते हो कि हाँ ठीक है, मतलब गलती से शायद बोल दी हो, 4 महीने ही डिजिटल मार्केटिंग में किए हैं, ठीक है. सो नो दैट यू डन सोशल मीडिया मार्केटिंग, मेंशन कि हाँ मैंने सोशल मीडिया मार्केटिंग की है, जिसके कारण मुझे डिजिटल मार्केटिंग या मार्केटिंग इन जनरल में इंटरेस्ट है. यू मेंशन द व्हाट, कि आपने क्या क्या किया, अकाउंट्स बना दिए, ये कर दिया, वो कर दिया, क्या फायदा हुआ उससे, राइट? डिड इट ब्रिंग ट्रैक्शन? नहीं हुआ तो व्हाट वर योर लर्निंग्स? आपने बोला नहीं चलेगा, मतलब डिजिटल मार्केटिंग कंपनी के लिए नहीं चलेगा, बट क्यों नहीं चलेगा? हल्दीराम क्या डिजिटल मार्केटिंग नहीं करता है? करता है, बट थिंक अबाउट कि क्यों नहीं चलेगा, हैव आंसर्स टू इट, हाउ एंड व्हाट स्पेसिफिकली वाई. ये सब मिसिंग था यार. हैव बेसिक्स कवर्ड वहाँ पे. थोड़ी चीजें मुझे बहुत ऐसा ऑफ गार्ड लग रही थी. थिंग्स कैन बी आस्क्ड, सेल्स एंड मार्केटिंग में क्या कनेक्शन है. यू केप्ट ऑन में लाइक सेइंग कि 1.5 years in sales, 16 months in internship digital marketing. जब स्पेसिफिकली डिजिटल मार्केटिंग बोल रहे हो, नो व्हाट डिजिटल मार्केटिंग इज. सामने वाला ऐसे फेंक के मारेगा यार. मतलब किसी ने भी अगर डिजिटल मार्केटिंग का ऐसे पढ़ा है ना, नॉर्मल एक आप खोल दो डिजिटल मार्केटिंग, उसको पता होगा इंप्रेशन क्या होता है, सीपीएम, सीपीआई, सीपीआर, ऐसे मेट्रिक्स पता होंगे. अगर नहीं पता है तो मत बोलो, और अगर बोल रहे हो तो पढ़ लो, 2-3 घंटे लगा के डू रीड अबाउट व्हाट डज इट मीन. उसके बाद से आई थिंक उत्कर्ष का. उत्कर्ष थोड़ा सा यार अपने इसमें कॉन्फिडेंस में यार लैक कर रहे हैं अपन. यू आर अ बिट नर्वस थ्रू आउट. आई डोंट नो व्हाई. बी अ बिट मोर कॉन्फिडेंट, ठीक है. थोड़ा सा ऐसे एक्सूड होना चाहिए, एनर्जी, कॉन्फिडेंस. हो सकता है कि ऐसे दिन भर बैठे हो, 4 घंटे बाद जीआई हो रहा हो आपका. थके थके नहीं होना चाहिए. शुड बी कि यार आउटराइट ऐसे पर्सनैलिटी दिखनी चाहिए वहाँ पे, राइट? व्हेन आस्क्ड अबाउट एसपीजैन एंड एक्सएलआरआई, आप 2 पॉइंट में ही रुक गए, फाइनेंशियल कैपिटल और वैल्यूज. उसके बाद से फिर हम तो घुस गए कि हाँ भैया चलो जैन फैमिली के बारे में बात करेंगे, इसके बारे में करेंगे. यू मेंशन द पॉइंट्स, वी जस्ट टुक द हुक एंड आस्क्ड यू क्वेश्चंस. बी वेरी स्पेसिफिक कि क्या हुक देना है इंटरव्यूअर को सामने. इफ यू आर टॉकिंग अबाउट जैन फैमिली, देन यू हैव टू रीड कि एसपी जैन का बेटा कौन था, उसका बेटा कौन था. अभी विक्रांत जैन है, जो विक्रम जैन, जो भी द पर्सन हुज हेडिंग टाइम्स ऑफ इंडिया, वहां तक की आपको ऐसे पूरी लीनिएज हायरार्की देखनी पड़ेगी. आपको देखना होगा कितना टाइम्स ग्रुप में चीजें आती हैं, कितनी चीजें आती हैं. आपने इकोनॉमिक टाइम्स बोला, वहीं रुक गए. एंड देन व्हेन वी क्वेश्चन ड्रीम कंपनी, बहुत ऐसे कॉन्ट्रडिक्टरी फ्लो चार्ट बन रहा था आपका. सो इफ यू आर वेरी कॉन्फिडेंट कि हाँ जैन फैमिली बेस्ट, तो देखो भाई उनकी कंपनीज देखो, समझो, सीखो. देखो ड्रीम कंपनी बोले तो अलाइन योर आंसर्स, क्या यार इन्हीं की कंपनी बोलूंगा, या फिर कोई ऐसी कंपनी बोलूंगा जो वैल्यूज जहाँ पे अलाइन करे प्रॉपरली.
अभी मोतीलाल ओसवाल के वैल्यूज पूछ लेता, वहां भी आपकी लग जाती है। तो थोड़ा सा वहां पे आपको देखना होगा, कॉन्फिडेंस प्लस नॉलेज अबाउट व्हाट यू आर स्पीकिंग। लास्ट में आई गो टू अभिरूप। अभिरूप, अवेयरनेस थोड़ा सा यार इशू था जब हमने पूछा आईएम इनका है, आपको नहीं पता था, राइट? यू आर अ बिट कंफ्यूज, यू जार्गन्स आप बोल रहे थे नो, मीनिंगफुल इम्पैक्ट, मीनिंगफुल डिसीजंस, व्हाट डज मीनिंगफुल मीन यार? मतलब आई नो फॉर अ फैक्ट कि आई एम नॉट डूइंग एनीथिंग मीनिंगफुल इन माई वर्क एक्सपीरियंस एज ऑफ नाउ, इवन आफ्टर कंप्लीटिंग माई एमबीए, राइट? Correct. मीनिंग क्या होता है? मीनिंगफुल आपको बताना पड़ेगा। वहां पे Yeah. देयर इज नीड ऑफ नोइंग अबाउट जार्गन्स। लोग डेलॉयट के बारे में पूछते हैं कैंपस में। Okay. डेलॉयट यूएसआई में ही प्लेस हुआ था, ठीक है? डेलॉयट में दे आस्क अबाउट वैल्यूज, आपसे वैल्यूज भी पूछता है तो आप वहीं पे रुक जाते हैं, Yeah. राइट? एंड डेलॉयट Sorry. फोकस अ Yeah. लॉट ऑन इक्विटी, इक्वालिटी पे नहीं, इक्विटी पे, उस पे भी आपसे क्वेश्चन पूछता, आप फंस जाते हैं। इफ यू आर मेंशनिंग स्पेसिफिकली ना कि ये है, क्लियर वाटर है, एनालिटिक्स है, पढ़ो यार व्हाट आर द फोर टाइप्स ऑफ एनालिटिक्स, एकदम ही मतलब। I just did a course on data science and data analytics, ठीक है? And I like Yeah. had a lot of courses in MBA, बट मेरे को इतना तो पता था जाने के पहले भी कि चार टाइप की एनालिटिक्स होती है यार। डिस्क्रिप्टिव, डायग्नोस्टिक, प्रिस्क्रिप्टिव और कुछ And प्रेडिक्टिव। predictive. Predictive. चार Yeah. चार तरीके की होती है। इट्स नॉट अ काइंड ऑफ अ बिग डील दैट नहीं पता हो। आईएम में जा रहे हो यार, डेटा पता होना चाहिए, प्रोडक्ट मैनेजमेंट पता होना चाहिए। Okay. वन मोर थिंग फ्रॉम निकुंज, अवेयरनेस के साथ साथ एक और चीज देख लियो भाई कि कितने कोर्सेज हैं, राइट? एकदम ही रेड फ्लैग आ जाता है कोर्सेज में। आप इंफॉर्मेशन मार्केटिंग ये वो नहीं है, तो जैसे लास्ट में बोला कि यार देखो यही तीन याद आ रहे हैं मुझे, फोर्थ आई एम नॉट एबल टू रिकलेक्ट, दैट वुड स्टिल बी फाइन। नॉट गुड, स्टिल बी फाइन, बट सेइंग इंफॉर्मेशन मार्केटिंग, अ ह्यूज रेड फ्लैग कि यार ये बंदा तो लिटरली, उसको सामने वाले इंटरव्यू को लगेगा होगा इसके पास एबीसी कॉल्स, ये बस मॉक इंटरव्यू देने आया है। So you have to be very serious about, if you're sitting in an interview, it's a very formal setting for everybody, right? I don't see anyone wearing a tie, right? Interview में बैठे हो और formal में, शादी में नहीं जा रहे हो। People who are wearing blazers have a pin on their blazers. पार्टी नहीं हो रही है यार, दोस्त के बर्थडे पार्टी या फिर एक ऐसा कंपनी की अच्छी के गैदरिंग हो गई चले गए। इंटरव्यू है यार, यू हैव टू बी वेरी फॉर्मल अबाउट इट। समवन आस्क कि बियर्ड रखना चाहिए कि नहीं रखना चाहिए, वाई इज इट इवन अ क्वेश्चन? आई एम नॉट एबल टू गेट इट। लाइक शेव करो, अभी से शेव करो यार, एक महीने के लिए रेडी हो जाओ। बी वेरी सीरियस अबाउट वॉट यू आर गेटिंग इन टू, यू आर गेटिंग इन टू एमबीए, इट्स अ वेरी सीरियस बिजनेस। सो या दैट्स माई इनपुट फॉर एवरी वन। Yeah, so I think very well summarized by Ayush. I will just, sort of first, summarize the general inputs for across the, for everybody. So one pointer is very loose conversations. Okay, so I'm speaking first and then I'm thinking as to what I'm saying. For example, let's say, I'm saying that this is my dream company. Then I'm saying that no, 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 it's not my dream company. I did not mention that it is my dream company. Okay, I'm saying that I like it because of the values. I do not know the values, correct? And multiple people did that. It's not just one person in the panel, but multiple people doing it, correct? Another element is beating around the bush and not being articulate. Okay, for example, let's say there was a question on how do you calculate beta. A simple question. कोवेरियंस निकालेंगे, बेसिकली स्टॉक का मार्केट के साथ में या स्टॉक का इंडेक्स के साथ में कोवेरियंस निकालेंगे और मार्केट का वेरियंस लेंगे और डिवाइड कर देंगे, सिंपल हो गया बीटा कैलकुलेशन। इतना सिंपल समझाना है, ठीक है? मैं समझा रहा हूँ भाई इनहेरेंट रिस्क है, उसमें इंटरेस्ट रेट है, नहीं करना है, सिंपल रखो, कीप इट एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली क्लीन एंड क्लियर। Okay, if you can convey it in 2 sentences, do not waste 5 sentences. Simple. Okay. I also observed casual behavior. Eating and drinking is going on, correct? कि हम खाना खा रहे हैं, चाय पी रहे हैं, कोल्ड ड्रिंक पी रहे हैं, कॉफी पी रहे हैं। Do not give reasons to reject you. These are very clear red flags, करेक्ट? कि मैं खाना खाने चला गया, मैं खाना खा रहा हूँ, ठीक है, पैनल बैठा हुआ है, ठीक है।
I'm sorry, but I had a internet issue. That's why I was not. My video was not on. Sorry, एक sir. एक मुहावरा है, चोर की दाढ़ी में तिनका, सुना होगा तुमने। Yes, sir. तो मैं तो तुम्हें बोल ही नहीं रहा था। नहीं sir, मैं I thought the because अभी I was तुम not खाना wearing खाने my head. गया था, मुझे पता है। ठीक है, No, तुमने खुद बताया। not no sir, definitely not. Just kidding, just kidding. I'm just now having some. Just taking us a few seconds here. During my SPJIMR interview, 3 years ago, this happened. So मैं पटना में था अपने घर पे, और वर्चुअल इंटरव्यू था। और पीछे से उस टाइम पे लिटरली ऐसा था कि देयर वाज दिस गार्बेज कलेक्शन गोइंग ऑन, और उस टाइम गाना बढ़िया एकदम ऐसे बज रहा था, गाड़ी वाला आया, घर से कचरा उठा, ठीक है। और मेरा घर रूम एकदम बालकनी के पास था, और बहुत ही जोर से बज रहा था। सो आई लिटरली सेट अपने लाइक आंसर के बीच में, सर आई एम लाइक जस्ट म्यूटिंग फॉर अ फ्यू सेकंड्स, लाइक लेट द व्हीकल पास। सो द पैनल वाज कंसिडरेट इनफ, उन्होंने बोला यार हमारा डेली का है, सबके साथ होता है, कोई बात नहीं, तू बोल, बजने दे पीछे, वी विल अकोमोडेट। तो देल बी इश्यूज होते रहते हैं घर पे, अगर बैठे हो तो होंगे यार, उनके भी घर परिवार वाले हैं, एवरीवन लिव्स इन अ सोसाइटी। जस्ट बी वेरी ओपन अबाउट इट। ये सब मतलब ऐसे कि वीडियो ऑफ कर दिया, या फिर थोड़ा सा डिस्ट्रैक्ट हो गए, ये सब नहीं चलता। यू हैव टू बी वेरी अवेयर। वहाँ पे अगर मैं वो नहीं बोलता और शायद ऐसे ऑफ कर देता, सीधे म्यूट कर देता आंसर के बीच में, इट कुड हैव गॉन अगेंस्ट मी। बट थोड़ा सा अवेयर रहो, और उनको ऐसे बताओ कि ठीक है, अगर मैंने ऑफ किया है तो क्यों किया है, जस्ट ऐसे बता दो। देयर इज अ चैट ऑप्शन, वहाँ पे भी बता सकते हो। देयर लॉट ऑफ अवेन्यूज अवेलेबल। करेक्ट, एंड प्राइमरली इट्स जो जो कैजुअल एटीट्यूड होता है ना, वो ये एक्चुअली इट्स नॉट वन और टू थिंग्स, इट स्टार्ट्स रिफ्लेक्टिंग इनटू एवरीथिंग। Okay, so if there is any small bit, you have to be very careful, right? And so that is something which should be very careful of. Another important element is the attention span, because while we are all about speaking something, the listening ability is very limited. Okay, people are not listening to each other. किसी को भी पूछ लो कि उसने क्या बोला, कौन कितने लोग आए वाले हैं, इससे क्या क्वेश्चन पूछा गया था, आइडिया ही नहीं। वो जस्ट वेट कर रहा है कि मेरे को जब मौका मिलेगा तो मैं कुछ भी बोलूंगा, मैं क्या बोलने वाला हूँ। ठीक है, लिसनिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। ग्रुप इंटरव्यू का एक बहुत इंपॉर्टेंट एलिमेंट होता है लिसनिंग। इफ यू आर नॉट लिसनिंग देन यू आर नॉट रेडी। ओके, सो दैट इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट एलिमेंट। I also found very, non-compelling or very not so convincing answers. Well, why do you want to join SPJIMR? Because of the values. Okay? It does not work that way. Honestly speaking, तुझे भी पता है, मुझे भी पता है, तेरे पास एक 25 lakhs का ऑफर होगा, मेरे पास 30 lakhs का ऑफर होगा, तुम वैल्यूज के बेसिस पे नहीं डिसाइड करेगा। ठीक है, तो यू आर नॉट किडिंग with people in the panel are very smart। ठीक है, तेरे पास 25 लाख का ऑफर होगा, तुम्हारे पास 30 लाख का ऑफर होगा, तुम वैल्यूज के बेसिस पे नहीं डिसाइड करोगे। सिंपल है। ठीक है, करेक्ट। सो थिंक अबाउट व्हाट यू आर सेइंग, डू नॉट जस्ट फोर्स फिट आंसर्स कि मैं मैं वैल्यूज के साथ अलाइन करता हूँ, मैं XLRI के वैल्यूज के साथ नहीं अलाइन करता, इसीलिए आई विल वांट टू। डू नॉट डू दैट। Okay, so that I also found a lot of contradictions, people contradicting themselves. Okay, multiple cases of contradictions that I had noted, and do not do that. Okay, that's a big red flag. Okay, contradictions, people saying that I was active during my undergrad, but they've not studied only during the undergrad, saying that okay, it's my dream company, but no, it's not my dream company. Okay, so I think some of these elements have to be taken care of. I think one important red flag across the board was understanding of SPJIMR. तुम्हारा डैशबोर्ड पे कॉलेज स्पेसिफिक सेशंस के अंदर एक सेशन है, हाउ टू क्रैक SPJIMR, देखो जाके उसको। ठीक है, GI करने से पहले थोड़ा सा एफर्ट मारो, थोड़ा मेहनत करो भाई। ठीक है, जाके देखो, अपना नोट्स बनाओ, और मेक श्योर दैट यू अंडरस्टैंड। आप किसी भी इंस्टीट्यूशन के लिए जा रहे हो तो उस इंस्टीट्यूशन के बारे में जानना तो जरूरी है ना। करेक्ट, सो बी वेरी केयरफुल। ओके, सो दैट इज समथिंग यू शुड डू योर रिसर्च। पीपल गो टू जॉब इंटरव्यूज, दे डू नॉट नो अबाउट द जॉब डिस्क्रिप्शन ओनली। क्योंकि जॉब इंटरव्यू में पहुंच गया, उसको पता ही नहीं कि क्या रोल है।
90% ऑफ द कैंडिडेट्स वैसे ही तो रिजेक्ट होते हैं, उनको पता ही नहीं रहता कंपनी क्या करती है, जेडी क्या है। हाँ, कंपनी के बारे में पढ़ के नहीं गया, जॉब डिस्क्रिप्शन पढ़ के नहीं गया। मैक्सिमम लोग समर इंटर्नशिप्स में इस वजह से रिजेक्ट होते हैं, और फाइनल प्लेसमेंट्स में भी इसी वजह से रिजेक्ट होते हैं। उनको पता ही नहीं कि कंपनी का एक्सपेक्टेशन क्या है। आप कितना रिसर्च कर सकते हो इज समथिंग विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। जेन्युइनली अगर आप इंटरेस्टेड हो, आप 25-30 लाख स्पेंड कर रहे हो भाई into your MBA. It is your money. The bank is only funding it. It's going to take double of that money from you. तो 25 का 50 लेगा तुमसे, ये बात समझ लो पहले से। ठीक है, तो इट्स योर मनी, इट्स योर। जब तुम पे बैक करना चालू करोगे ना, तो तुमको समझ में आएगा। ठीक है, तो पता करो ना भाई कि अबाउट द ऑर्गेनाइजेशन, द इंस्टीट्यूशन यू गेटिंग इनटू। ठीक है, तुम कितने क्वेश्चंस पूछते हो छोटी छोटी चीज खरीदने के लिए, राइट? सो आई थिंक दैट पार्ट इज समथिंग वी हैव टू डू। अंडरपिनिंग or criticizing your undergraduation or your work experience is a big no-no. Okay, it's a big red flag. Okay, think about a situation कि कोई आपके पास आ रहा है और किसी के बारे में आपको बता रहा है कि यार ये तो बहुत ही गंदा इंसान है, ये है, वो है, ऐसा है, गलत बातें कर रहा है। आपका इंप्रेशन उस इंसान के लिए क्या होगा कि यार बड़ा ही नेगेटिव आदमी है। करेक्ट? आपका इंप्रेशन उस इंसान के लिए भी खराब होगा, इररेस्पेक्टिव ऑफ द अदर थर्ड पर्सन, वो कैसा भी है। पर जो आपको बता रहा है ये बातें कि ये ऐसा है, वैसा है, गंदी बातें बोल रहा है, तो लगेगा कि क्या नेगेटिव आदमी है यार। ठीक है, तो वो नहीं करना है, दैट्स अ बिग नो नो। ठीक है, बहुत सारे ये जीआई इसलिए इंपॉर्टेंट था बिकॉज इसमें बहुत सारी गलतियां हुई और इससे हमें बहुत कुछ सीखने मिला। ठीक है, सो आई मस्ट थैंक यू ऑल फॉर मेकिंग दीज मिस्टेक्स so that we could record it and we can transmit it to many other people who will be taking GIs. Correct? So there is a positive in the negative also. Okay, so you should also start thinking of positives in the negative also. Correct? Confidence bit is also missing. Confidence wala part bhi missing hai. I found a lot of people just saying it, not sure. तो थोड़ा सा confidently बोलो ना। ठीक है, इट्स ओके, वैसे भी गलतियां कर रहे हो तो थोड़ा कॉन्फिडेंटली तो करो कम से कम। करेक्ट? सो आई थिंक दोज आर सम ऑफ द जनरल इनपुट्स। नाउ लेट मी कम स्पेसिफिकली। इफ इट वर अ रियल GI, आई वुड से ओनली रूपल वुड गेट सिलेक्टेड, nobody else is going to get selected. Okay, Exactly. so in a general setup, that's how it is going to happen. Correct? So if I come to everybody specifically, Rishabh, to begin with, I found you to be an okay candidate, but no institution is looking for okay candidates. Okay, so you have to stand out, talk about specific things about your profile that makes you stand out. Okay, why do you believe that you are suited for the role, for the institution, for IM role that you are being offered, right? So that is what is it. क्रिकेट तुम खुद से सामने से बोल रहा है, फिर तुमको वेट भी नहीं पता बॉल का। करेक्ट? तो ये सब नहीं करो। जो भी बोल रहे हो उसको थोड़ा क्लियरली। सृष्टि, आई थिंक मार्केटिंग का कल सेशन हुआ था, डिड यू अटेंड? यू आर ऑन म्यूट। Yeah, I attended half. Why did you attend half? Because I'm a morning person and I was like going to look at You are after today. either a morning person or you are goal oriented. You cannot be both. Okay, if you have an assignment inside the B school when you have to submit something at 3 o'clock in the night, will you do it or not? Shrishti, But I'm not. yeah, obviously I will do it. Why? You will not remain a morning person. Yeah, but while the session, I thought that I will gain more if I do it in the day hours. That's why only. But how will you cross question? How will you answer, get questions, the doubts that you will have? The panel is in front of you. Ask your questions.
So many people asked their questions. There were doubt solving that happened. Shrishti, we need to get a little more serious, okay? And very honestly, it's in your own good. ओके तो जब नहीं होता है ना तो कैसा लगता है वो इमेजिन करने से नहीं पता चलेगा. ओके उस दिन लगता है कि यार ये सब लोग हमारे साथ बैठे हुए थे, ये भी निकल गया, वो भी निकल गया, वो भी निकल गया, मेरा नहीं हुआ. करेक्ट. थोड़ा सा सीरियस चाहिए, थोड़ा सा. ठीक है, बिना कुछ किए ही जय जयकार नहीं होती. सुना होगा तुमने. तो स्टार्ट एक्टिंग इन द राइट डायरेक्शन. राइट. ओके. अथर, मार्केटिंग का अगेन, यू आर अगेन फ्रॉम मार्केटिंग डोमेन. तेरा मार्केटिंग का अंडरस्टैंडिंग भी गया हुआ है. ठीक है, सो यू नीड टू स्टडी मोर. ठीक है, बज वर्ड्स अगर यूज़ कर रहे हो तो बी वेरी केयरफुल. डिजिटल मार्केटिंग बोल दिया, सोशल मीडिया मार्केटिंग बोल दिया. ठीक है, ऐसे नहीं करा जाता है. मतलब ऐसे बोलेगा तो तुमको पकड़ेगा. बी केयरफुल. So actually, I have a doubt about Yeah, it. I'll come to the Basically, doubts. I'll come to the yes, doubts. sorry Yeah, to interrupt. yeah. So that is that. Did you attend the session that was done yesterday? Yes, sir. Did you attend it completely? Yes, I have attended it completely. Okay. Okay. ठीक है, तो बाकी के भी सेशंस अटेंड करो. देयर विल बी अ सीरीज ऑफ सेशंस अगेन, in terms of marketing there will be follow up sessions also. So do attend those also and start reading a little bit more. मेरे आंसर्स जितने, आई एम श्योर सब लोगों ने अपने HR आंसर ड्राफ्ट कर लिए होंगे, रिव्यू कर लिया होगा. ठीक है, उत्कर्ष तेरा नहीं हुआ है तो तुम भी जल्दी से कर लो. ठीक है, तो HR आंसर्स तुमने रिव्यू करके फ्रीज कर लिया. अब इट इज़ टाइम टू गो बैक टू योर आंसर्स एंड चेक एवरी बिट ऑफ इट. अच्छा, मैंने यहाँ पे एक वर्ड लिखा है, ये वर्ड के ऊपर क्या क्या क्वेश्चन बन सकता है, ये वाले वर्ड के ऊपर. इतना थरो होना पड़ेगा इफ़ यू रियली वांट टू स्टैंड आउट. एग्जैक्टली. और पता नहीं होता है कब कहाँ पे जाएगा. आई स्टिल वेरी विविडली रिमेम्बर, आई एम लखनऊ में मेरा पहला इंट्रोडक्शन में द फर्स्ट लाइन वाज फिनटेक एनालिस्ट. बंदे ने मतलब पैनल ने फिनटेक पकड़ के क्वेश्चंस फेंकने शुरू कर दिया, रोक दिया. मेरा पहले सेंटेंस पे ही रोक दिया था मेरा, टेल मी अबाउट योरसेल्फ विद इन द फर्स्ट 15 सेकंड्स. स्टार्टेड क्रॉस क्वेश्चनिंग, फिनटेक, इंश्योरेंस, रैंडम स्टफ. और उसके बाद से दे डिड नॉट स्टॉप. 8.5 9 मिनट्स का इंटरव्यू था, सिर्फ फिनटेक के बारे में बात हुई है, एंड टू एंड. कुछ भी एक वर्ड होता है ना, आपको 3 4 घंटे लगा के यार टाइम स्पेंड करना पड़ेगा वहां पे. कि लिख दिया है तो लिख दिया है, अब सोचो. SPJIMR का फॉर्म भर दिया है, लोगों ने लिखा हुआ है कि भाई मैं अपने भाई से ज्यादा रिलेट करता हूँ. हैव एन आंसर टू इट. क्यों रिलेट करते हो? मम्मी से क्यों नहीं, पापा से क्यों नहीं? स्टफ लाइक दैट. बिजनेस से, कमर्शियल से, सबसे हटके बहुत 10 क्वेश्चन पूछता है ना SPJIMR. दे आर वेरी स्पेसिफिक अबाउट इट. मैंने लिख दिया था भाई कि आई लाइक डांसिंग. मैं कसम से, मतलब रैंडम, मतलब मैं गेट बंद करके ऐसे जुम्बा करने वाला आदमी हूँ. मेरे को पढ़ना पड़ा कि भाई 3 4 घंटे लाके मैं देखा कि व्हाट आर द फॉर्म्स ऑफ डांसिंग. मैं क्यों नहीं, मतलब ऐसा फॉर्म परस्यू किया, मैं क्यों ऐसा रैंडम जुम्बा उम्बा कर के देखता हूँ, करता हूँ. आई हैड टू लाइक लिटरली गो टू एवरी डैम पॉइंट. I had also written I like red and blue both colors. Why do I like it? लिखने टाइम तो यार नवंबर में कैट था, कैट के पहले सबने कुछ ना कुछ लिख दिया होगा. अग्रीड, एंड आई कैन रिलेट टू इट. बट अब लिख दिया तो सोचो जाके क्यों, क्यों लिखा. बहुत बहुत लाइक डीप में घुसना पड़ेगा यार, क्रैक करना है. 2 3 हज़ार लोग फॉर्म भरते हैं SPJIMR का मिनिमम. आपको अगर 240 कैंडिडेट्स में होना है, यू हैव टू लिटरली स्टैंड आउट. हर चीज का आंसर होना चाहिए आपके पास. व्हाट, वाई, हाउ, व्हेन, वेयर. खुद इफ यू आर नॉट एबल टू आंसर दिस 4H and 1 लाइक 4W 1H, नहीं हो पाएगा. घुसो उसमें, देखो, खुद को आंसर करो. बी सेल्फ क्रिटिकल फॉर द नेक्स्ट 20 days, तभी हो पाएगा. करेक्ट. अरुण, अगेन ऑन फाइनेंस यू विल हैव टू स्टडी माय फ्रेंड. फाइनेंस पढ़ना चालू करो. फाइनेंस का एक बेसिक सेशन हमने किया है, वी विल डू अ फ्यू मोर सेशंस आल्सो. ओके, सो स्टार्ट ऑल्सो रिसर्चिंग. ठीक है, इन्वेस्टोपीडिया देखना आप चालू करो. इन्वेस्टोपीडिया इज़ अ गुड वेबसाइट दैट यू कैन फॉलो and start reading from there. And beyond that, start attending the sessions also. We will expedite and do a few more sessions. So between this week and the next week, we'll have a lot of domain sessions, primarily aiming, the SPJIMR interviews. Okay, so do make sure that you are, you are in the game, because honestly speaking,
इतना अंडरस्टैंडिंग पे फंक्शनल राउंड क्लियर नहीं होगा। ओके, सो थोड़ा सा फंक्शनल राउंड के पॉइंट ऑफ व्यू से अपने को फाइट ज़्यादा मारना पड़ेगा। रूपल अगेन थोड़ा सा बिहेवियरल क्वेश्चंस में प्रॉब्लम है। अंडरस्टैंडिंग इज गुड, योर यूपीएससी वाला पार्ट इज़ वेरी गुड, जो तुमने करा है अच्छा किया है, यू डन इट वेल, बट अगेन दी HR bit is a little bit hazy, you know, as far as the UPSC and the transition is concerned, तो उसके ऊपर थोड़ा सा काम अपने को करना पड़ेगा। बट ओवरऑल आई लाइक योर कैंडिडेचर in this GI. Coming back to निकुंज better than the last one. You know, जो last one था GI उससे better यहाँ पे perform किया in terms of functional learning, but I'd again recommend be a little articulate. Okay, if you know something, you should be able to express it in minimum number of words possible. Okay, the panel should not repeat them again and again and again and again. One question सिंपल बताओ भाई, बेसिक तरीके से बताओ। ओके, कोई इंसान अगर कोई चीज़ बेसिक बता सकता है तभी वो इंसान एक्चुअली उस चीज़ को अच्छे से जानता है। व्हेन यू विल टॉक टू अ CEO, वो तुमको इतना टाइम ही नहीं देगा जितना टाइम में तुम बता रहे हो। बोलेगा कि मेरे को 10 सेकंड में बता, ठीक है। तो दैट इज हाउ यू हैव टू गेट इट। सो दैट इज नंबर वन। And beyond that, you were also not listening to others. Could be, you know, several reasons, could be various reasons. If it were technical in nature, then it is absolutely okay, but you be careful about it. Okay, Nikunj, will come to the questions also, so just, you know, sort of take the feedbacks and then, you know, come to the questions. Okay, Utkarsh, I think the feedbacks have already been given by Harsh, so I will skip it. But you know the HR answers are very hazy. You have to really work on your HR answers. तेरा HR answers एकदम गया हुआ है. It's absolutely एकदम गड़बड़ है, ठीक है। तो अपना HR answers, HR Q&A सेशन देखो, HR आंसर बनाओ, HR रिव्यू करो, HR आंसर को पहले थोड़ा शेप एंड फॉर्म में आओ, तेरा आंसर एकदम ऑफ है, ठीक है। सो दैट यू हैव टू डू। Yeah, anybody left? Avirup again, I'd say the same thing. I think थोड़ा सा get into the detail of your work experience, get into the detail of what have you done. Deloitte के बारे में पता करो। जितने भी लोग वर्क एक्सपीरियंस वाले हैं उनको 3 चीज़ों के बारे में पता होना चाहिए। एक, कि वो क्या करते थे इन एंड आउट। दूसरा, उनकी कंपनी क्या करती है इन एंड आउट, कितना बिजनेस है, कितना प्रॉफिट है, कौन CEO है, ठीक है, हु इज़ हु ऑफ योर कंपनी, वो सब कुछ। एंड तीसरा, इंडस्ट्री क्या करती है, इंडस्ट्री कैसा है, कैसा चल रहा है, इंडस्ट्री ट्रेंड्स क्या है, इंडस्ट्री के लीवर्स क्या हैं, ग्रोथ लीवर्स क्या हैं, वो सब समझना पड़ेगा, ठीक है। तो अगर वर्केक्स है तो ये 3 चीज़ें आपको पता होनी चाहिए इफ़ यू आर रियली वांटिंग टू स्टैंड आउट। ओके, या निकुंज, गो अहेड। Firstly, thank you so much for the feedback. I just wanted to convey a few aspects that I probably felt could have been done better. From my side, of course, I take great pride in being attentive, and it may not be believable, but I was noting down what everybody else was speaking. Maybe due to uncontrollable factors, I wasn't able to pay attention to what Shrishti had to say, and it came across as someone who is not being humble. I mean, it can be agreeable, but at least on a personal level, I do not think that it is true. But yes, I would definitely like to improve on it. So Nikunj, And right now the way you are talking, no, and when you are talking in a GI is very different. अभी ह्यूमिलिटी है, ठीक है, अभी एक लेवल ऑफ कंफर्ट है, यू नो, तुम्हारे फेशियल एक्सप्रेशंस भी रिलैक्स्ड हैं, तो रिलैक्स रहो ना, स्ट्रेस में क्यों हो? I was just caught off guard because I think I was paying attention to what even Shashti was saying, but maybe I missed a point or two, which was agreeable. ठीक है, मतलब it happens in an interview. And second of all, sir, I just wanted clarity on one aspect that you talked about me describing beta. I mean, at the very first answer that I gave to you, I clearly answered the way you answered, that keep it simple, covariance divided by variance. I may be wrong again, but So it was that is what I'm telling you, Nikunj. I also asked the other people कि okay. निकुंज का डेफिनेशन सुन के क्या तुम कैलकुलेट कर लोगे? सो निकुंज, गो बैक टू दिस, यू विल हैव द सेशन रिकॉर्डिंग, Right. एक बार इसको देख लेना, तो ये Okay. समझ में आएगा कि यू विल जस्ट मूविंग अराउंड इट।
But apologies if it came across that way. I'll definitely improve on it. No, I truly believe, knowing the way you answered it, obviously you know it, Okay. correct? But the way you have to articulate is Okay. something I will which work is on it. missing. And Yes, next interview, I'll clear it. yes, I'm pretty hopeful about that. I'm sure. Thank you. But again, as I mentioned, I found it better than the last one for sure. Thank you so much for the feedback. Yes, yes, yes. Rishabh, go ahead. Uh, Hello. So, sir, first question I had regarding, let me ask you only. So, regarding, sir, you mentioned that I was an okay candidate. So, after my interview got over, I was analyzing that what all I did better. So, number one was obviously the pretty observable was cricket, which I know a lot, like, but numbers मेरे को याद नहीं रहते थे, so which I will work on. But sir, when you said one more thing is uh, intro में थोड़ा सा अच्छा कर सकते हैं, like stand out basically, that is the word you used. So like how can you, like how, where can I improve, like in parameters which you saw, like if you could be a bit more specific, because मैंने अपना talk to me about yourself में थोड़ा सा मैंने उसको हाईलाइट किया कि जो जो स्टैंड आउट अचीवमेंट्स है, जो जो हाईलाइट्स है, कॉलेज एक्सपीरियंस हो गया, क्या कहते हैं, वर्क एक्स हो गया, सो वो सबको मैंने हाईलाइट किया है, बट इन व्हाट वेज कैन आई स्टैंड आउट बेटर? So I think Rishabh, देखो, when you start, okay, you start your preparation, you start drafting your HR answers, you start with a structure, correct? You start with a structure, and then the structure starts driving you. तो तुम इतना, मतलब तुम्हारा आंसर इतना मैकेनिकल लगेगा सुनने में कि सामने वाले को मज़ा नहीं आएगा. तो जो आंसर्स हैं वो आंसर्स बताते हुए द वॉइस मॉड्यूलेशन पार्ट, ठीक है, हाउ डू आई टेक पॉजेस, वेयर डू आई एक्सप्रेस और emphasize a little bit more is also very important. So the delivery. तो एक स्टोरी भी बननी चाहिए आई थिंक यहाँ पे, जहाँ पे आई थिंक एक वो था ना, आपने मतलब इट वाज लाइक कि देखो मैंने ये किया, इसके हाइलाइट्स से था, आई थिंक स्पेसिफिकली यू मेंशन वर्कएक्स में मैंने ये किया, इसकी हाइलाइट्स, द हाइलाइट्स वाज दैट आई डिड, द हाइलाइट्स वाज दैट आई डिड. इट शुड बी लाइक स्टोरी टेलिंग यार, कि अगर मैं बोलूँ कि टॉकिंग अबाउट माय एक्सपीरियंस आफ्टर यूजी, आई गॉट एन अपॉर्चुनिटी टू डू अ पायलट प्रोजेक्ट वे आई लर्न दिस एंड दिस, एंड इससे मेरे को बहुत अच्छी चीज सीखने को मिली. हाईलाइट ही बता रहा हूँ मैं, बट हाईलाइट बोल के नहीं बता रहा हूँ. टेल देम द हाईलाइट, डोंट से कि ये हाईलाइट है, द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ये है. ऐसे ऐसे स्पेसिफिकली बोलोगे तो बहुत ही यार सामने वाला लगेगा, हाँ मतलब इसने तो मतलब मेजर चीजें वही जो सीवी में लिखते हैं वही बोल दी हैं बस. टेल मी व्हाट शुड बी मोर ऑफ अ स्टोरी टेलिंग पार्ट, की 60 सेकेंड्स, 30 सेकेंड्स, 90 सेकेंड्स की वर्जन आप बनाओ. सी की लाइफ स्टोरी कवर हो रही है, मेजर एस्पेक्ट्स कवर हो रहे हैं, बट डोंट से कि मेजर एस्पेक्ट मेरे वर्क का था कि मैं पेमेंट्स में काम किया था. ठीक, तो पेमेंट्स में किया था, बट फिर मुझे क्यों पूछना पड़ा कि इस किस मार्केट में किया था. आपको बताना पड़ेगा ना कि पेमेंट्स इन कोलंबियन मार्केट. जनरली मैं बचपन से यार इंडियन मार्केट ही दिखता था मुझे, तो कोलंबियन मार्केट वाज अ चैलेंज फॉर मी, उसको बाय टुक इट लाइक हेड्स ऑन. वहाँ पे चीज़ें समझी, देखी, इट वाज अ न्यू मार्केट. मतलब व्हाट यू डिड हल्का किसी भी पार्ट पे, कॉलेज पे, वर्क पे उठा के टेल मी व्हाट योरसेल्फ पे, थोड़ा तो इम्पैक्ट क्रिएट करना होगा ना, कि यार ये मैंने किया और यार मैंने कुछ गजब किया. इस तरह से सामने वाले को दिखाना होगा, तो उसको लगेगा हाँ यार कोलंबियन मार्केट क्रैक करना, वहाँ का पेमेंट्स मार्केट देखना, समझना, उस पर काम करना, इट्स नॉट एन ईजी थिंग फॉर समवन हु स्टेज इन इंडिया एंड वर्क्स फ्रॉम इंडिया, टू अंडरस्टैंड द कल्चरल डिफरेंसेस, टेक्निकल एस्पेक्ट, टेक स्टैक एंड एवरीथिंग. तो उस एस्पेक्ट को आप प्रमोट कर सकते हो, बोल सकते हो, इट्स अ वेरी गुड लाइक वेपन इन योर आर्मर, आप उसको यूज करो. राइट, Yeah, स्टोरी टेलिंग बिल्ड करो आप. करेक्ट. और आई थिंक ना, जब तुम किसी भी चीज़ में थोड़ा एक्सपीरियंशियल पार्ट डालते हो ना, तो सामने वाले को मज़ा आता है सुनने में. करेक्ट, कि एक्सपीरियंशियल कुछ उसको बनाया, मतलब कुछ एक्सपीरियंसेस बताया, कुछ चैलेंजेस बताए. ठीक है, मैं कैसे रिलेट करूँगा, तुमने क्या किया उसके साथ में. ठीक है, गॉट तो इट. उसको थोड़ा सा रिलेटेबल बनाओ. द ह्यूमन टच बहुत इंपॉर्टेंट होता है किसी भी चीज़ में. ठीक है सर, समझ गया. हाँ, ये ओके, पॉइंट नोटेड सर. इसके अलावा एनीथिंग एल्स व्हिच आई कुड लाइक I think व्हाट? I think the same thing. Make it more experiential, make it more engaging, and again, make sure that you are modulating the voice also. कहीं पे मतलब एकदम एक ही टोन में, एक ही स्वर में सब कुछ नहीं डिलीवर होता है. करेक्ट, तो मतलब क्योंकि उस केस में ऐसा लगता है कि याद करके बोल रहा है. ओके. Correct. So that is something which
truly differentiates you and AI, right? एंड ऑल्सो वन ऑफ द थिंग्स कि मतलब अगर मैंने चार चीज़ें पहले पूछ ली हैं, अब फिर वही चार चीज़ें बताओगे, राइट? कि क्या कोर्सेज किए, क्या काम किया, पेमेंट में काम किया, डेटा एनालिसिस किया। अब आपको इन सब चीज़ों के बारे में यू हैव टू बी रेडी, दैट्स वाई दैट टेल मी अबाउट योरसेल्फ शुड बी स्टोरी टेलिंग। कि ठीक है, इफ आई हैव ऑलरेडी टोल्ड अबाउट पेमेंट्स वाला पार्ट, मैंने 5 मिनट बात कर लिए सामने वाले से, तो अब मैं पेमेंट्स पे नहीं जाऊंगा। मे बी आई टॉक अबाउट यूजी, आई टॉक अबाउट दिस, आई लाइक ब्रीफली टच अपॉन द पेमेंट्स पार्ट, कम बैक एंड लाइक जस्ट कंक्लूड द टेल मी अबाउट योरसेल्फ। वापस से वो 3 मिनट बोलना, या वो ना बीच में रोक देगा बंदा, ठीक है हाँ ये तो पता है, चलो अब कुछ और बताओ। तो वो आंसर आपका वुड नॉट बी एज इफेक्टिव एज यू हैड वांटेड इट टू बी। तो उस चीज पे भी एफ फॉर एवरीवन कि आपको रेडी रहना पड़ेगा। टेल मी अबाउट योरसेल्फ इज नॉट समथिंग दैट एवरीवन गेट्स एन अपॉर्चुनिटी टू स्टार्ट द इंटरव्यू विथ। मोस्ट ऑफ अस डू 90% में भी, बट वो 10% केसेस, इफ यू हैव मल्टीपल इंटरव्यूज, वो आएंगे। वो बोलेंगे अच्छा ठीक है तुम्हें फाइनेंस लेना ना, चलो बताओ क्यों फाइनेंस लेना, इससे इंटरव्यू ही स्टार्ट होगा आपको आपका। तो अब टेल मी अबाउट योरसेल्फ को ही कैसे आप मोल्ड करोगे, कि आप बताओगे अपने बारे में, क्यों फाइनेंस लेना है वो बताओगे। आप स्ट्रेट अवे बोलोगे हाँ मैंने वर्क एक से यहाँ किया है, ऐसा किया है, एकदम ही नहीं होता वो, एब्रप्ट नहीं लगना चाहिए। यू हैव टू प्रिपेयर फॉर ऑल द परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन दैट कैन कम इन एन इंटरव्यू। So try to like put yourself in those things, like watch the recordings, time and again, अपनी देखो, दूसरों की देखो, दूसरों की गलतियों से सीखो, अपनी गलतियों से सीखो, एंड ट्राई टू फ्रेम दोस थिंग्स। कि पहले ही मुझसे पूछ लिया कि एसपीजेएमआर के लोगो का क्या मतलब है, फिर मुझे पूछा वाई एसपीजेएमआर, तो मैं सिर्फ वो लोगो और वैल्यूज ही बताऊंगा तो नहीं चलेगा काम। यू हैव टू गेट मोर इन डेप्थ। आप टॉक अबाउट द प्लेसमेंट्स, टॉक अबाउट द अपॉर्चुनिटीज, अल्मा मैटर। आप बोलोगे यार लाइक पीयर लर्निंग बहुत अच्छी होती है, पूछ लेंगे कि बैच का यार कॉम्पोजिशन क्या था, कितने सीए होते हैं बैच में, पता ही नहीं है लोगों को। तो वैसे नहीं होगा। अगर आप बोल रहे हो बैच की लर्निंग, देखो प्लेसमेंट रिपोर्ट्स देखो, उसमें सब चीज़ मिल जाएगी आपको। वेबसाइट देखो सब लोग जाके, सब चीज़ मिल जाएगी आपको। यू हैव टू बी वेरी रेडी अबाउट ऑल द permutation combinations and the variables that can come in the interview. So that's for all the candidates, not specifically Rishabh. गॉट इट, गॉट इट। एंड आयुष सर, लाइक आप ही बोल रहे थे तो क्योंकि एक आपके लिए भी एक लाइक डाउट था मेरा वाला। यू मेंशन दैट वट एवर सिंस आई एम ऑप्टिंग फॉर आई एम वट एवर यू आर सेइंग बैक विद डेटा, एंड स्पेसिफिकली आपने वो गर्ल्स एजुकेशन वाला पार्ट यू हाईलाइटेड। सो सर, लाइक इन दिस सिचुएशन डेटा क्या दूँ? लाइक मेरे पास डेटा तो ऐसा कुछ नहीं है। इट इज लाइक कोई। पर्सनल एक्सपीरियंस दे देना भाई, मतलब हैड आई बीन इन योर प्लेस, नहीं होता है। मतलब आउट इन द इंटरव्यू कुछ पूछ लेगा मेरे से कि पोएट्री ही क्यों किया तूने, अच्छा। ये हॉबी थी पोएट्री क्यों किया तूने, ऐसे स्पेसिफिकली बोल देगा। तो मेरे पास नहीं है डेटा उसको बैक करने के लिए। दे कांट बी डेटा फॉर थिंग्स दैट जहाँ आपकी पैशन चीजें ड्राइव करती है, तो आप उसको वहां पे उससे डिफेंड करोगे, बोलोगे सर मेरा पैशन था, क्यों था पैशन वो एक्सप्लेन करोगे। मे बी व्हाई डिड यू फील कि गर्ल एजुकेशन इज मोर इम्पोर्टेंट, डिड यू हैव एनी पर्सनल एक्सपीरियंस, कुछ तो होगा, मे बी देखा होगा, फैमिली में देखा होगा, कहीं कुछ कुछ देखा होगा सोसाइटी में, दैट ड्रोव यू टू इट। सो मे बी से कि दैट पैशन इज समथिंग दैट ड्राइव्स मी उसमें, इवन इफ कि यार मतलब लड़कों को अपॉर्चुनिटी मिलते देखा है मैंने, लाइक पर्सनल करेक्ट, लाइफ, आई करेक्ट, रियली वांट करेक्ट। गर्ल्स टू हैव दैट एजुकेशन। एब्सोल्युटली। आपके आंसर में वो पैशन झलकेगा ना, सामने वाले को, सामने वाला कन्विंस हो जाएगा कि हाँ ठीक है यार, मतलब कॉन्शियसली किया होगा इसने, ठीक है, ही डज नॉट नीड कि उस पर साइन करना है एंड ही हैज टू अग्री। यस। उसको बस समझना है कि हाँ मतलब यार सामने वाला को लगा होगा कि गर्ल्स एजुकेशन इज मोर इम्पोर्टेंट। उस पर फोकस करते हुए अब लिमिटेड टाइम जो आप अलोकेट कर सकते हो सोशल वर्क को, आपने उस पर किया, इट्स फाइन। हर करेक्ट। जगह डेटा नहीं हो सकता है। यस, एब्सोल्युटली। इनफैक्ट ऋषभ देखो, इट इज ऑल्सो ओके टू से कि इट वाज कन्वीनियंट फॉर मी टू डू इट। अब जैसे फॉर एग्जांपल व्हेन आई वाज ड्यूरिंग माय अंडर ग्रेजुएशन, तो हमारे कॉलेज के बिल्कुल पास में एक एनजीओ है, ओके। तो मैं वहीं जाता था। मैंने ये नहीं सोचा कि मेरा पर्पस क्या है, कि भाई मेरे को अंडर प्रिविलेज चिल्ड्रन के लिए करना है, कि मुझे अंडर प्रिविलेज विमेन के लिए करना है, या एल्डरली के लिए करना है। ये सोच के नहीं, मैं सोचा कि कुछ अच्छा करना है, और मेरे आसपास जो मुझे मिल गया मैं उसको सर्व कर रहा था। ठीक है, वेरी सिंपल। और मैं इसके अंदर ये लॉजिक नहीं बिल्ड करने की कोशिश करूंगा कि आई वॉज हेल्पिंग लेट्स से अंडर प्रिविलेज चिल्ड्रन बिकॉज मेरा विजन था कि मैं अंडर प्रिविलेज चिल्ड्रन को हेल्प करूं, नहीं था। सच्ची बात है, जो सच्ची बात है, मेरा मेरा थॉट प्रोसेस था कि मैं हेल्प करूं, मैं अच्छा काम करूं, मैं आई कैन डू समथिंग फॉर द ग्रेटर गुड ऑल्सो, ये था। पर मैं उसको बहुत सच्चाई से बताऊंगा। ठीक है, एक तो अच्छा काम कर रहा हूँ, ऊपर से उसमें झूठ बोल रहा हूँ।
Understood. Okay, sir, I ठीक understand है. that. सो इट इज एब्सोल्युटली ओके टू से कि ये मेरे करीब था, मेरे घर के करीब था, मेरे को जब भी टाइम मिलता था मैं इसके साथ मैं जाके इसमें टाइम देता था, एंड आई ट्रूली लाइक्ड, आई ट्रूली एंजॉयड डूइंग इट. करेक्ट. Understood. Okay, okay, sir. Yeah, understood या that. या गो अहेड रूपल. Hi, sir. Thank you for the session. Ayush sir also and Sudhanshu sir also was very insightful. I had a few questions. The first question is when Sudhanshu sir, you asked me about that 31 months experience, three companies, 10 months, three companies, different roles. I thought I really like came out little like ठीक से निकल गया था, but what would you say, like my answer की risk taking लेना था, तो should I have drafted in a better way, because ये this is a question which is I am also wondering, like मैं भी मुझे नहीं नहीं. लग रहा है कि ये क्वेश्चन आएगा जरूर. सो बेसिकली सी, जो भी हमने पूछा है किसी भी एक कैंडिडेट से, वो दूसरे कैंडिडेट के लिए भी वैलिड है. ठीक है. सो एवरीबडी हु इज अटेंडिंग अ सेशन, हु इज पार्टिसिपेटिंग और नॉट पार्टिसिपेटिंग द सेशन, हैज टू प्रिपेयर अकॉर्डिंगली. करेक्ट. तो इट्स जस्ट अ मैटर ऑफ लक कि वो तुम्हारे केस में लग गया और किसी और के केस में नहीं लगा. ठीक है. सो रूपल, आई थिंक यू डिड ओके, बट यू कुड डू वेल, यू कुड डू बेटर. प्राइमरली टॉक अबाउट द सिचुएशंस वेयर यू डिड इट. है ना. ऐसा मत बोलो कि मैं रिस्क टेकर हूँ इसलिए मैं फॉर एग्जांपल लेट्स से 10 महीने का एक्सपीरियंस लेके निकल जाता हूँ कहीं से भी, है ना. ये रिस्क टेकर नहीं है एग्जैक्टली. इट इज़ लैक ऑफ प्रॉपर प्लानिंग. कि अगर तुम 10-10 महीने में ऑर्गेनाइजेशन छोड़ रहे हो, तो या तो तुम छोड़ने के टाइम पे गलत थे या तुम पकड़ने के टाइम पे गलत थे. ऐसा नहीं हो सकता ना कि पकड़ा भी सही और छोड़ा भी सही. ऐसा दैट्स नॉट पॉसिबल. Correct. So you have to, and you also have to admit it, okay, maybe I was not aware, at that point in time. It is absolutely okay to agree and say that, okay, I was naive in my approach of selecting organizations at that point in time, and I truly believe that I'd get to learn a lot about organizations as part of my B school. Correct. That is more pragmatic. Okay. So it's okay. Matlab, we've all been there, right? We've all made mistakes. Okay. So it's not that we are trying to project ourselves as people who've never made mistakes. Correct. Perfect थोड़ी है यार, इंसान है. और कभी कभी ऑनेस्ट भी हो सकता है यार. मतलब ठीक है, हो सकता है कि यू माइट हैव स्विच सिटीज, यू माइट हैव हैड प्रेफरेंसेस कि यार ये इंडस्ट्री अच्छी लग रही है. फॉर एग्जांपल एक से कोई फिनटेक में शिफ्ट करता है, लगा होगा अच्छा कर लिया, हो सकता है. मतलब यू कैन से एंड से इन द लॉन्ग टर्म आई फील कि यार मेरे को मे बी फिनटेक में रहता है, टेक में रहता है, सीखने को एक जगह ज़्यादा मिलता. बट अगर कोई एकदम क्रॉस क्वेश्चन करके बोले कि डू यू स्टिल फील कि वाज इट अ राइट डिसीजन और नॉट, मे बी स्टिक विद इट कि ठीक है कोई बात नहीं करा है, बट आई हैव हैड एक्सपीरियंसेस, एटलीस्ट दे आर सम प्रोस. अलग अलग इंडस्ट्रीज सेक्टर्स का आइडिया मिला, इट्स फाइन. तो मतलब it has to be your answer at the end of the day. Sudhanshu sir or I can only maybe help you structureize things, क्योंकि फॉलो अप क्वेश्चन जो आएंगे यार, ना मुझे पता है ना तुम्हें पता है ना. बहुत चीजें होती है जो अगर आप ही डीप डाइव करोगे ना तभी आप जा पाओगे. एंड एट द एंड ऑफ द डे ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी. आप बहुत ज्यादा वो घुस के पूछेंगे तो इट्स बेटर टू बी ऑनेस्ट फ्रॉम द बिगनिंग, सो दैट आप लास्ट तक डिफेंड कर पाओ अपने खुद को. एंड ठीक है मे बी से कि हाँ, अगर वो बोले कि यार एक ही एक ऑर्गेनाइजेशन में आपको 30 महीने करने चाहिए थे ये वो, तो बोलना कि यार मतलब ये लर्निंग लेके मैं जाऊंगा, मे बी द नेक्स्ट ऑर्गेनाइजेशन में जो ज्वाइन करूँ वहाँ पे मैं एक लंबा टाइम स्पेंड करूंगा, और मतलब मैन इज अ प्रोडक्ट ऑफ देयर मिस्टेक, खत्म बात. वहाँ मतलब इस टाइप से थोड़ा ट्राई करो, बी थोड़ा सा ऑन योर कॉन्फिडेंट रहना है, और मे बी ठीक है. ट्राई डिफेंडिंग, और लास्ट थोड़ा सा ऐसे झुक जाना है कि ठीक है कोई बात नहीं आप सही बोल रहे हो. डिप्लोमेटिक. ठीक. So second question was when there was a turn of Abhiroop and you asked him कि which specialization did Rupal opt for या IM वाला, and you asked me कि is he right. उस टाइम मैंने बस directly no बोल दिया, तो मुझे थोड़ा सा courtesy वाले वे में जाना चाहिए था यार, बस no बोल के No, निकल it जाऊँ is जैसे. it is absolutely fine. There's nothing. आपकी तरह नहीं होता, मतलब वही बाइनरी क्वेश्चन था ये सब नो तो. ठीक. ठीक है.
also one question you asked to Nikunj about that bank repo and reverse repo rate. So being in this UPSC वाला sector, this area like ये वाला part मेरे को थोड़ा आता था. And is there any clue या किसी तरह से signal दे पाऊँ मैं panelist की ये वाला question मुझसे पूछ लो. नहीं नहीं नहीं, नहीं ना, बिल्कुल नहीं, डू नॉट ट्राई नहीं टू ना. डू दैट। बस it was just one of a rare instance कि मुझे नहीं ये वाला नहीं, part तुम्हें दिख. डोंट ये ट्राई टू पार्ट, जंप इन, नहीं तो पता चला उसके सारे क्वेश्चन तुम पे डाल हाँ दोगे। हाँ तभी. वैल्यूएशंस भी पूछे जाएंगे तुमसे, फिर तुमसे कंट्री की रिस्क हाँ प्रीमियम भी पूछी जाएगी, फिर आप वहीं पे रुक जाओगे, हम्म, सॉरी भैया बोल दोगे। हाँ बेटर टू लाइक अवॉइड दिस काइंड ऑफ सिचुएशन। आपसे राइट. पूछा जाए देन हाँ, मतलब बोला कि हाँ इस क्वेश्चन आपसे पूछा जाए तो आप आंसर करो बिल्कुल, है ना। सर I और think just so sorry, I'm adding on in between because of this conversation. I think Rupal was the one who dropped a hint because of his nod, which made me change my answer that bank rate and repo rate are not the same but different entities या altogether. So I think it worked in my favor because I was able to say I don't know. It's clear. करेक्ट। सो या, सो यू हैव टू शुड बी. नॉट डू दैट, वेरी यस ऑनेस्टली शुड नॉट यस डू दैट। सी, तुम व्हाई आर यू सॉर्ट ऑफ हेल्पिंग योर कंपटीशन भाई, सिंपल बात है। यहाँ तो ठीक है, यहाँ तो हेल्प करो, हम सबको निकलना है भाई तो ठीक है. यहाँ तो सही है, लेकिन ठीक. ऑब्वियसली नॉट इन द लॉन्गर रन, इन द। So in the last GD which you had conducted, you had told given a review about that we have to be an active participant. थोड़ा हंसते रहना है, थोड़ा सा हिलते, मतलब कुछ तो in that way I was trying to nod my head or something to just show my activeness that I am eager into the conversation and I am listening to that. दैट्स इसलिए फाइन, आई मैंने मीन थोड़ा टिल द पॉइंट यू आर लाइक अनम्यूटिंग एंड सेइंग कि यार मेरे को पता है भाई, हाँ 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 आई नो दिस और कैन आई आंसर दिस, ऐसे बहुत ओवर स्मार्ट बन के इट्स फाइन, नहीं, नॉट वो करो, वो स्माइल बिल्कुल करो। बिल्कुल नहीं करना है, बिल्कुल नहीं, ओवर स्मार्ट बिल्कुल नहीं बनना है आपका। राइट. जितना जब बोला जाए तभी बोलो भाई, बेकार में कूदोगे वो सामने वाला ईगो पे ले लेगा, और फिर वो कपड़े फाड़ देगा। और वन मोर राइट. रेड फ्लैग कि अगर कोई पैनल में किसी बंदे किसी कैंडिडेट का ऐसा मारा जा रहा हो, क्रिटिसाइज किया जा रहा हो, और उस टाइम आप हंस रहे हो, देन हाँ इट ऑल्सो सेंड्स अ बैड सिग्नल, ठीक। उस यस टाइम पे किसी का सीरियस माहौल है तो यू हैव टू बी सीरियस। पैनलिस्ट ने जोक मारा, हंस दो, बॉस के जोक पे सब हंसते हैं, पैनलिस्ट के जोक पे सब हंसते हैं, वैसा एकदम माहौल अच्छा चल रहा है, हाँ हाँ भाई क्या बात, क्या जोक मारा है, उस टाइप से। बट इफ इट्स गोइंग ऑन अ सीरियस बेसिस, समवन इज गेटिंग लोथड और ब्लास्टेड, यू हैव टू बी वेरी सीरियस अबाउट इट कि हाँ हाँ मतलब भाई सीरियस मामला है, कीप नोटिंग सब क्या बोल रहे हैं, किसने कहाँ से क्या किया है, होता है। Yes, yes. So these were exactly my next two questions about this laughter wala angle and this point noting wala angle कि like there were instances in this GD as well बस अंदर से थोड़ी सी हंसी आ रही थी like थोड़ा सा जैसे सुधांशु सर अपने वन लाइनर्स कर रहे थे तो बड़ा मुश्किल हो रहा था रोकना उसको तो इन द एक्चुअल GI also there will be instances तो उसको तो कंट्रोल करना ही पड़ेगा ना एक्चुअल जी. बिजनेस सिनेरियोज आर आल्सो इंटरेस्टेड, सेम फ्लोर पे बैठे हुए बगल वाले बंदे की मारी जाएगी और बहुत मजा आएगा, आपको हंसने का मन करेगा, बट आप हंस नहीं सकते हो, ठीक है। एकदम रियल लाइफ सिनेरियो है, इट्स नॉट ओनली एन इंटरव्यू सिनेरियो, बट यू हैव टू बी वेरी आर्टिकुलेट अबाउट इट, लाइक बिजनेस इंटरव्यू ना, थोड़ा सी फॉर्मल इंटरव्यू है Yes, आपको, yes. मैं फॉर्मल, ऐसे यार, नहीं ना Sir, and के पीछे कभी बैठ रहे किसी कभी की। बहुत ज्यादा हो रहा हो ना, तो इट्स वेरी सिंपल थिंग, ठीक है, ऐसे हैंड्स फोल्ड करो और अपने yeah, आप को ऐसे चिमटी काटो जोर से, ठीक है। okay. वर्क्स बिग टाइम, मेरे साथ भी कई बार हुआ है, तो मैं तो यही करता हूँ सर कई। आपके साथ हुआ होगा क्योंकि आप बहुत जॉली काइंड ऑफ अ पर्सन हो ना तो नहीं, सबके आपके अंदर. सबके साथ होता है, भाई सबके सबके साथ होता है सबके यार। साथ होता है, ओके. तो यू हैव टू डू इट, मतलब तुम हंस नहीं सकते हो भाई वहां पे। मेरे साथ तो कई बार कई इंटरव्यूज में हुआ कि पीआई में मेरे को हंसी आ रही है कि सामने वाला कुछ बोल दिया, मेरे को हंसी आ रही है, मैं कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। राइट. बट दैट इज नॉट समथिंग, बिकॉज सामने वाला ऑफेंड हो जाए, पता नहीं ऑफेंड यस किया तो एग्जैक्टली. फिर वो इट्स गोइंग टू गो डाउन साउथ, सो वी हैव टू बी वेरी वेरी केयरफुल देयर। I think before we सर take the next query, I think I'll be dropping off यस in a minute. I'll just say my like few words, यस। दो तीन चीजें कि यार होता है, पहले दो तीन चीजें सबसे खराब होते हैं, मेरे भी थे, जाके अगर वीडियोस में शेयर करूंगा ना, मतलब आई वाजंट द सेम पर्सन दैट आई एम हियर, मतलब मैंने भी काफी, मतलब नॉट यूज वर्ड, हगा है भाई लिटरली जीआईज में, आई हैव डन प्रीटी बैड, एंड सुधांशु सर वाज देयर, पैडी सर वाज देयर, बहुत गंदा मारा है इन लोगों ने। मैं ऐसे रामायण महाभारत बोलता था, महाभारत इसके बेटे उसके बेटे खूब गए ये लोग, बट देन अगेन अ पर्सन इज अ प्रोडक्ट ऑफ हिज और हर एक्सपीरियंस, जितना आप ज्यादा यहाँ पे आओगे
interviews में like you'll be criticized, you'll be cross questioned, it's gonna be the best for you. Like first year में I had a very bad experience कि मैं क्या कर रहा हूँ. उसके बाद से I watched all the GIs, अपने दूसरों के सबके. और मेरे पास एक लिस्ट था जीआई, अपने जीआई के पहले 6 फरवरी को मेरा था जीआई. उसके पहले आई हैड अ लिस्ट कि ऑप्स में ये क्वेश्चन पूछते हैं, फिन में ये क्वेश्चन पूछते हैं. मेरा ऑप्स था और फिन था. उसके अलावा मार्केटिंग में भी ये पूछते हैं, आईएम में ये पूछते हैं. मेरे पास सबके लिस्ट रेडी थे कि अगर उसने मुझसे पूछ दिया तो मैं क्या बोलूंगा. हर सिनारियो के लिए एक ऐसा एकदम रेडी रेकनर 4-5 पेजेस के क्वेश्चन थे मेरे पास. लाइक 60-70 इन टर्म्स ऑफ नंबर ऑफ क्वेश्चंस, कि अगर ये पूछ दिया तो मैं क्या बोलूंगा, ये होगा तो क्या बोलूंगा, कैसे मुझे बिहेव करना है. एंड एवरी टाइम यू कम फॉर एन इंटरव्यू, एवरी मॉक इंटरव्यू इम्प्रूव्स यू. हो सकता है जनवरी माइट बी अ पार्ट जहाँ पे यू बीइंग पॉलिश्ड, बट आप डायमंड बनोगे यार. फेब्रवरी में बनोगे, उस पीआई में, उस जीआई में बनोगे जहाँ पे आपका फाइनल डी डे होगा. तो डोंट टेक इट अपन, वी वर हार्श, वी वर लाइक रिडिकुलसली हार्श. ठीक है, होंगे इस लेवल पे भी आपको पैनलिस्ट मिलेंगे, किसी पीआई में मिलेंगे, किसी जीआई में मिलेंगे. बट take this as a learning. Everyone who's watching, like I saw 50 people, who were watching 15 minutes ago. Everyone is a winner. People who are dropping off कि यार रात हो गई है, नहीं देखते, नहीं समझेंगे. यार there's a line कि यार उठ जाग मुसाफिर भोर भयो, अब रैन कहाँ जो सोवत है, जो सोवत है वो खोवत है, जो जागत है वो पावत है. अगर वाह। आपको कुछ करना है तो जग के करना पड़ेगा, इफ यू वांट समथिंग, राइट. तो करो, एंड दिस इज अ टाइम. बी फॉर्मल, बी पॉलिश्ड. रगड़ दो यार अभी 10-15 दिन. और हम लोग सब, मतलब आई एम वेरी श्योर कि एवरी मेंटर हुज आउट देयर मेंटरिंग यू, इस टाइम पे एवरीवन वाज इन योर प्लेस. सबकी फटी हुई थी, सबकी हालत खराब थी. बट देन दे डिड समथिंग, द नेक्स्ट 20 days that turned things around for them. And every one of you who's on this call, who's going to watch this, is like capable of doing that. And everyone who's faced this question, it's going to be hard for them. दो रात सो नहीं पाओगे. And believe me, that's going to be the best thing that can happen for the next few days in your life. दो रात सो नहीं पाओगे तो अगले शायद 2 साल बी स्कूल में चैन की नींद सो पाओगे कि हाँ भाई कन्वर्ट तो हो गया, देख लेंगे आगे. You'll be confident enough कि ये नहीं आंसर कर पाए, अब करेंगे. So yeah, those are my like final parting words. I also like just have to Excuse me, go sir. to sleep and have to attend office Yes. tomorrow. So Yes. Bye bye, apologies. Ayush. Chal, take Excuse care. me, Thanks, sir. Ayush. Good, good. Thank you everyone. All the best. Sir, Yes, sir. Yes. sir, would like to know your answer of like why SPJIN over XLRI? My answer. Yeah, like I was not asked this question in my SPJIN interview. So actually, I wanted to like when you asked him this question, Mhm. so I was framing my answer for it. So like, can we be critical? Like I was नहीं. trying to So, well, so basically, let me answer it, hmm, a little differently. Utkarsh, I would say, okay, start digging into first yourself. Okay, first get yourself right. Get your HR answers right. Okay, and then you delve into the other elements also. For example, you will find sessions on XLRI also on the dashboard. You will find sessions on SPJAN also on the dashboard. So तुम्हारा कॉलेज स्पेसिफिक सेशंस वाला जो मॉड्यूल है उसमें तुम्हें दोनों मिलेंगे. जाओ बैठो देखो. You will meet a lot of mentors from Excel also. You will meet mentors from SPJAN also. ठीक है. तो पॉइंट इज कि वी हैव टू स्टार्ट रिसर्चिंग. मुझे अगर फॉर एग्जांपल लेट्स से, और ये बहुत कॉमन क्वेश्चन है कि तुम्हें कौन से कॉल्स हैं, कौन सा सेलेक्ट करोगे. करेक्ट. तो यू हैव टू स्टार्ट थिंकिंग अबाउट इट, बट बिफोर दैट स्टार्ट थिंकिंग अबाउट योर सेल्फ. आई वुड से prepare your answers. I think get your answers ready. Go through the HR Q&A session. A lot of these elements we've already discussed. Okay, so once you go through that, start drafting your answers. As basically the entire HR drafting process is very important because it tells you how to think. सिचुएशनल क्वेश्चंस है तो क्या, कैसे सोचना है, स्टार फ्रेमवर्क क्या होता है, कैसे यूज करते हैं. करेक्ट. तो अब कोई भी सिचुएशनल क्वेश्चन होगा तो तुम स्टार फ्रेमवर्क यूज कर पाएगा. योर ब्रेन इज नाउ कंडीशनड टू डू इट. Kuldeep is saying XLRI over SPJAN will hamper the chance. No, absolutely not, Kuldeep. It has got nothing to do with your कि ऐसा नहीं कि वो ईगो में आ गया और उसने, ऐसा नहीं होता है. They want to see the logic कि इंसान लॉजिकल है कि नहीं, कि ये इंसान सच बोलता है कि झूठ बोलता है, कि इतने टाइम से ऑनेस्टी बोला और अब झूठ बोल दिया.
Correct. Sir, but what could have been a logical answer for that? Like, as per your, like, let's say, See, Utkarsh, very simple. Like, any answer is good answer, but you cannot back it by saying कि value alignment है and then say कि मुझे पता भी नहीं है कि values क्या हैं. That is the fault. You get the fault. You are saying that okay, value alignment. Okay, I told you okay, what are the values? You told me there is a there is a societal commitment. What is the commitment? समझ रहा है उत्कर्ष? So yes, do you getting it. understand where the fault is? It's not about right or wrong. It's XLRI and SPJIMR are both great colleges at their own place. दोनों के दोनों ही amazing colleges हैं, and there are people who and there are so many people who aspire to get into the B schools while only a few will get into these. Correct? तो दोनों ही अमेजिंग कॉलेजेस हैं भाई. ठीक है. एंड वेरी ऑनेस्टली I if I would have to start, I would say I'd be fortunate to get into any of these B schools. Okay, but if I have to decide, these are some of the parameters that I will take into consideration, and basis that I believe that I will have my preference would be around SPGen, and then if cross questioned I would have answers. So saying values, know the values, no? Correct. If you're Yes, correct, do not say giant family. Giant family is got to nothing to do with it. तो giant family के बारे में भी तुझे नहीं पता था. Correct. yeah, getting it. So whatever you were saying to back up your answer were very weak backups. Okay. So think about it. Start drafting your answers. You should not sleep. You should start drafting your answer. Or are you also a morning person? No, sir. Okay. Sir, can I continue my question? Yes. Go ahead. Sir, okay, so last year, one of my friend who was also preparing for UPSC alongside me, he was my roommate, got into SPJIMR last year only, and he had a gap year of 4 years and no work ex. Okay. So in interview, if they are grilling me on this UPSC versus why this, can I quote him? Or like last year he came and he was No. selected? Yeah, no. No? No individual examples. Okay. रूपल सी बहुत Sir, सिंपल है. इट्स अ वेरी सिंपल थिंग. ओके. अपना आंसर लिखो, क्रॉस क्वेश्चन करोगे, अपने आप क्रॉस क्वेश्चन आएगा वहां से. उसके बाद तुम खुद ही आंसर निकाल पाएगा. अब जैसे फॉर एग्जांपल बोला कि मुझे अपने पेटेंट पे काम करना है, तो पेटेंट पे तो काम पहले भी करना था ना, तो यूपीएससी क्यों कर रहा है? अब यूपीएससी कर रहा है, बोल रहा है कि वो मेरे को एग्जीक्यूटिव एमबीए करा देगा. ये क्या बात हुई? करेक्ट. तो बहुत लॉजिक सबको समझ में आता है. ऐसा नहीं कि सिर्फ मुझे ही आता है या तुम्हें नहीं आता है. लॉजिक सबको समझ में आता है. इट्स जस्ट दैट कि हम आलसी हैं. हम उतना टाइम निकाल के सोचना नहीं चाहते हैं कि भाई अगर ये बोलेंगे तो ये क्रॉस क्वेश्चन होगा ही. लॉजिकल क्रॉस क्वेश्चनिंग है कि कोई भी पूछेगा कि भाई ये पेटेंट के ऊपर काम करना था तो अभी तक क्यों बैठे हुए थे. करेक्ट. तो वो अपने को वो जो इश्यूज हैं वो अपने को प्लग करना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा. अपनी कहानी से ही आंसर निकलेगा. वो आंसर ऑनेस्टली स्पीकिंग किसी और के पास नहीं है, वो आंसर तुम्हारे पास ही है. तो बैठेगा और उसको फॉर एग्जांपल उसके ऊपर तुम क्रॉस क्वेश्चनिंग खुद को करेगा कि अच्छा अगर ऐसा है तो फिर मैं क्या बोलूँगा. तब जाके तुम्हारा आंसर्स बनेगा प्रॉपरली. ठीक है. तुम्हारा एक बार एचआर रिव्यू हो गया, उसके बाद तुम अब बैठो. एचआर रिव्यू करने के बाद अब तुम लेवल 1 लेवल 2 लेवल 3 करो अब उसके साथ में कि भाई मेरा आंसर है, मेरे आंसर पे ये लेवल 1 क्वेश्चंस, ये लेवल 2 क्वेश्चंस बन सकते हैं. अब मैं इसका आंसर कैसे करूँगा. ठीक है. तब जाके तेरी तैयारी पूरी होगी. वाई इज एचआर आंसर सो इम्पॉर्टेंट? बिकॉज इफेक्टिवली दे नो कि करंट अफेयर्स में इसको कितना ही पता होगा. ठीक है. या ग्रेजुएशन सब्जेक्ट्स थोड़ा बहुत इसको आता होगा, एकेडमिक्स वगैरह पढ़ा होगा, बट वेरी ऑनेस्टली उनको पता है कि उनको तुम्हारे ऊपर काम ही करना है. ठीक है. दे हैव टू polish you, they have to make you learn, they have to give you opportunities, they have to push you and everything they know, but they only want to know कि उतना फाइट तुम्हारे लिए मारना ठीक है कि नहीं. मतलब तुम्हारे ऊपर इतना काम किया जा सकता है या नहीं किया जा सकता है. दैट्स व्हाट दे वांट टू अंडरस्टैंड. सिंपल. सही कैरेक्टर है कि नहीं. कैरेक्टर तो right, sir. कम से कम स्ट्रांग हो. ये पता चला थोड़ा प्रेशर दिया पिघल गया. करेक्ट. तो वो स्ट्रांग कैरेक्टर्स, ऑनेस्ट कैरेक्टर्स, ठीक है, पीपल हु विल नॉट बैक डाउन. ओके. फाइट मारेगा, है ना. तो वो कैरेक्टर दिखना बहुत जरूरी है. Yes.
Sir, also, sir, my major question is like मेरी मेजर first, क्वेश्चन अभी बचा हुआ है तेरा, इतनी देर में sir, माइनर yes. हाँ हाँ बताओ। नहीं सर, ये वो भी मेजर ही थे, ये अच्छा वाला ना अच्छा, इसका आंसर मिल ही नहीं पा रहा है, मतलब मैं क्या करूं। बताओ मतलब बताओ। मतलब यूजुअली मेरा फर्स्ट लाइक व्हाट आई हैव सीन अराउंड इन हेयर इज कि फॉर्म ए में जिन्होंने फर्स्ट प्रेफरेंस भरी है उनको उसका शॉर्टलिस्ट आया है। मेरे सीन में ऐसा है कि मेरा फर्स्ट प्रेफरेंस वाज फाइनेंस, लेकिन मुझे सेकंड प्रेफरेंस के लिए शॉर्टलिस्ट आया है ऑप्स के लिए। तो हम्म लाइक इन इंटरव्यू दे मुझे ऐसा लग रहा है कि वो जरूर पूछेंगे कि तुमने ऐसा क्या डाला मतलब क्यों क्यों ऐसा तुम्हें लगा कि व्हाई डू यू वांट टू चूज फाइनेंस। तो हम्म। इसके लिए तो मैं फाइनेंस के लिए मतलब अभी मेरा फाइनेंस में उतना स्ट्रांग नहीं है। इकोनॉमिक्स वाला सेक्शन मेरा ठीक है, मैक्रो इकोनॉमिक्स वाला, बट फाइनेंस में शेयर डिबेंचर जो आप बीटा तो वैल्यू ये सब ऊपर से जा रहा था। ऊपर से जाएगा अभी, लेकिन बाकी के फिनेंस वाले सेशन भी अटेंड कर लेना। देखो एक सिंपल बात बताता हूँ, जो भी तुम्हारा पहला और दूसरा है दोनों के लिए तैयारी होनी चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि सिर्फ आप पहला पहला तैयारी कर रहे हो, दूसरा भी पूछ लेते हैं कई बार, अच्छा तुम्हारा सेकंड प्रेफरेंस ये था, ओके आओ सेकंड प्रेफरेंस के बारे में बात करते हैं, जस्ट टू चेक कि तुम कितना लेवल डीपर जाके तैयारी कर सकते हो। कि पहला तो सब प्रिपेयर करके आएंगे, तो इफ आई हैव टू चेक योर डेप्थ ऑफ प्रिपरेशन, मैं तुझे सेकंड वाले पे भी क्वेश्चन पूछूंगा। एंड जनरली इट हैपेंस भी, तो इनिशियल जीआईज हैं, जब तुम 6th 7th जीआई में चले जाओगे तो फिर वो सेकंड वाले स्पेशलाइजेशन के ऊपर भी क्वेश्चंस आने लगते हैं। लास्ट सीजन में पैडी हैज डन सो मेनी सेशंस लाइक दैट, करेक्ट? सो आई थिंक दैट इज ऑल्सो समथिंग वी हैव टू स्टार्ट लुकिंग एट। बट अगेन पहले तो अपना फर्स्ट लेवल करो अच्छे से, यस ठीक है? सर, बस स्टार्ट बस अटेंडिंग। एक एक लास्ट बस ओके पक्का सर। ओके। सर, I have been shortlisted for BM as well, like ops and BM. And if in the interview they give me, okay, we have to choose, like we will select you only for one, ops or BM. तो कैसे मिडिल ग्राउंड निकालूं या फिर एक सिलेक्शन मार दूं कि मेरे को किसी एक को चूज करना है, तो कैसे देखो भाई, निकालूं उसे? ऑप्स ऑप्स एंड बीएम में देखो, ऑप्स वाला सेशन भी होने वाला है, तो ऑप्स वाला सेशन इसी वीक में प्लान्ड है, आई एम श्योर यू वुड हैव सीन द शेड्यूल, राइट? सो अटेंड द ऑप्स सेशन, ठीक है? उसके बाद डिसाइड करो, ठीक है? ऑनेस्टली डिसाइड करो ना यार, ऑनेस्ट डिसीजन जब होता है ना तो लॉजिकली डिसाइड करो। तो तुम्हारे पास उस चीज़ का लॉजिक होता है कि कैसे तुमने सोचा कि मैंने एक ऑप्स का सेशन अटेंड किया, उसमें ये चीज़ें मैंने सीखी, मुझे अच्छा लगा। अब आई एम नॉट वेरी श्योर कि मुझे इन दोनों में से क्या करना है, बट मेरा इंक्लिनेशन अगर आप पूछोगे तो वो मेरा ऑपरेशंस की तरफ है, बिकॉज ऑपरेशंस के अंदर मैंने ये सेशंस अटेंड करे एंड आई लाइक दीज एस्पेक्ट्स अबाउट इट, करेक्ट? तो वो लॉजिकल डिसीजन मेकिंग इंपॉर्टेंट है। ओके सर, एचआर रिव्यूज और बुक कर लूं मैं? मेरे को थोड़ा सा एचआर वाले के काम एचआर, करना था। सो बेसिकली देखो सिंपल है, तेरा एचआर आइटरेशन 2 भेज दिया है, यस सर। वेट फॉर द रिस्पॉन्स। अगर आंसर्स ठीक हैं तो यू विल नॉट नीड इट, पर आंसर्स ठीक नहीं हो तो एनीवेज मेंटर्स आर गोइंग टू आस्क यू टू गो अगेन, ठीक है? राइट। सी प्राइमरली बहुत सारे लोग एचआर रिव्यूज में बार बार इसलिए जाते हैं क्योंकि वो मॉक पीआईज अवॉइड करना चाहते हैं, ठीक है? कि पिटाई से बच जाएंगे, कौन जाए सवाल, पहले तैयारी करो अच्छे से, तो कौन जाए मॉक पीआई में जाके पिटाई होगी। बट तैयारी वैसी होती है, यस। करेक्ट? आप आहिस्ता आहिस्ता आप अपने आंसर्स को रिफाइन करते चले जाओगे, और वो मॉक पीआईज में भी होगा। द इंटायर थॉट प्रोसेस ऑफ एचआर रिव्यू इज टू मेक श्योर कि वी आर समवेयर, मतलब 70-80% मेरा आंसर डन है, अब थोड़ा 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 ट्वीक करके हम उसको 90-95% पे लेके चले जाएंगे, करेक्ट? दैट्स द इंटायर थॉट प्रोसेस। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट सर। नो प्रॉब्लम नो प्रॉब्लम रूपल। अरुण गो अहेड, अरुण अपने कपड़े फाड़ लेता अगर एक और रूपल क्वेश्चन पूछता तो। नहीं सर, डाउट अच्छे थे रूपल, थैंक्स यार, मेरे भी क्लियर हो गए बहुत। गो अहेड अरुण। हाँ, तो सर जब मैं इंट्रो दे रहा था देन मतलब मैंने बहुत ओपन एंड से कि वहाँ से क्वेश्चन आए, बट आपने जब पूछे तो फाइनेंस के ओरिएंटेड ज़्यादा पूछे, तो क्या मेरा इंट्रो सही नहीं था कि मतलब मैं उसी पे ज़्यादा फोकस कर रहा था फाइनेंस पे और बाकी सब एस्पेक्ट कम हो गए? नहीं, फाइनेंस तुम्हारा स्पेशलाइजेशन फिनेंस है ना, या बट आई तो हैव तुम वेरी चाहे लिमिटेड एक नॉलेज। बार भी फिनेंस मत बोलो, तुम्हारा क्वेश्चन फिनेंस के ऊपर आने ही वाला है। या वो है। जीआई 1 फंक्शनल होता है, तो किसी का मार्केटिंग है तो मार्केटिंग पे ही होगा इंटरव्यू उसका। हाँ, तुम मार्केटिंग एक बार भी मत बोलो तो भी मार्केटिंग ही होगा। तुम्हारा फिनेंस, तुम्हें फिनेंस तो आने ही वाला है तुम्हारा, बट उसको मेरा बैकग्राउंड है नहीं, मैं मतलब उससे स्टैटिस्टिक्स है मेरी कोई फील्ड। फर्क नहीं पड़ता है, ओके। डज नॉट मैटर, तैयारी करो।
हाँ वो है। एसपी जैन का स्पेसिफिक कॉल होता है, तो एसपी जैन विल आस्क यू स्पेसिफिक एलिमेंट्स। वो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम्हारा बैकग्राउंड है नहीं है, नहीं लगता है कि कैंडिडेचर तुम्हारा सूटेबल है तो ठीक है, बाकी को सिलेक्ट कर लेंगे। बट ओवरऑल इंट्रो कैसा था? सर ने, जैसे हर्ष सर ने बोला कि हाँ बढ़िया था, बट अकॉर्डिंग टू यू हाउ ठीक था। वाज इट? मैंने, अगर उसमें गड़बड़ होती तो मैं पॉइंट आउट करता, भाई इतना ज्यादा टेंशन मत लो, फाइनेंस पढ़ो, तुम्हारा प्रॉब्लम फाइनेंस हाँ है, तो मैं तुझे ऑलरेडी बता चुका हूँ। या तुम्हें अगर एसपी जैन में करना है, फोड़ना है, तो या फाइनेंस पढ़ना पड़ेगा, इररेस्पेक्टिव ऑफ बैकग्राउंड। ठीक है, अदरवाइज फाइनेंस नहीं भरना था, मेरे जैसा या इंसान मार्केटिंग भरा, आराम से गया मार्केटिंग वगैरह पढ़ के हो गया काम। मैंने इसीलिए भरा था क्योंकि इंटरेस्ट अलाइन कर रहे सारे नहीं इकोनॉमिक्स नहीं, एंड स्टैटिक्स के। इंटरेस्ट खाल देखो भाई, पहले इफ यू हैव नथिंग टू प्रूव, या then the interest is not worth it। करेक्ट। तो तुमने किया क्या है भाई? इंटरेस्ट तुम बोल रहा है कि तुम्हारा फाइनेंस में है, तो सामने वाला क्यों मानेगा? रीजन होना चाहिए ना। प्रूफ करना पड़ेगा। तो तुमने अगर एटलीस्ट मान लो बोला है कि फाइनेंस, तो मेहनत करना भाई, मेहनत तो दिखना चाहिए। या, उसमें मानता हूँ थोड़ा लैकिंग है अभी मेहनत करो, नॉलेज में। फाइट मारो। फिनेंस या के सेशंस अभी फॉर एग्जांपल इस वाले वीक के अंदर ऑप्स वाला सेशन होगा, फिर या अर्ली वीक में फिर से आयुष सर के साथ में फिनेंस के सेशंस हैं। ठीक है, तो वो सेशंस अपने होंगे, तो वो सेशन अटेंड करो। ठीक है, ऑप्स वाले सेशन होंगे, आईटी एनालिटिक्स के भी सेशन आने वाले हैं। तुम्हारा अर्ली नेक्स्ट वीक आईटी एनालिटिक्स के सेशंस हैं। यू ऑल्सो हैव द एचआर तो खैर इसमें है नहीं, बट एचआर वाले सेशंस भी होंगे। ठीक है, सो द आइडिया स्टार्ट गेटिंग इनटू द डोमेन अ लिटिल बिट बेटर। तो डोमेन को थोड़ा पढ़ना चालू करो। ठीक है, स्टार्ट गेटिंग द हैंग ऑफ थिंग्स। फिनेंस के अंदर थोड़ा और घुसो, समझो। सबसे पहले, अगर तेरा फिनेंशियल स्टेटमेंट्स क्लियर नहीं है, तो तुम फिनेंस के इंटरव्यू के लिए तैयार नहीं हो। तो तेरा बैलेंस शीट, पीएनएल और कैश फ्लोस, ये तीनों एकदम रॉकेट होना चाहिए, रॉकेट। इसके अंदर तुम फंस गया तो तुम है ही नहीं फिनेंस का, सिंपल है। इसके बाद वाला लेयर बनता है फिर रेशियोज। ठीक है, ये तो हो गया पहले फिनेंशियल स्टेटमेंट्स, हो गया। फिनेंशियल स्टेटमेंट के बाद रेशियो हो जाता है कि अच्छा क्विक रेशियो क्या है। ठीक है ना, क्विक रेशियो क्या होता है, करंट रेशियो क्या होता है, इन्वेंट्री टर्नओवर क्या है, डेटा टर्नओवर क्या है। ये बनता है तुम्हारा सेकंड लेयर। पहला ही फंस गया, दूसरा कोई पूछेगा ही नहीं। वो भी है। मैंने CFA लेवल 1 बुक है जो क्वांटिटेटिव मेथड्स, वो पढ़ी। उसमें स्टैट्स का जो मेरा नॉलेज था वो सीएफए मैंने लेवल फाइनेंस वन में। किया है? नहीं नहीं, मैंने बुक 1 पढ़ी है बस, ओनली मतलब अच्छा, अभी स्टार्ट कर रहा हूँ मैं। हम जो फाइनेंस पढ़ाएंगे उसके बाद सीएफए दे देना, क्लियर हो जाएगा। वो तो है, बट सीएफए लेवल 1 तक तो हम पढ़ा देते हैं। वो तो ठीक है, ठीक है, तो अभी अप्लाई कर लूंगा मैं। अप्लाई कर देना। एंड सर एक नेक्स्ट क्वेश्चन था, जैसे हम क्रॉस क्वेश्चन होते हैं, मतलब इस दूसरे इंटरव्यूअर, दूसरे जो है कैंडिडेट, उसने क्या बोला, तो हम नोट्स जो बनाते हैं उसको रेफर कर सकते हैं कि आई वुड चेक एंड टेल यू? नोट्स उतना, ऑनेस्टली स्पीकिंग, वहां पे नोट्स बनाने का टाइम होता नहीं है। नहीं, मैं बना रहा था अभी, सबके ये मेरे नोट्स पास तुम बनाओ, प्रोफाइल बट है। बी अटेंटिव थोड़ा सा, या है ना। तो बी अटेंटिव, तुम सब कुछ नोट्स नहीं बना पाएगा। और या नोट्स नोट्स बनाने में ही चीज़ें मिस आउट हो जाती हैं कि नोट्स ही बनाता रह गया, बाकी सामने वाला चार चीज़ें भूल गया। तो थोड़ा अटेंटिव रहो। ठीक है, ट्राई टू या अब्जॉर्ब। खाली खाली बेसिकली अगर तुम्हारे पास जनरली ऐसा होता है, आई रिमेम्बर बैक इन टाइम जब एसपी जान का अपना इंटरव्यू हुआ था, तो ऐसे हुआ था कि 6 लोग बैठे हुए थे। ठीक है, राइट, इन माई पैनल, राइट। सो अरुण, हमें फाइनेंस तो करना ही पड़ेगा, कुछ भी हो जाए भाई। मुझे अपना वो है, पैशन दिखाने का मौका ही नहीं मिला। वो भी दो है। इंटरव्यूज में खाली फाइनेंस पे 6 6 8 8 क्वेश्चन, एचआर तक तो गई ही नहीं मेरी बात। मैंने वाई भाई स्टैट्स तुम का एमबीए। लोगों का कौन सा जी है ये वाला? मेरा पहला है। हाँ, मेरा सेकंड है। वहाँ सब अच्छा में यार, फाइनेंस ही मतलब था। मैं तो एकदम ऑफ गार्ड था, मतलब मेरा पहला ही दिन है, कोचिंग पर मैंने उत्कर्ष पहले ली। जेन्युइनली यार, मतलब आंसर मतलब सुन के ऐसा लगा कि भाई क्या बोले वो जो एसपी जेन, आई थिंक मिस्टर एसपी जेन के बारे में। हाँ
भाई उसको यार स्ट्रेंथन कर इट यार। वाज लाइक कि रैंडम क्वेश्चन सीधे आ गया कि कौन सी कॉल है, और मतलब एक्सेलराय वर्सेस एसपीजेन, कुछ है ही नहीं टॉपिक, अरे पर दोनों तूने अच्छे इतना कॉल। बड़ा रेड फ्लैग दे दिया, वो वाई एसपीजेन खाली वैल्यूज, वो सही में वो तो पूरा चार्ट लेना हो, अगर एसपीजेन के बारे में बोल रहे हैं, उनके बारे में, उनका पूरा कब अरे पैदा हुए कब मरे सब A to Z। ऑल्सो एसपी और मतलब ये बहुत डिपेंड करेगा कि कौन से कॉलेज के बीच में कंपैरिजन चल रहा है। एसपी वर्सेस एक्सेल में कभी लेगेसी वाला पॉइंट डाल ही नहीं सकते, क्योंकि दो मतलब दोनों ही अपने रीजन, दोनों ही लेगेसी वाले मतलब क्या बैंक। एक आइडियल आंसर क्या होता है, मतलब अगर लाइक इफ उत्कर्ष एनीवन कोई ऑफ यू। आइडियल आंसर नहीं है। और अच्छा। बेसिकली देखो, ऑनेस्टली एक बात बताता हूँ, ठीक है, डू नॉट फाइंड एन इजी वे आउट। जाओ फाइट मारो, मेहनत करो, एचआर आंसर बनाओ पहले भाई जाके। ठीक है, जब तुम एचआर क्यू ने देखेगा तुम्हें काफ़ी चीज़ें समझ में आएंगी। ठीक है, ढूंढो आंसर, ढूंढो अगले वाले जीआई से पहले आंसर ढूंढना ही है। ठीक है, बट पहले अपने आप को ढूंढो भाई। ठीक है। श्योर। सर आप, हाँ, एक मिनट, हाँ, बताओ बताओ नोट्स वाले अरुण। पे बात कर रहे थे हम। हाँ पूछो, हम तुम्हारा क्वेश्चन पूछो। हाँ, मतलब कि मैं ऐसा करता हूँ कि मैंने सबके प्रोफाइल बना लिए थे, ये किस बैकग्राउंड से है, कहाँ, मतलब कौन से के लिए अप्लाई कर रहा है, तो उसके अकॉर्डिंग फिर रेफर कर सकते हैं क्या, मतलब कि आई वुड रेफर एंड टेल यू दैट, अगर इंटरव्यू पूछे इंटरव्यूअर। रेफर कर सकते हो, बट वो इतना डिटेल्ड नहीं पूछता है। ठीक है, वो बहुत बेसिक चीज़ें पूछता है कि अच्छा इसका डोमेन क्या है बताओ, इसने क्या बोला था, या तो इंस्टेंटली पूछ लेगा डू यू अग्री विथ हिम। हाँ, तुम सुन रहा है तो तुम बता देगा। अदरवाइज पूछेगा कि विच डोमेन इज ही ऑप्टिंग फॉर, ओके, हाउ मेनी कैंडिडेट्स, तो उतना तो प्रेजेंस ऑफ माइंड होना हाँ, चाहिए। अब वो ऐसा हाँ, नहीं पूछेगा कि वो, फॉर एग्जांपल लेट्स से, कौन से स्कूल में था, उस स्कूल का बताओ, या उस स्कूल का ट्रस्टी कौन है। इतना डिटेल में वो नहीं जाता है जनरली। तो बेसिक बेसिक पता होना चाहिए। ठीक है, दैट इज समथिंग विच इज इम्पोर्टेंट। सर क्लियर। सर सर जस्ट इसी वाले पॉइंट पे, जैसे निकुंज का क्वेश्चन था वो बीटा वाला, मैं बहुत ट्राई मार रहा था कि गलती से मेरे से पूछ लिया बीटा के व्हाट डू यू फील, वो बिल्कुल मतलब वेरिएंस कोवेरिएंस इतना कुछ हो जा रहा था, तो एक पॉइंट पे वो डिस्कनेक्ट फील हो गया क्योंकि उतना स्ट्रांग नहीं है, और उस केस में अगर मेरे से पूछ लिया और इफ आई एम नॉट एबल टू आंसर, तो उसमें कुछ नेगेटिव जाएगा मेरे लिए। नेगेटिव जाएगा। So हम इसको पढ़ेंगे, सो डू नॉट वरी अबाउट इट, वी विल स्टडी। सर ऑन दिस पॉइंट ओनली, हाँ। तो लाइक इफ आई लाइक मतलब सिमिलरली जैसे क्वेश्चन मेरे पे पॉइंट हो जाता और मैं बोलता कि बीटा इज अ मेट्रिक टू गॉज द वॉलिटिलिटी ऑफ अ स्टॉक विद रिस्पेक्ट टू समथिंग, तो वो चीज एक्सेप्टेबल होती है, या मुझे कोवेरिएंस और वेरिएंस वाली चीज मेंशन करने पे ही। सो उत्कर्ष देखो, बहुत सिंपल है ये। इट इज सेंसिटिविटी विद रिस्पेक्ट टू द मार्केट, ओके, दैट एवरीबडी नोज। हाउ डू यू कैलकुलेट इट इज द क्वेश्चन। उसमें ओके। डेफिनेशन नहीं बताना है, हाँ। कैलकुलेट कैसे करना है। ठीक है, अभी फॉर एग्जांपल लेट्स से यस्टरडे स्टूडेंट कॉन्टैक्टेड मी कि सर मेरे को फाइनेंस में कोई प्रोडक्ट, कोई काम बता दो। मैंने उसको बोला स्टॉक का जाके बीटा निकाल के आओ। ठीक है, तो यू हैव टू अंडरस्टैंड। सो खाली थियोरेटिकल काम नहीं चलेगा, थोड़ा प्रैक्टिकली पकड़ो चीज़ों को, कैसे निकालते हैं बीटा। ठीक है, रिस्क रिटर्न पोर्टफोलियो प्लॉट करना कैसे प्लॉट होगा। सर लास्ट ईयर यूपीएससी क्वेश्चन था, पूछ लिया था व्हाट इज बीटा। हाँ नहीं तो रिग्रेशन लाइन प्लॉट करो वाई एंड एक्स में आ इम्पोर्टेंट जाएगा। क्वेश्चन है भाई फाइनेंस के अंदर। हम्म, ठीक है, आई एम एक्चुअली ओनली स्क्रैचिंग द सरफेस, डेप्थ में तो हम गए ही नहीं। ठीक है, तो पढ़ना चालू करो भाई अरुण। सर और वन थिंग, क्या। मेरा मेरा पहला प्रेफरेंस फाइनेंस था, दूसरा मार्केटिंग, और मतलब फिर मैंने बीएम भरा था एंड आई गॉट कॉल फॉर बीएम, तो मतलब मुझे फाइनेंस और मार्केटिंग को भी ढंग से प्रिपेयर करना पड़ेगा क्या? एब्सोल्युटली करना ही पड़ेगा, जो भी तुमने स्पेशलाइजेशन डाला है उसको, उसकी तैयारी तुम्हें करनी पड़ेगी। जो तुम्हें मिला है उसकी तैयारी बेटर करनी चाहिए। दैट So शुड first I बी। should focus on BM and then यस these. यस, एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली। यस सर, एंड फाइनेंस में आई थिंक मुझे स्टैट्स का नॉलेज है, वो फाइनेंस में अप्लाई कर लेता हूँ, जैसे ये बीटा का इक्वेशन है, देन आई नो कि रिग्रेशन लाइन प्लॉट करते हैं, जो मार्केट इंडेक्स है, जो करेक्ट करेक्ट, कंपनी हाँ का इंडेक्स है, बिल्कुल सही बिल्कुल तो सही। वो नॉलेज है मुझे, बट जो बेसिक जो नॉलेज है कि फाइनेंस स्टेटमेंट में क्या फर्क पड़ेगा अगर कैश फ्लोज है, तो वो इतनी नॉलेज नहीं है, क्योंकि CF11 बुक अरे वन मेरे में भाई वही उसको पढ़ा। डिफेंड मत करो भाई, सीखो। हाँ वो है, वो करना ही है मुझे। हाँ, डिफेंड करने का कुछ नहीं है उसमें।
हाँ नहीं आएगा तो रिजेक्ट कर देगा वो। हाँ, वो तो है ही। ठीक है। एंड एंड सर, एक और क्वेश्चन था, जैसे डेटा एनालिसिस वाला क्वेश्चन था। इसमें मुझे पता है कि डेटा एनालिसिस दो तरह का होता है, प्राइमरी सेकेंडरी, बट जो सर बता रहे थे वो ऑब्जेक्टिव्स थे डेटा एनालिटिक्स के। करेक्ट। अगर इंटरव्यू में, अगर मैं मतलब स्टैट्स का स्टूडेंट तो मुझे पता है, बट इंटरव्यू अगर बोले कि चार ही होते हैं तो हम्म। फिर क्या करें? नहीं, नहीं पता है तो नहीं पता है। नहीं नहीं, मुझे पता है कि दो ही होते हैं कि डिपेंड ऑन डेटा। हाँ तो तुम ये बता दो कि सर मेरे हिसाब से जो मैंने पढ़ा उस हिसाब से ये दो होता है। ठीक है। कई बार फॉर एग्जांपल लेट्स से यू नो वो ये भी पूछ लेते हैं कि अच्छा व्हाट इज द 10th प्लैनेट, तो थोड़ी बता दोगे। सही बात है ना। पूछ लिया कि 10th प्लैनेट बताओ, तुम बता देगा क्या 10th प्लैनेट? ठीक है, तुम बोलोगे सर मेरे हिसाब से देर आर there were 9 and then Pluto was declared as a dwarf planet and so on and so forth, right? So तुम्हें जो आता है वो तुम बताओ ना भाई। करेक्ट। तो आर्ग्यू नहीं करना उनसे। नहीं, आर्ग्यू तो करना ही नहीं है। ठीक है, आर्ग्यू मतलब आर्ग्यू करके कहाँ जाओगे भाई पैनल से? रिजेक्ट कर देंगे। सिंपल है। सो यू हैव टू अंडरस्टैंड, रिमेंबर यू आर डीलिंग विथ ह्यूमंस एंड ऑफ द डे। ठीक है, तो डू नॉट बी एरोगेंट, डू नॉट बी ईगोइस्टिक, जस्ट बी हम्बल। ओके। एक चीज याद रखो कि अपने से बहुत ज्यादा टैलेंटेड इंसान है, हाँ, रिस्पेक्ट दैट। वो तो है। करेक्ट। परफेक्ट तो कोई है ही नहीं। करेक्ट। करेक्ट। सर मुझे ना एक चीज जाननी थी, जैसे आई हैव बीन शॉर्टलिस्टेड फॉर बीएन, बट मतलब ऑनेस्टली आई एम हैप्पी बिकॉज मेरा कोई स्पेशलाइजेशन ऐसे श्योर नहीं हुआ, आई वांटेड टू डिस्कवर ओनली। तो कैन आई बी ओपन अबाउट इट? अगर जैसे मुझसे सामने से पूछा गया मार्केटिंग, तो मैं उस टाइम प्रेशर में मैंने बोल दिया, क्योंकि मेरे वर्क एक्सपीरियंस बट से मुझे वो लगता है। प्रेशर में क्यों बोला सृष्टि? किसने बोला था प्रेशर में बोलने के लिए? किसी ने डिड समबडी प्रेशराइज यू? नहीं नहीं नहीं, बताओ ये क्या करोगे? तुमने अपने आप बड़े नॉर्मली बताया। हाँ, बिकॉज मुझे लगा कि आई हैव टू गिव सम आंसर, और मुझे लगता है कि मार्केटिंग अलाइंस मोस्ट विद माय एक्सपीरियंस, तो इसलिए मैंने उस टाइम बोल दिया। बट कैन आई बी ओपन कि आई वांट टू डिस्कवर इन द कॉलेज ओनली एंड। नहीं, व्हाई विल यू डिस्कवर इन द कॉलेज ओनली? आप अभी करो डिस्कवर। मार्केटिंग का सेशन पूरा अटेंड करो, फिनेंस का सेशन अटेंड करो, आईटी का सेशन अटेंड करो, फ्रॉडमैन का, उसके अलावा तुम्हारा जो लेट्स से ऑपरेशंस का सेशन अटेंड करो। अभी डिसाइड करो। ऐसे थोड़ी वो प्रोडक्ट खरीदने के बाद डिसाइड करेंगे कि प्रोडक्ट कैसा है। अभी करो भाई डिसाइड। सी द पॉइंट इज, आप अभी डिसाइड मत करो, बट एटलीस्ट बिल्ड एन ओपिनियन, नो बिल्ड अ व्यू। करेक्ट। आई एम नॉट श्योर बट आई हैव अ व्यू, राइट? दैट इज इम्पोर्टेंट। ओके। एक्सक्यूज मी सर, जो 9 balls वाला क्वेश्चन था उसका आंसर 2 है ना? टू है इस बार आंसर उसका, या टू है। मैं कंफ्यूज हो गया था, 8 balls एंड थिंग। तुमने खुद लिखा है अपने फॉर्म में कि पजल्स पसंद है, तो हाँ, पजल बट मैं थोड़ा मिस हर्ड कर गया था कि 8 balls की बात हो रही कि 9 balls की। क्लैरिफाई करो। अगर लगता है कि ओके। भाई क्वेश्चन गलत सुन लिया है तो क्लैरिफाई करो। ओके सर, आगे से ध्यान रखो। हम्म। थैंक यू सर। या अथर्व, गो अहेड। So I had actually a few questions. गो अहेड। So firstly, I had some basic questions like, do we get to talk to other panelists before our GD starts, like GI starts? यू मे नॉट। अब ये कैसे मैं बता सकता हूँ भाई? No, but as a usual यूजुअल circumstances में सिनेरियो में तुम्हें ये नहीं पता होगा कि तुम्हारे पैनल में कौन है। okay, ठीक है। सो फॉर एग्जांपल लेट्स से मैं बताता हूँ, लेट मी डिस्क्राइब दिस एंटायर प्रोसेस। सो बेसिकली यू गो टू द वेन्यू जहाँ पे बहुत सारे लोग तुम्हारी तरह आए होते हैं। ठीक है, सब टेंशन में होते हैं। ठीक है, सबको नहीं पता कि क्या होने वाला है। ठीक है। yes, और उसके अंदर एक तुम्हारा राइटिंग एक्सरसाइज होता है, और वो राइटिंग एक्सरसाइज जीआईस के बीच में भी हो सकता है, जीआईएस के पहले भी हो सकता है। वो डिसाइड करेगी एडमिशन कमेटी। ठीक है। okay, तो वो तुम्हारा सबसे पहले वहाँ पे, मैं तो सबसे पहले गया तो मैंने सोचा कि कुछ खाने को मिल जाए। ठीक है, तो मैंने देखा कि सैंडविच कहाँ मिलेगा, तो वहाँ पे फूड कॉर्नर्स में, तो फूड कॉर्नर ढूंढ रहा था। तो आई फाउंड समथिंग टू ईट देयर। बढ़िया खाया वाया। ठीक है, एकदम
है ना, निकुंज स्टाइल में मैंने कॉफी वॉफी पिया वहां पे, ठीक है। पानी है वो बोल रहा इट्स वाटर सर, मैं मतलब आए अरे मतलब मैंने, आई एम जस्ट किडिंग बड़ी, ठीक है। तो कॉफी वॉफी पी के मैं एकदम सेट, ठीक है, एकदम कि बढ़िया चला। तो उसके बाद फिर क्या हुआ कि दे कॉल्ड, वो नाम बुलाते हैं, ठीक है। देर इज ऑफिस बॉय जो नाम बुलाएगा, जो आपके छः छः सात लोगों का नाम बुलाएगा, वो एक पैनल के अंदर रहेंगे। और फिर वो पैनल के अंदर आप बैठोगे, और वो सीक्वेंशियली आपको एक ऑर्डर में बोलेंगे बैठने के लिए, उसी ऑर्डर में आप बैठोगे, एंड देन द इंटरव्यू स्टार्ट्स द वे इट हैपेंस, एग्जैक्टली ऐसा ही होता है, ठीक है। कि वन बाय वन फिर वो क्वेश्चन पूछते जाएंगे, कभी भी किसी पे भी स्विच कर देंगे। तो ओके। तुझे ऑनेस्टली स्पीकिंग उतना टाइम होता नहीं है फ्रैटरनाइज करने के लिए। यस, एक्चुअली माय सेकंड क्वेश्चन वाज दैट कि कितना यूजुअली ड्यूरेशन रहता है, बिकॉज आज हमारा ऑलमोस्ट 1.5 सो आवर्स चला। बेसिकली पूरा ड्यूरेशन तुम्हारा जो होता है, जो पहला राउंड होता है करीब करीब 40-45 मिनट, और जो ओके। दूसरा राउंड होता है वो भी करीब करीब आधा घंटा 40 मिनट टाइप्स। तो मोटा मोटा ओके। दोनों राउंड्स मिला के 1.5 घंटा, 1.5 घंटा मान लो, 1.5 आवर्स टाइप। एंड डू वी गेट वाटर टू ड्रिंक इन बिटवीन की राउंड जब चल रहा है तब पानी पी सकते हैं? राउंड वन के बाद तुम्हें पानी मिलेगा। राउंड के ड्यूरिंग डू वी हैव अ ग्लास और वाटर बॉटल ड्यूरिंग ड्यूरिंग? ड्यूरिंग द राउंड मतलब ऑब्वियसली यू कैन, मतलब थोड़ा ग्लास ऑफ वाटर मिल जाएगा, वहाँ टेबल पे रहता है, ठीक है, तो ओके। वो मिल जाएगा, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है। पानी वानी पी के जाओ, मतलब वहाँ पे क्यों। Yeah, just asking. And then जैसे आपने बोला कि नोट्स आपको वहाँ पे टेक डाउन करना डिफिकल्ट रहता है, सो इज इट लाइक फर्स्टली गुड इन टर्म्स ऑफ कि हमारा इमेज कैसा बन रहा है कि नोट्स हम हर एक पर्सन क्या बोल रहा है उसका ले रहे हैं, एंड हमें हर टाइम नोट सिचुएशनल, पैड एंड देखो पेन? सिचुएशनल होता है। अगर फॉर एग्जांपल लेट्स से आप इफ यू आर सिटिंग ऑन अ टेबल, तब तो आप ले सकते हो। आप अगर ओके। फॉर एग्जांपल एक टूल के ऊपर बैठे हो, आप लिख रहे हो उसके ऊपर, लिखते लिखते टॉपल करके गिर गए, ठीक है, यस, यस, तो काफी फनी हो जाएगा। सो यू हैव यस, टू टेक इट बेसिस सिचुएशंस, मतलब यू कांट नेसेसरली डू इट। यस। सर द नेक्स्ट क्वेश्चन आई हैड कि मेरा डिजिटल मार्केटिंग का, एज यू सो आई डोंट हैव मच नॉलेज, सो firstly should I skip that part entirely because my kind of an internship only I did for 2 3 4 months? देखो अथर, ट्राई टू बैक इट अप, डोंट डोंट रिमूव इट राइट अवे, ठीक है। थोड़ा सा मेहनत करो, पढ़ो, Yeah. पढ़ना चालू करो, रीड अबाउट इट, रीड एज मच एज यू कैन, ठीक है। अगर एक दो Okay. और मॉक में पिट गए तो फिर डिसाइड करेंगे, ठीक Yes, yes, for sure. है ना। पहली And मार में हटा दोगे तो फिर बचेगा क्या आखिरी मार तक। yeah, that's true. And वो जब like basically एक ही point पे काफी क्वेश्चन चल रहे थे and I could not answer that. So how can I sidestep from that यू while यू कैनॉट, I cannot नहीं sidestep? नहीं बिल्कुल नहीं, तुमने फॉर्म में लिख दिया तो यू हैव गिवन अ लाइसेंस। मैंने एक्चुअली ये फॉर्म में नहीं लिखा है। आंसर में तो बोला था। हाँ, आंसर में बोला है, so So that is an equally good license. So okay, if you're saying something or if you've written something in the form, then you are inviting questions. Simple. okay. फॉर्म में लिखा Uh, है या तुमने इंटरव्यू में बोला है, तो उसके ऊपर क्वेश्चंस तो बनेंगे ही। तो पहले सोचना है, okay, sure, sir. ठीक So है। and मार्केटिंग के प्रिपरेशन के लिए कौन सा अच्छा रिसोर्स रहेगा एक्सेप्ट फॉर आवर रेगुलर क्लासेस, इफ यू कैन उसके रेकमेंड? अलावा कोई और है ही नहीं, कोई और तरीका नहीं है। सिर्फ आई एम जस्ट किडिंग। सो 2-3 इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स हैं। सबसे पहले तो मार्केटिंग के अंदर कुछ कुछ बेसिक एलिमेंट्स हैं, फॉलो करना चालू कर सकते हो, ठीक है। एक एक देयर इज़ अ वेरी इंटरेस्टिंग पेज कॉल्ड, जो मैं बहुत टाइम से फॉलो कर रहा हूँ, जिस कॉल्ड मैड ओवर मार्केटिंग। इफ़ यू सीन दैट सर, इट्स अ गुड वन। बियॉन्ड दैट एक अपना जो अपने सेशंस होते हैं, वो सेशंस तो हम हमको करने ही हैं। बियॉन्ड दैट फिलिप कॉटलर की जो बुक है मार्केटिंग की, उसका एक समरी हम भेजेंगे, वो देख लेना, ठीक है। ये कॉट फिलिप कॉटलर समरी को तुम अभी नहीं पढ़ सकते, इतना काफी टाइम बड़ा भी है। नहीं होगा, बट वी विल शेयर अ समरी ऑफ फिलिप कॉटलर, ठीक है। वो हम हर सीजन में शेयर करते हैं, सो दैट वी विल शेयर, जस्ट गो थ्रू दैट, गुड इनफ होना चाहिए। बट जो सेशंस में हो रहा है ना, उनको भी प्रैक्टिकली पकड़ेगा तो तेरा काम हो जाएगा। So Okay, sir. until and unless you really get into or zones जहाँ पे तुझे नहीं जाना है, तो पिटाई Yes, नहीं होती है। बेसिक रखो ना, वो मार्केटिंग से तुझे वही चीज़ें पूछेगा जो हम डिस्कस कर रहे हैं। सेल्स एंड yes, मार्केटिंग yes. का डिफरेंस बताओ, प्रोडक्ट लाइफ साइकिल बताओ,
सेगमेंटेशन हो गया, टारगेटिंग हो गया, पोजिशनिंग हो गया, गो टू मार्केट हो गया, ये सारी चीज़ें पूछते हैं। तो वो सारी चीज़ें प्रॉपरली कर लो। अब तुम खुद ही क्यूज दोगे कि भाई सोशल मीडिया पूछो, डिजिटल पूछो, एसईओ पूछो, Yeah. तो पूछेगा। Yes, sir. सर So, सर जैसे आपने अभी ये फिलिप कॉटूर, सॉरी इफ आई मिसस्पेल्ड, ये बताया मार्केटिंग के लिए, ऑप्स के लिए कुछ सिक्स सिग्मा, लीन सिग्मा कुछ करना स्टार्ट कर लूंगे? सिक्स सिक्स सिग्मा अगर फॉर एग्जांपल तुम करोगे तो फिर तुम्हें उससे ज़्यादा इंफॉर्मेशन होना चाहिए। अगर फॉर एग्जांपल तुमने सर्टिफिकेशन, देखो सर्टिफिकेशन करे बिना अगर कुछ जानते हो तो बढ़िया है। हाँ नहीं, एज सर्टिफिकेशन नहीं, बट सर अभी आई एम सिर्फ रियली जो सॉरी, आई एम रियली सॉरी टू बी इंटरप्टिंग इन बिटवीन सर। आई थिंक बहुत लोग वेट कर रहे, पैटर्न से जाते, सबका टर्न आता है बारी बारी। ओके। I may sound rude about this, but please let's respect other या people waiting. एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली, आई एम गुड विद एनी रूल। ओके। so, नहीं, so I because had just ऋषभ, one last अभिरूप question. बहुत देर से वेट कर रहे हैं और कोई बात नहीं है। हाँ अथर was also waiting for the last 15 odd minutes, so I'm या sorry if it feels bad, but नहीं नहीं नहीं, please. गो अहेड गो अहेड। So I had just one last question. Shall I like prepare specific questions for marketing? कि ये questions मुझे मेरे profile पे आ सकते हैं, and can I get them reviewed from our HR reviews? या सो प्राइमरली मार्केटिंग के अंदर आई वुड नॉट रेकमेंड ड्राफ्टिंग क्वेश्चंस। ठीक है, स्पेशली मार्केटिंग के अंदर, बिकॉज तुम्हें मार्केटिंग के अंदर वो क्या पूछेगा, दीज आर स्पेसिफिक क्वेश्चंस ओनली। अब इनके आंसर्स हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं सेशन में, तो तुम वही Yeah. ड्राफ्ट करोगे, बिकॉज उसमें मतलब ये नहीं, अपना पर्सपेक्टिव नहीं है। No, I was actually asking about the question which you told me at the start कि सृष्टि को convince करो कि how like you are better candidate than her. ऐसे So कितने क्वेश्चंस बनाएगा? there would be 7 to 8 questions mostly. नहीं नहीं, ऐसे मैं तो 1000 बना सकता हूँ। सो द पॉइंट इज कि डू नॉट वरी अबाउट दैट, इट वाज ओनली टू Okay. टेस्ट योर कन्विंसिंग एबिलिटी। Okay. And actually, उसका मार्केटिंग से कोई लेना देना है ही नहीं। I did not get the feedback on that. Was it okay, bad? It was not okay, Okay. obviously. So what It could was I have not done? convincing enough. See, for example, let's say, see Atharv, again, if I talk about, let's say, if you have to convince somebody, correct, you have to understand what are the mistakes that they have committed. करेक्ट, आपने बोला कि यार मैंने वॉलंटियरिंग करी है, मैंने एडिशनल एलिमेंट्स करा है, उन्होंने भी करा है। So but like how can I understand उन्होंने कैसे mistake क्या कर रहे हैं? क्योंकि तुम सुन रहे थे ना उनको, इसीलिए तुमसे वो क्वेश्चन बाद में पूछा गया था। सृष्टि वाज नॉट आस्क्ड कि पहले तुम अथर्व को कन्विंस करो, बट यू हैड ऑलरेडी हर्ड हर स्पीक। Okay. Correct. So what is your analysis? So when a question comes, to Abhirup saying that there are two people that you have to select, how do you do that? Yeah. Until unless you've heard them. Yeah. This is also a similar question. While it takes sort of care of, or sort of takes this entire piece into this zone of convincing somebody, but it's also convincing starts with data, no? So what data do you have? Okay, she is your Yes. customer. You have to, convince her to buy a product. You can also look at it like this. But like I had 2 3 points, but that would have been looked like you know bantering on her kind of. मतलब Looked she like, firstly the first point I had was कि SPJIMR itself doesn't consider कि she deserve marketing, so that's why she has been called. I know it's rude, but yeah. no, Secondly, you should not do that. Basically, do not comment on what SPJ is doing. yeah, I know that's why I brought You it in. should not. Secondly, You basically through her performance. Okay, secondly, I had a point on. I believe that these are a couple of pointers. I believe that I have done better in terms of these elements, and give those anecdotes, give illustrations. Simple. Okay, sure. So like Correct the me? first point that I mentioned was like clear no. Absolutely not. आपके पास डेटा क्या है, आप उसी डेटा के बेसिस पे डेटा बैक डिसीजन दोगे। Yes. करेक्ट। आपको अगर कंज्यूमर को इम्प्रेस करना है तो कंज्यूमर के बारे में डेटा होना चाहिए। यू हैव टू कन्विंस अ कंज्यूमर। सो सिमिलरली in your case, let's say Shrasti is a consumer, is a customer, you have to convince her. Correct. So how will you Yes. convince? Yes, I got it. Correct. So Yeah. again, the idea is
do you have logic in that thought process or not? Yes, Correct? sir. Yes, sir. Those are all the questions I had. Yeah. Thank you so All much. right. Okay, Athar. Uh, Abhirup, go ahead. Sir, I had one question regarding that same which you referred कि I was chose to ask the two candidates, so I just gave the answer. उसका उसके ऊपर कोई क्रॉस क्वेश्चन नहीं हुआ था, हम्म। लाइक कि ये तो उसका क्या था, मुझे समझ अभिरूप नहीं बोल रहा है आया। कि मुझे क्रॉस क्वेश्चंस की आदत हो गई। हाँ क्रॉस मतलब क्वेश्चन नहीं होता है तो लगता है कि कुछ गलत हो रहा है। सो सी अभिरूप, वेरी ऑनेस्टली, इट्स ओके, तुमने जो बोला, जस्ट हम्म, ट्राइंग टू अंडरस्टैंड कि लॉजिकल है कि नहीं है। अगर हम्म। मुझे उसमें लॉजिकल फ्लॉ लगेगा तो मैं बोलूंगा। अच्छा, तो मैं आई वाज आस्किंग दिस ओनली, मतलब कि मुझे ऑलरेडी उसका एक्सप्लेनेशन साथ में ही देना था कि आई एम चूजिंग दीज टू बिकॉज दिस दिस दिस, या फिर मैंने वो सिर्फ नाम लेके ही वो क्वेश्चन को आपने पूछा ही नहीं कि इसने तो बताया ही नहीं। नहीं, मैंने उस चीज को क्रिटिसाइज नहीं किया ना। हाँ ठीक है सर। एंड सेकेंडली सर, आई वांटेड टू आस्क, आई थिंक आई वाज यू आस्क मी टू से कि ऋषभ से हाउ यू आर बेटर, and I was saying ki we are very similar, like his profile and my profile, हम्म। and the only point of difference that I could feel is उसने कुछ वो नहीं बोला था कि भाई मैंने को करिकुलर में ज्यादा क्या कर रखा है, but if in a situation we are there that legit there is not much difference between a person and your profile, because in a short duration how you'll able to differentiate between them and yourself, so what kind of points that I can add? You talk about your strengths, no? You do Okay, not try to, you hell but bent on differentiating yourself. You talk about your strengths. But if I talk about my strengths, Athav talked about his strengths, and then Shashti said मैं भी ये same कर लेती हूँ, करेक्ट। तो तो क्या फिर how प्रॉब्लम? will, okay, so there is no issue, I there is no issue in that. There is no issue. See, basically, you can't see the very simple thought process, Abhirup, is, for example, questions like why should you be selected or why should you be rejected is primarily not driven by others, is driven by themselves, by yourself. Yeah, So I should be selected for who I am. okay, yeah, that's the thing, because Correct? मेरा पर्सपेक्टिव उस पे चला गया था कि उनकी कमियां क्या है, तो नहीं, वो गलत उनकी था। कमियां नहीं आपको निकालना है भाई। हाँ ठीक है, देखो, वो ये ठीक है। ये कमजोरी की निशानी होती है कि आप हाँ, दूसरे का वीकनेसेस देख रहे हो। तुमको अगर चमकना है तो तुम अपने दम पे चमकोगे। ठीक है, So and बाकी sorry to लोग अपनी interrupt. रोशनी कम नहीं करेंगे। Can we directly say that we don't know what we are, like how we are better than them, but this is why you should select us. नहीं, नहीं, यू शुड नॉट से दैट, वाई। अब तुम्हें कॉन्टेक्स्ट वही दिया है, सो यू शुड से दैट, इफ यू आर एड्रेसिंग सृष्टि बट यू आर सेइंग द सेम थिंग। Okay. Got it. करेक्ट, बिकॉज हाँ, वो तुम्हें प्लॉट दिया है टू एड्रेस सृष्टि, so then you are addressing सृष्टि and saying that okay, I believe that these are a few reasons why I stand out. Correct, and be very very particular, be very data oriented, be very specific, right? है ना? तुमने ऐसी दो चीजें बता दी, सामने वाला ने करा ही नहीं है, तो बोल कैसे देगा कि मैंने भी किया हुआ है? ऐसा थोड़ी बोल yeah. देगा। अब तुम जेनरिक रखोगे तो सामने वाला बोल देगा। Uh, करेक्ट। and so like I'll always मतलब IM के बारे में जो shortlisting है, that is the first priority, जो first preference है, I'll study about it, but the second preference is BM, and I have no preference for that, but what specifically do I have to study for that, because I thought that BM is like a general thing, right? It is special, is there is no specialization in BM, right? करेक्ट, करेक्ट। So सो what तो बेसिकली गो थ्रू द अदर सेशंस ऑल्सो। ब्रीफली okay, अपना अपना एक प्लान थोड़ा सा रेडी रखो कि अगर फॉर एग्जांपल मान लो पूछ लिया कि नहीं नहीं सेकंड प्रेफरेंस बताना पड़ेगा, hmm, तो एटलीस्ट समथिंग कुछ तो है। बोल सकता हूँ कि सर सेकंड ऑपरेशंस हो सकता है, ऑपरेशंस का एक सेशन मैंने अटेंड किया, मुझे अच्छा लगा, आई okay. लाइक। Answers, last question. I wanted to like I am particularly very weak at finance. So should I be also be मतलब, I'll try to prepare best for the finance, but I'm pretty sure that I won't be able to pace up with the in 20 days. So should how do I handle finance question, और क्या मुझसे पूछे भी जा सकते हैं because मेरा तुम्हारा तो specialization आईएम है, I तुमसे फाइनेंस को पूछा जाएगा। मैं I'm just asking clarifying that only कि बिल्कुल मतलब I should be not worried about finance questions or not. नहीं, यू शुड वरी अबाउट अल्सर। Okay. ऑब्वियस सी Okay. बात है।
Okay, sir. ऑब्वियस यार, मतलब तुम्हें यू शुड थिंक अबाउट एंड यू शुड वरी अबाउट लूजिंग ऑल योर हेयर. सर वो तो अभी मम्मी कर ही रही हैं. नहीं, सो आई एम टेलिंग यू बिकॉज इतना सोचेगा तो जो बचा है वो उड़ जाएगा तेरा. ठीक है, फाइनेंस का कोई लेना देना ही नहीं है इसमें. नहीं, ओके सर. ओके अरे सर, या दैट्स इट. तुम्हारा तुम्हारा आईएम है, तुम आईएम की तैयारी करो भाई. ओके बस सर. 20 दिन बचे हैं, फाइनेंस की तैयारी में लगा हुआ है क्या. एंड सर, आपने मुझसे लास्ट में वो जो पूछा था, बोला था, आपने फीडबैक दिया था कि आई माय आंसर फॉर द थिंग दैट कि आई नेगेटिवली कमेंटेड अबाउट द लीडरशिप. हम्म. बट आई थॉट दैट वाज अ जेन्युइन काइंड ऑफ अ थिंग दैट आई वांटेड टू से कि मेरा आई वांटेड टू इम्प्रूव ऑन दैट. आई थिंक आई आपसे भी How मैंने will बार you बार बोला. how will you improve on that doing an MBA? Tell me. आई तुम थिंक वापस द तुम गाइस. वापस डेलॉयट चला जाएगा कि अब मैं आ गया हूँ, हीरो तुम्हारा वापस आ गया है एमबीए करके, और अब मैं चीजों को बदल दूं. कैसे बदलोगे? I mean, I not badalna, but I mean that same role. I aspire to become better than my predecessors So in that perspective. how does that require a management degree? How can I come into management without having a management degree in sort of Everybody who the. is in management has done a management degree. So this is walking right into the trap. इसी को बोलते हैं कि एकदम ट्रैप में कैसे घुस रहे हैं धीरे धीरे करके. Okay, See, okay, everybody, so think about it when you are saying something, no? So okay, what you are saying is that everybody who is into management has done a management degree. That is not true. okay, correct. It's not even 10%, actually. Yeah, yeah. Okay, okay. So I'll just not say that point then. You should think. Yeah, correct. Okay, sir. That's it. Thank you. Yeah, yeah, yeah. Rishabh, go ahead. हाँ सर, छोटा सा ही डाउट था सर. लाइक आपने जब अरुण को भी बता रहे थे, आपने वो पीडीएलसी का टर्म यूज किया, प्रोडक्ट डेवलपमेंट लाइफ साइकिल. Mm-hmm. पता है मेरे को क्या चीज़ है थोड़ा बहुत. और मेरा इंटरव्यू में भी आकाश सर ने, आई गेस ही आस्क्ड मी अबाउट डेटा एनालिसिस के 4 टाइप्स बताओ. सो थिंग इज, आई हैव रेड अबाउट डेटा एनालिसिस एंड एवरीथिंग. इशू इज, मैंने रट्टा नहीं मारा है. तो लेट्स से आपने मुझको प्रोडक्ट डेवलपमेंट लाइफ साइकिल एज एन इंटरव्यू पूछ लिया, आई विल स्टिल से द स्टेप्स, बट इट वोंट बी दैट बुक में जो जो है कि ये स्टेप 1 है तो मैंने वो स्टेप 1 बोला. मैं शायद से बोलूंगा अपना प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस से कि दिस इज व्हाट आई फेस्ड एंड बेस्ड ऑन दैट मे बी दिस आर द स्टेप्स. और लेट्स से डेटा एनालिसिस का क्वेश्चन हो गया, उसमें 4 टाइप्स मेरे को पता नहीं थे कि एग्जैक्ट टर्म क्या है. मैंने गूगल किया, फिर आई थॉट कि ओके प्रेस्क्रिप्टिव भी होता है, डिस्क्रिप्टिव वगैरह वगैरह. सो व्हाट शुड आई डू? लेट्स से मेरे को कोई एक क्वेश्चन आ गया इंटरव्यू में विच इज मोर ऑफ द रॉट लर्निंग साइड में, कि क्या होता है, डेफिनेशन बताओ, एनीथिंग ऑफ दैट सॉर्ट. हाउ शुड आई टैकल दैट? बिकॉज आई हैवेंट लाइक मेमोराइज्ड इट, रट्टा तो So, नहीं मार. तो रट्टा नहीं मारा है तो सो बेसिकली यू कैन मेंशन कि सर इसका एग्जैक्ट डेफिनेशन तो मुझे नहीं पता है, बट बेसिस माय प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस I have an answer. If you allow me, I'd want to answer it to the best of my ability, and then Got it. answer it. Understood. Okay, sir. Yeah, that's it. Yeah. Nikuj, go ahead. सर मुझे आप बताइए ना फ्रॉम कि आज जो मेरा रिजेक्शन हुआ, इट वाज मोर मोर बिकॉज ऑफ टेक्निकल नॉलेज एस्पेक्ट, इट वाज बिकॉज ऑफ एटिकेट्स दैट It यू was फाउंड because of हेवायर. because of etiquettes also, and because of the inability to articulate also. ओके, बट मेजरली इट वाज एटिकेट्स, वो छोटे छोटे चीज़ें विच छोटी छोटी कंट्रीब्यूटेड. चीजें, etiquettes, inability to put points across in the right manner. For that reason, see, very honestly, when you are somebody who understands finance, तो तुम्हारे से एक्सपेक्टेशन और बढ़ जाता है. ठीक है, कॉलेजेस में 7.5 पॉइंटर जल्दी प्लेस हो जाता है और 8.5 पॉइंटर फंसा रह जाता है, बिकॉज उससे एक्सपेक्टेशन ज़्यादा है रिक्रूटर को कि इसको शॉर्टलिस्ट दिया है तो ये कुछ रॉकेट करेगा भाई आके. ओके तो 8.5 पॉइंटर वाला सर. ज़्यादा डिसअपॉइंट करता है अगर वो आंसर नहीं कर रहा है तो. एंड सर जो आपने और आई थिंक द अदर पर्सन, आई डू नॉट रिकॉल, आई थिंक आयुष हर्ष, आई थिंक, हाँ. सो सर जो ग्रिलिंग आप लोग बोलते हो कि सेशंस में मारते हैं, वाज इट एग्जैक्टली, मतलब वाज इट ऑन अ कंपेरेबल बेसिस कि हाँ ये एक्सपेक्ट कर सकते हो, नहीं और बिल्कुल. इट वाज जस्ट अ नहीं बिल्कुल शैडो ऑफ व्हाट expect. वाज हैपनिंग? नहीं बिल्कुल बिल्कुल यू कैन एक्सपेक्ट ग्रिलिंग. सी, ग्रिलिंग इज नॉट द ऑब्जेक्टिव, बट व्हेन यू आर वेग तो ग्रिलिंग हो जाती है. अब स्पेसिफिक रहोगे तो कहाँ, फॉर एग्जाम्पल, डिड यू बिलीव के रूपल वॉज ग्रिल्ड?
I think to an extent in HR answers yes, but technical तो no. जहाँ पे वीकनेस है वहीं पे ना, जहाँ पे स्ट्रेंथ है वहाँ पे नहीं। बट मैं एटिकेट्स में कॉल्ड आउट टुडे, वो मेरा मुझे लगा आज मेजर वीकनेस बना फॉर दिस करेक्ट सेशन। करेक्ट। सो प्राइमरीली ग्रिलिंग होती वहीं पे है जहाँ पे आप क्लियर नहीं होते हैं, या फॉर एग्जांपल आप वेग कुछ भी चिपकाने की कोशिश कर रहे हैं, ओके ठीक है, वहीं पे ग्रिलिंग होती है। जब आप स्पेसिफिक होते हो, उनका देयर ऑब्जेक्टिव, नोबडी इज एक्चुअली देयर टू टेक अ स्ट्रेस इंटरव्यू। सर, जैसे आप सीएफए सर, आप तो जो मैं आंसर्स दिया, मतलब एटलीस्ट आई फील कि मे बी आप जो एक्सपेक्ट कर रहे थे कि सिंप्लीफाई करके तो वो नहीं दे पाए, बट आई डोंट थिंक सो वाज बीटिंग अराउंड द बुश, बिकॉज जो आप एक्सपेक्ट करते हैं एक टेक्निकल नॉलेज, नहीं, बीटा का आपने मैं डेप्थ तो मांगा। बहुत सिंपल सी, आई रिक्वायर वेरी सिंपल आंसर्स, ओके and anybody in the panel also will require. So any, ओके if you will talk to any, senior member in the corporate, or anybody who spent 5 8 10 years in the industry, तो अगर 10 साल एक्सपीरियंस वाले से तुम किसी से बात करोगे, ओके तो वो तुमसे बहुत सिंपल और बहुत स्ट्रेट आंसर्स चाहता है। ओके उसको घुमा फिरा के बात चाहिए नहीं, सीधा सीधा ओके। चाहिए। एंड सर, जब ये जो हो रहा था, डू यू थिंक आई वाज एबल टू पुट ऑन अ कॉन्फिडेंट फेस, एटलीस्ट दैट एस्पेक्ट, कि मतलब आई डिड नॉट सीम डरा बहका सहमा हुआ, उस मामले में मुझे बस आपसे फीडबैक चाहिए। नहीं, मुझे ऐसा लगता है कि यू आर मोर रिलैक्स्ड आफ्टर द इंटरव्यूज, यू शुड बी लाइक दैट इन द ओके इंटरव्यू ऑल्सो। ओके तो ओके मतलब रिलैक्स्ड रहो उतना, सो यू सीम अ लॉट मोर स्ट्रेस्ड। ओके। करेक्ट स्ट्रेस ज़्यादा फील होता है, ओके। करेक्ट। ठीक है, अभिरूप बढ़िया थैंक चेंज यू। वेंज करके आ गया क्या? अब आराम से कथा सुनेंगे एकदम चिल। ठीक है। सर, ये अलाउड नहीं है क्या? मतलब ये ठीक है, मे बी मैं मानता हूँ कि जो लेपल है ये हाँ आपका हाँ, इट्स नॉट अलाउड। नॉट इवन अ फॉर्मल वन, लेट्स से राउंड स्क्वायर। नहीं, राउंड स्क्वायर इज, मतलब यू कैन यूज अ फॉर्मल वन, ठीक है, बट जरूरत ही नहीं है, मतलब बेसिक नहीं नहीं, होना चाहिए। राउंड स्क्वायर वो नहीं सर, राउंड स्क्वायर इंटरनेशनल भाई बट कॉन्फ्रेंस चेन्नई वैसा। क्यों है? नहीं नहीं, जस्ट अ मिनट, मतलब मैं क्लैरिफाई कर लेता हूँ ना, अगर किसी ने हाँ। आप सर, अगर आपके पास कोई इंडियन गवर्नमेंट का कुछ उपलब्धि है, आई एम नॉट सेइंग मेरे पास है, सो हम्म, इट्स अ बैज ऑफ ऑनर फॉर समबडी। कोई आर्मी से पूछे, मैं आर्मी नहीं हूँ सर, मुझे ग्रिल मत करिएगा, हाँ बट हाँ। आई जस्ट वांट टू अंडरस्टैंड द पर्सपेक्टिव कि मतलब उस वे में नहीं नहीं, ये गलत था, या अग्री? हाँ, तो बस इसी के ऊपर कमेंट्स है। ऐसा नहीं हो तुम परमवीर ओके। चक्र लगा के आ गया यहाँ पे। अरे नहीं सर, अखैर सर आप वापस मजाक ही बना दिए, मैं अरे नहीं जेन्युइनली नहीं, पूछ रहा हूँ कि देखो बहुत सिंपल बात है कि बैज ऑफ ऑनर अलग बात होता है। हाँ वही, बस ठीक है? उसी सेंस में। और दिस इज समथिंग विच इज कैजुअल। ओके। ठीक है, ये पार्टी। नहीं नहीं, गलती मेरी हो गई सर, मतलब अगर मुझे पूछते जस्टिफाई करने, आई हैड एन आंसर रेडी फॉर दिस, दैट द मेलेडी ऑफ लाइफ, ये जो आपका दिख रहा है, नहीं नहीं, जैसे करना ही आपके, नहीं है, करना हाँ नहीं। नहीं करता, मैं बता रहा हूँ, मतलब एचआर सर, आप नेक्स्ट राउंड में एचआर भी पूछ लो ना मुझे, 2 राउंड से सीएफए भी मारा जा रहा हूँ, मुझे ऐसा लगता है कि एचआर, उपलब्धि नहीं है भाई मेरे लिए, तुमसे डेट्रिमेंटल है। एचआर कोई पूछेगा नहीं अगर पहला राउंड क्लियर नहीं होगा तो। नहीं सर, गलत है सर, सबको वाई एमबीए, टेल मी अबाउट योरसेल्फ, मेरा तो सीधा मारने पे उतर जाते हैं सर। फिनेंस वालों का इंटरव्यू थोड़ा ज्यादा स्ट्रिंजेंट होता ही है। अच्छा, होता फिन है। वालों को एचआर क्वेश्चंस कम आते हैं, अच्छा, बाकी ओके, लोगों को एचआर ठीक क्वेश्चन है। थोड़ा ज्यादा आता है। बट पर एक रिक्वेस्ट, आगे आने वाले में एक क्वेश्चन पूछ लीजिएगा, सो दैट मैं थोड़ा सा बेहतर खुश होके एब्सोल्युटली, बता बिल्कुल पाऊँ, बस बिल्कुल उतना ही। बिल्कुल बिल्कुल, That I'll pass that on, I'll also pass it applies on. to me. या Anyways, थैंक यू। Patty is also going to watch this, so he will know. It's okay. नहीं नहीं, मैं उसके लिए रेडी नहीं, बट आई वांट कि एक चेंज हो जाए बस, Yeah, ग्रिलिंग फाइनेंस का done, उससे। done, 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 done. Okay, सर, fine. इफ जस्ट वो जो सिग्मा लीन सिग्मा पे हम बोल रहे थे, आई एम नॉट सेइंग कि सर्टिफिकेशन अभी करूंगा, जस्ट कि एक ओवरव्यू यूट्यूब से कुछ भी पढ़ लूँ, टर्मिनोलॉजीज ऐड कर पाऊँ देखो, आंसर में कुछ भी उस। यूट्यूब से मत पढ़ो, जो भी ओके। पढ़ना है प्रॉपरली पढ़ो, ठीक है। तो यूट्यूब पे सभी ज्ञानी है, ठीक है। सो पढ़ना है तो प्रॉपरली पढ़ो, केपीएमजी का 6 सिग्मा का कोर्स होता है, वो कर लो, ठीक है, अगर करना है तो। सर, इट इज पॉसिबल, लाइक मैनेजेबल इन 2-3 days कि या 1 हफ्ते के अंदर अंदर हो जाता है। फर्स्ट। हाँ, तो वो सब करो, ठीक यू है। डू इट फ्रॉम अ प्रॉपर सोर्स, रिलायबल, ठीक है, ताकि अगर सोर्स बताना पड़े तो यू कैन टॉक अबाउट इट। अब रैंडम ओके। किसी को क्या कुछ, तो वो वैसे नहीं करो, डू इट प्रॉपरली, वट एवर यू आर डूइंग। एक्चुअली लर्निंग से ज़्यादा डिफिकल्ट अनलर्न करना होता है, तो जो भी सीख रहे हो बहुत प्रॉपरली सीखना ज़रूरी है। ओके, एंड फाइनली उत्कर्ष फिर से सेंटर में आ चुका है। The arrangement looks good. Thank you so much, everybody. I'm hoping that we've exhausted all the questions, whether it is 3 o'clock or not. But
I truly believe was an exceptional session, very enjoyable, good, and thank you so much for all the 20 people who are here, who are not morning people like me. So guys, all the best. Thank you so much for the session, and God bless you. Let's keep working hard, and good morning to everybody. Bye bye. Thank you, everyone. Thank you, sir. Thank you, everyone.